historical tournament will going to organize in future in this Rajiv Gandhi Cricket Stadium here in Mudipu. This is the first tournament and inaugural tournament for in this particular cricket ground. Everyone is excited, and this is going to be a huge contribution for the sports and games, especially for the cricket, and under the great leadership of the respected the Speaker UT Khadar and MLA of this constituency. So 4 days of cricket festival in this beautiful cricket ground. Everything is ready for the first delivery of the match. So myself Satish Salen in English and Mr. Gopi would like to give special wishes to all the participating teams for the success for this cricket tournament. And good morning to everyone, those who are watching here in beautiful cricket ground. Good morning everyone. Good morning all cricket players and lovers. And good morning to each and everyone, those who are watching live telecast of this cricket tournament through Mangalore Media under the leadership of Kamal Adimeshwari. The opening over will going to start from the commentary box, and umpires out there in the middle. Umpire Arif and Munzir, the umpires are ready here for the first match, and this is a cricket tournament under association of BSCA and MCA and UCA, 3 cricket association combinedly. Today's match will be between BSCA, Bolyar Sports Cricket Association, Bantwal South Cricket Association and Ulala Cricket Association. Between these 2 associations, the first day of this cricket tournament, and everything is ready for the first delivery of the match. Batters in the middle, Habib, and bowler will going to start Zakaria. Zakaria will going to bowl the first delivery of the match at the tournament, Jai Bhim Trophy 2025, and first delivery in this new built-in cricket ground, Rajiv Gandhi Cricket Stadium. And here comes the first delivery. It's a fast ball. It's going to be a dot ball. And batter Habib just tried to get that reverse sweep in the first delivery itself. Misses the line completely. And wicketkeeper misses it, but short fine leg fielder fields the ball. No chance of any run. Zakaria. Second time in this over. The power play number 1. Of course, only one power play, the mandatory power play. Driven, but down to long on region. So walkable single here for Habib, and the first run comes up for the team, the first run of the tournament as well. And Habib is a lucky man because he is the one who's got a first run in this particular stadium, Rajiv Gandhi Cricket Stadium, Mudipu. And Habib will going to remember this beautiful occasion, which is he got a first run from his bat in this particular stadium, one without loss of any man. Even Zakaria is also the luckiest one. He's got the first over of this new stadium. Lovely shot, straight down to ground, played it down to deep long on region, and very good stop by the fielder in the deep long on region. Before the throw will going to come to the hand of non-striker, and ample time for the batter Rizwan to complete a couple of runs. With that couple of runs, Koban moves on to 3 without loss of any wicket. Time is exactly 9 past 10 in the morning. It's a bright sunny morning. Everything is a perfect condition out here. And slowly the spectators, cricket lovers gathering in this newly built cricket ground. Jai Bhim Trophy 2025 is under progress after that very meaningful inaugural ceremony, giving respect to that Dr. B.R. Ambedkar, one gave a very good constitution. This time down the leg side and deflected from the leg, so that leg by call by umpire. With that leg by Scuba Namuzan to 4 on the board without loss of any wicket in the over number. The first and power play number 1 is in progress, Zakaria. Now the fielder in the deep mid wicket and long on. And there's no protection in the offside region in the deep. There is a mid off, a short extra cover, short cover point, short third man. Reverse sweep, played it nicely. Lovely stop by the fielder. He's absolutely moving towards a different position, and he's just moving to his left, but ball is come to his right side, and left side in fact, and he managed to
stop the ball, and both the batters completed this single. With that single, Skobodna moves on to 6-5 on the board. Correction, without loss of any wicket. A good start from this opening batter so far for the team. Karnataka 11, Munnoru lost the toss and asked by the opposition to bat first. Driven nicely into the long on region and one more single added total. With that single, Skobodna moves on to 6 on the board. Both the batters are dealing with the singles so far in this first over. First over completed. After completion of first over, it's 6 on the board without loss of any wicket. Team Karnataka 11, Munnoru. The winning the toss, captain of Sultan Suribail are elected to bowl first, and both the team has got a good start and steady start from the team Karnataka 11, Munnoru, and of course decent start from the bowler Zakaria. So second over is going to start here. Second over of the innings, of course the 5 overs game, and 1 hour going to be a power play, and the remaining 4 overs going to be a yes, the time limitation which is given for the fielding team to complete their 5 overs quota, 20 the minutes plus 2 minutes is going to be the grace time. The 22 minutes, within 22 minutes they have to complete their 5 overs quota, and the bowler Asif brought into attack. This time reverse shape, lovely shot, beautifully played that one, absolutely fantastic execution. Just getting that line and length so quickly, and at the same time the placement is so good, and even the timing is much better from the batter Rizwan. And the first ball itself, he's made his mind that he wanted to go for the reverse sweep, seeing that no fielder in the deep cow point region. Lovely placement and execution there from the batter Rizwan. All test, all, all, all test, all. Single added to total. Seven, 14, so 11 on the board without loss of any wicket in the over number second in progress. Asif starts with the over with the boundary, then runs which is rotating very nicely. Again now going for the single. The wait for umpire decision. Leg by called by umpire. With that leg by Skobodna moves on to 12 on the board. You are watching Jai Bhim Trophy 2025, and what we are watching here in this most beautiful and huge cricket ground. Rajiv Gandhi Cricket Stadium is a newly built cricket ground. We're going to witness the Jai Bhim Trophy. There's some lovely shot played down to long on region, but protection has been given in the deep. They wanted to come back for second, but asking for trouble. And a good piece of fielding there by the fielder in the deep long on. One more addition. With the addition of that single, Skobodna moves on to 13 on the board without loss of any wicket. A very good start so far from these two opening batters, taking their own time. This time wanted to go for the reverse sweep. Appeal for stumped out, but umpire says not out, rightly so. And one more dot ball in this. Good comeback by the bowler after that boundary, and 3 singles, 7 runs already came from this over. 13 on the board without loss of any wicket.
Short one leg, deep square leg, the fielder down at mid wicket, long on, long off, and one fielder situated in deep cow point region. After that, the boundary by implementing that reverse stroke, the captain wanted to keep one fielder in that region. Asif, final time in this over. Right above the gate, quicker one, faster one, and Abhi will going to come back for the second. This is the advantage of playing in this huge cricket ground. Leg by call by umpire. The ball went in the gap, and plenty of time for the batter to complete the couple of runs. And over number 2 completed. Over number 2 completed. Over number 2 completed. After completion of over number 2, it's 15 on the board. 9 runs came from this over of Asif. Altogether 15 runs on the board. And over number 2 completed. 7.5 runs per over, the run rate progressing. And it seems to be a good run rate so far for the team Karnataka 11 Munnuru. Bantwala South Cricket Association, Mudipu Cricket Association, and UCA Ullala Cricket Association combinedly with their support, this cricket tournament is organized in the name of Jai Meep Trophy 2025 under the great leadership of UT Khadar sir. And over number 3 we're going to start is jersey number 02 is in action. The first ball, dot ball. Bowler name please. Sahul. Second time in this over. Left arm over the wicket bounce. This time lofted straight down the ground. The ball will not going to travel, and enough time for the batter to come back for the second. With that couple of runs, Kubota moves on to 17 on the board. 17 for no loss. Good start from these opening batters so far. And even though they're playing first match, of course, the first tournament for this particular cricket ground, Rajiv Gandhi Cricket Stadium. And there seems to be a very good stadium. And this time lofted, lovely shot, extra cover drive, lofted that one into the deep extra cover boundary. One bounce into the fence for 4 runs. The placement is so good, just a little bit making room to play the shot. You know exactly where the fielder is. There is a fielder in a deep cover point, one fielder at long off. This is a big ground, huge ground. So that batter has got a plenty of opportunity to get the placement right. So what a great shot there from Rizwan. Second boundary from his bat. And the first boundary by playing the unorthodox cricketing stroke, reverse stroke. The second one is absolutely perfect orthodox extra cover drive. Again try to make the room to play the shot. Try to repeat the stroke again. This time line is a little bit tougher for that stroke for Rizwan. He played it back to bowler. Up stop by the bowler on his follow through. One is single added total. 22 on the board. And one more productive over is in progress. Sahul around the wicket. 22, 22. All test all. Again played it out extra cover region and going for the big single. Good response coming from this partner as well. So 23 on the board, 23 for the no loss. Good going so far for the team of Karnataka 11 Munnuru. Left arm bowls this time deflected from his leg, and ample time for the batter to complete the single. Of course, no signal came from umpire, means it's from the bat of the batter. And over number 3 completed. After completion of over number 3, total score is 25 on the board. 24 correction. 3 overs completed, 24. They're going exactly 8 runs per over.
Hello. Hello. First ball dot, second ball second, third ball 4, fourth ball single, fifth ball single, and last ball single. It's 24 in after completion of 3 overs. That means they're going exactly 8 runs per over. ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಇವತ್ತು ಜೈ ಭೀಮ್ ಟ್ರೋಫಿ 2025-26 ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಮೊದಲನೇ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ 3 overs completed, 24 on the board. Jersey number 3, bowler name please. Hello, bowler. Bowler name. ಎರಡು jersey number. Samad, the batter, bowler brought into attack to bowl the 4th over, and Rizwan will go to take the strike. Rizwan is looking so good so far from his batting. Again played it back to bowler and not for run, and a good start here for the bowler. Here comes the next ball outside the line of off stump, and a lovely delivery, but just missing the line in dedication, and of course a little bit in a square angle, the commentary box, so that I thought it might be the ball within the reach of the bat, but just going away from the right-hander batter. And white call by umpire. Quarter century, 25 comes off here for the team Karnataka. 11 Munno, the first wide of this match. Again wanted to go for the expansive drive, doesn't get that much of timing enough, but good enough for him to come back for the second before the fielder from the deep long on to run across to his right to field the ball. Couple of runs completed. So good batting so far from especially from Rizwan. If you see that the most of the runs which came from the bat of Rizwan, is batting on some with the 2 boundaries, almost 16 or 18 runs of individually from his bat. And here comes Samad again, just changing a field set, keeping that short mid fielder a little bit squarer. There is a deep mid wicket and long on and long off and deep cow point. This time driven into the deep cow point region. Again the chase for the fielder, and before that deep cow point fielder will going to get that one. Again a couple of runs completed by Rizwan. So with that couple of runs, Kobanna moves on to 29 without loss of any wicket. A very good partnership is progressing for the first wicket, and I think Rizwan has got most of the strikes, and so that he's getting the most of the runs from his bat. Samad, 5th time in this over, 4th time in this correction, going for the reverse sweep. Wicket keeper fumbles and grabs the opportunity by call by umpire. With that extra score, but moves on to 30 correction, 30 on the board, 30 without loss of any wicket. Over number 4 is in progress. Penultimate over is in progress, the 5 overs game. And here comes next delivery. Right arm of the wicket away from us. This time tried to play the improvising cricketing stroke, shuffled across the line. The intention of the batter to get that one very fine. There is no fine leg, in fact, fine leg inside the ring. So he just wanted to get the ball there and missed it completely. Last time in this over, Samad. So far, good over. This time, charging down the track, lofted that one, and it's going to be one bounce into the fence for 4 runs. And now Habib is joining the party. 3rd boundary of their innings, and the first boundary for Habib. And with that boundary, scoreboard jumps into 34 on the board without loss of any wicket. 4 overs completed now, last over remaining in the innings of Team Karnataka 11 Munnoru. Mangalore Media, one of the most popular live telecast channel, having a live telecast of this cricket tournament, Jai Bhim Trophy 2025. Those who are watching live telecast of this cricket tournament, welcome for this tournament. Day number 1 is in progress, and match number 1
is in progress after that inaugural ceremony. We are in the inaugural match. Winning the toss, elected to field first. Captain of Sultan Suribail, they elected to field first, but just watching there, their bowlers are fails to get any breakthrough. And one reason because of opening batters of Karnataka 11, Abib and Rizwan. So far, they played a very sensible innings, especially the Rizwan is getting most of the runs out of that 34 runs. Now, last over in their innings, and definitely these two batters will going to go for the big shots because they got all wickets in hand. They got 10 wickets in hand. And yes, we have in my commentary box as a scorer, Mr. Uman. They're doing a great job. We have Numan. And my left, my long-time commentary partner, Mr. Gopi. And we have the organizers. Down the leg side, it's going to be a first delivery. It's well within the reach of the batter, and that's why umpire is unmoved. The faster one, quicker one there from bowler Farooq. So last 5 deliveries left in their innings. Now wait and see how well these two batters will going to finish this innings. They got all 10 wickets in hand. Probably the time for them to get some acceleration. Of course, not a bad run on the board. It's a 35, 34. It's going to be a good score. In this condition, the morning condition, time is exactly 9 past 25. Bright, sunny morning. Typical weather condition in the month of December. Again, wanted to go for the expansive right. Lovely bowling performance here from a bowler. The kind of restriction which is required in the last over. And Farooq so far is tighten up the screws. And back-to-back 2 dot balls. There is one trying for the big shot, but not really getting the success so far in this particular last over. Right arm around the wicket. Balls this time going to be a punishable, not from the batter, but from the umpire. The white call by umpire with that extra scoreboard numbers on to 35. After a long time, the scoreboard is moving from 34 to 35. The 4 deliveries left in their innings. Farooq. This time he lofted it, and I think he will going to get the field. Oh, very good attempt, but not enough, and it's going to be a boundary. The fielder from deep long on his stride is level best to get the catch. Of course, he got a hand out to that, but after the ball is hitting his hand, ball went into the fence. Maybe that a long off fielder can be a little bit presence of mind is required, and unfortunately, ball is just slipped out of his hand. They got a boundary for that. Welcome boundary for the team Karnataka 11 Munnoor from the bat of Rizwan. This is his 3rd boundary, and scoreboard numbers on to 39 on the board. Last 3 balls remaining. So Rizwan after that 2 dot balls, then he just breaks the shackles in the right time. Swept that one very nicely, and he defeats the fine leg fielder. Chase for the fielder. It's a long boundary. It's not easy to get the boundary. Now they're coming back for the 3rd run, and they completed valuable 3 runs. Excellent running between the wicket from these two batters to complete that 3 runs. With that 3 run scoreboard moves on to 42 without loss of any wicket. And what a partnership is going on here for the team Karnataka 11 Munnoor. Both the batters are not given a single opportunity for the fielding team to get the wicket without any loss. They scored a 42. That means this is going to be a batting track. The new built-in Rajiv Gandhi Cricket Stadium. The pitch is proved to be a little bit helpful for the batters more than the bowlers. The way that these two batters are batted in the middle, it might be a batter's paradise. 5th time in this over. Again, wanted to go for the sweep shot, and he will going to pick the single. And with that single, scoreboard moves on to 43 on the board. Last delivery of their innings is coming up. The last delivery of Karnataka 11 Munnoor without any loss. Now Rizwan has got opportunity to deal with this last ball on the wicket right arm. This time he lofted, but this time the fielder will going to get that one. And it's a huge ground. The distance is to cover more than I think 58 to 60 the meters to cover that huge boundary. And long off fielder making no mistake at all. And last delivery of the innings, they lost the first wicket.
and quite interesting. Otherwise, it's going to be no loss. But in the last delivery of their innings, Rizwan back in the pavilion after he scored a very good runs from his bat. And that's it. Team Sultan, correction team Karnataka 11 Munnur will going to finish their innings with exactly 44 runs, and they set a target of 45 to win this match. 44 target, correction. 43 is the score, and 44 is the target. And wait and see how well the team Suribail Sultan Suribail will going to get this total of 44 to win this match. We'll take a short break in our commentary box. After the short break, my friend Gopi will going to take over the microphone in the very beautiful language Hindi. It's over to Gopi. And good morning, Gopi, and welcome for this Jai Bhim Trophy 2025. And it's going to be so beautiful, isn't it? Well-built Rajiv Gandhi Cricket Stadium here in Mudipu. And I think within 1 week, there's a lot of hard work done by the organizer to make this cricket ground so beautiful and suitable for the cricket. Altogether, this for 4 days of cricket tournament, Gopi, is going to be a most entertainment and excitement day for cricket, and especially for the under-arm cricket. And in the name of Mahanayak Jai Bhim Trophy 2025. Hello, check. Hello, check. Hello, check. Hello, mic check. 1, 2, 3. Hello, check. Hello, mic check. 1, 2, 3. Hello, check. Check. Hello, check. Hello, mic check. Hello. Hello, check. Hello, mic check. 1, 2, 3. Hello, check. Hello. Hello, mic check. 1, 2, 3. Hello, check. Hello. धन्यवाद सतीश। तो सारे दर्शकों का मैं गोपी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला महानायक जय भीम ट्रॉफी 2025 की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है भव्य उद्घाटन समारोह के बाद, और इस सुंदर से विशाल से राजीव गांधी पंचायत मैदान पर। और जहाँ तक सवाल है इस मैदान का, तो इस मैदान पर यह पहला श्रृंखला प्रथम श्रृंखला जो कि यहाँ पर खेली जाती है। बहुत ही सुंदर सा विशाल सा मैदान पिछले 1 महीने के अविरत श्रम की बदौलत यहाँ पर इस मैदान को तैयार किया गया है। और एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला महानायक जय भीम ट्रॉफी 2025 की शानदार शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। और पहले मैच में इस वक्त भिड़ रहे हैं यहाँ पर कर्नाटका 11 मुन्नूर और सुल्तान सूरीबैल। और कर्नाटका 11 मुन्नूर के बल्लेबाजों ने 43 रन बनाए निर्धारित 5 ओवर में। 20 मिनट 5 ओवर पूर्ण करने के लिए हर टीम के गेंदबाजों को दिए जाएंगे। 20 मिनट्स पर साइड टू बी 20 मिनट्स allotted time given for the fielding side to complete their 5 overs quota। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त दोनों आरंभिक बल्लेबाज आरिस और फारूक इस वक्त मौजूद है। और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए नौशाद 44 द टारगेट इन 5 overs फॉर सुल्तान सूरीबैल। और उनके आरंभिक बल्लेबाज आरिस इस वक्त तैयार। नौशाद इस वक्त
पहले गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला, इस वक्त बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में गेंद जाती हुई, काफी लंबा दौड़ लगाते हुए गेंद को फील्ड करके जब तक थ्रो करे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। और तिरछे बल्ले के सारे खूबसूरती के साथ गेंद को मोड़ा, इस वक्त बैकवर्ड थर्ड मैन पर रिवर्स शॉट के जरिए 2 रन बल्लेबाज बटोरने में सफल, और इन 2 रनों के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। 2 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनके पारी का इस वक्त शुरू हो चुका है। अरिस एक बार फिर से सामना करते हुए नौशाद की गेंदों का, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा। ये गेंद इस बार गेंद को साइड पर उछाला, लेकिन सीधे फीडर के हाथों में डीप मिड विकेट पर। हैरिस का स्ट्रोक दमदार जरूर था, लेकिन प्लेसमेंट कुछ खास सही नहीं, और डीप मिड विकेट पर फीडर खड़े हुए थे, गेंद सीधे पहुंची उनके हाथों में, और इसी के साथ पहला विकेट यहां पर गिर चुका। चतुर गेंदबाजी यहां पर गेंदबाज नौशाद ने की, पहले ही फील्डर को तैनात किया था डीप मिड विकेट सीमा रेखा के अंदर रहा, और गेंद को इस वक्त फेंकी मिडल लेग स्टंप पर, और बल्लेबाज को उकसाया था कि गेंद को वो डीप मिड विकेट पर खेले, और इस लालच में बल्लेबाज आ गए और इस गेंद को खेला जरूर, लेकिन गेंद सीधे पहुंची डीप मिड विकेट, फील्डर के हाथों में रन नहीं मिले, विकेट गिरा और पहला विकेट गिर चुका है। एरिस की पारी समाप्त, और सुल्तान सूरीबैल अपना पहला विकेट खो चुका है 2 रनों के योग पर। आसिफ का आगमन इस वक्त होता हुआ, और आसिफ इस वक्त नंबर 3 बल्लेबाज की हैसियत से क्रीज पर मौजूद, और गेंदबाज इस वक्त नौशाद गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट। मैच इस वक्त चल रहा है कर्नाटका 11 मुन्नूर और सुल्तान सूरीबैल के बीच, और इस बीच गेंदबाज नौशाद तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए गेंद क्विक पीस ऑफ वर्क, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बिहाइंड द स्टंप्स, लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद, वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 3 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर, और 1 रन के साथ 3 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है, और रन्स 3 रनों पर रुक चुके हैं, जो कि पहला ओवर प्रगति पर। और आसिफ इस वक्त सामना करते हुए नौशाद की गेंदों का। दाहिने हाथों पर द विकेट, again bowled him, just gone for a loft, not succeeded, extra quicker from the bowler, और ऑफ स्टंप इस वक्त उखड़कर गिरता हुआ बल्लेबाज का। बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद थी, लेकिन गेंद इतनी ज्यादा तेज रफ्तार के साथ आई कि बल्लेबाज को स्ट्रोक्स खेलने का कोई मौका अवसर ही नहीं मिला यहां पर, और गेंद उनके बल्ले को बीट करते हुए ऑफ स्टंप को उखाड़ कर ले गई। गिल्लिया बिल्स डिस्टर्ब होते हुए, और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। आसिफ इज नाउ बैकिंग टू पवेलियन, सेकंड विकेट लॉस्ट for Sultan Suryaboyla. Now I must say they are looking in trouble a little bit. It's 3 for the loss of 2 wicket in the over number first in progress. Match number 1 of this prestigious cricket tournament, Mahanayak Jai Bhim Trophy 2025 2025 इस वक्त शानदार प्रगति यहाँ पर करती हुई सुंदर से राजीव गांधी पंचायत मैदान पर, और निश्चित रूप से हमारे संविधान शिल्पी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद ये श्रृंखला आज शुरू हुई, और ये श्रृंखला एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करती हुई। जहाँ तक सवाल है इस वक्त नए बल्लेबाज का, नंबर 4 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल. So the next match will be between SRFC Talapadi and playing against Red Oaks Renjadi. Both the captains please come to the mic point for the tossing ceremony. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त सिद्दीक का, तो इस वक्त सिद्दीक का सामना करने के लिए तैयार रहा, और नौशाद सफल और अब तक उनका साबित हो चुका है। दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। रिवर्स शॉट, टॉप एज, जस्ट फेल शॉर्ट ऑफ, आई थिंक इट्स गॉट अ हैंड आउट टू दैट एट द लास्ट मोमेंट। अपना हाथ जरूर अड़ा था, लेकिन गेंद उनके हाथों से छूटती हुई, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर बेहतर गेंदबाजी इस वक्त करते हुए गेंदबाज नौशाद, और सामने इस वक्त करेंगे पहली बार इस ओवर में फारूक नौशाद की गेंदों का। नौशाद गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का प्रगति पर, और नौशाद दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त फारूक के लिए अपनी ओर की
अगली गेंद लेकर तैयार, स्वीप कर दिया इस वक्त खूबसूरती के साथ डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद पहुंची और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 5 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 5 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 1 बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर और अंतिम बार इस ओवर में गेंदबाज नौशाद गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सिद्दीक जो कि इस वक्त सामना करते हुए नौशाद की गेंदों का और इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज नौशाद और लक्ष्य से बाहर रिवर्स शॉट खेलना चाहता लेकिन अंतिम क्षण में गेंद की लाइन को पहचानते हुए गेंद को इस वक्त जाने दिया विकेट कीपर के हाथ में, लेकिन गेंद कुछ ज़्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और सही गेंद घोषित अंपायर द्वारा। पहले ओवर के समाप्ति के बाद 5 रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान पर। सुल्तान सूरीबल made a shackling start. It's 5 for the loss of 2 wicket and a fantastic over came turn in from Naushad who conceded just 5 runs in his first over and capturing 2 wider wickets. So still 39 more runs now they have to score for victory. 39 रनों की और दरकार है जबकि ओवर नंबर 4 बाकी है, तो ओवर 4 ओवर इस वक्त बाकी है, 39 रन चाहिए। 39 to get from remaining 24 deliveries. That means in remaining 4 overs with a required rate of exactly 9.75 runs per over. Still they got 8 wickets kept intact. और हर मैच के मैन ऑफ द मैच को फ्री शावरमा कूपन जो कि दिया जाएगा अलाउद्दीन शर्मा देरला का टीम की ओर से। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गेंदबाज इस वक्त तैयार और हमारे कमेंटेटर्स के लिए, मेरे और सतीश के लिए भी अलाउद्दीन शर्मा देरला कट्टे के मालिक ने जो कि इनाम घोषित किया। हर जहाँ कहीं भी श्रृंखला हो, अगर कमेंटेटर बॉक्स के अंदर चौका और छक्का अगर बल्लेबाज लगाते हैं तो नगद पुरस्कार अलाउद्दीन शर्मा देरला का टीम की ओर से दिया जाएगा। मुझे और सतीश हम दोनों कमेंटेटर को तो एक बार फिर से हम अलाउद्दीन शर्मा इनका हार्दिक अभिवादन न करते हैं कि हमारे लिए उन्होंने ये बेहतरीन इनाम घोषित किया और मैन ऑफ द मैच के रूप पर फ्री शर्मा कूपन जो कि दिया जाएगा अलाउद्दीन शर्मा देरला कट्टे इनकी ओर से। ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೈ ಭೀಮ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಆಯೋಜಿಸಲು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಕೈರಂಗಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಶೀರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಜೈ ಭೀಮ್ ಮಹಾನಾಯಕ ಜೈ ಭೀಮ್ ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು MC ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬುರದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. धन्यवाद श्रीमान बशीर। एक बार फिर से हम जय भीम ट्रॉफी संगठक और सर्व क्रीडा प्रेमियों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो पहली गेंद पर इस वक्त रन्स नहीं बना, रिजवान गेंदबाजी शुरू कर चुके हैं और दूसरी गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए और इस बीच ये गेंद टप एज लेकिन फील्डर वहां पर कोई मौजूद नहीं। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद पहुंची, बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा इस वक्त लेकिन थ्रो काफी वाइडर और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। couple of runs added to the total. It's 7 for the loss of 2 wicket in the over number 2nd in progress or Rizwan. तो इस वक्त SRFC तलपाड़ी ने अगले मैच में टॉस जीता और देखते हैं क्या निर्धार वो लेते हैं रेड हॉक्स रेंजाड़ी के खिलाफ अगले मैच में। और गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, ये गेंद स्वीप करना चाहे, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद पैरों पर टकराई, रनों का खतरा लेकिन अंतिम क्षण में निशाना चूकता हुआ और बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है। कुल मिलाकर 8 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 8 for the loss of 2 wickets. Still have a long way to go in fact. 36 more runs now they have to score for victory in remaining 3.3 overs. That means 21 balls left in overall calculation in the innings. They have to score now 36 more runs. इस बीच हल्के से गेंद को फ्लिक कर दिया, स्टंप्स को कवर करने के बाद स्क्वायर लेग पर गेंद पहुंची, 1 रन का इजाफा और ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाज दूसरा रन पूर्ण कर चुके हैं। काफी ऊंचा थ्रो था, इस वक्त विकेट कीपर गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए, गेंद उनके सिर के ऊपर से गुजरते हुए और जब तक गेंद को पॉइंट पर बैकअप किया जाता 1 रन का इजाफा। तो इस वक्त जहां तक सवाल है, पहला मैच चलता हुआ 10 रन बच चुका, 10 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 2 विकेट इन द ओवर नंबर। इस वक्त गेंदबाज तैयार, रिजवान न गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त तैयार, ये गेंद इस बार शेयर करना चाहा, इस वक्त रन के लिए कदम जरूर आगे बढ़ाए लेकिन न एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित।
तो इस वक्त बिल्कुल एक बेहतरीन क्रिकेट मैदान सजाया गया है। इस श्रृंखला का प्रप्रथम इस मैदान का प्रप्रथम श्रृंखला यहाँ पर प्रगति पर, और जहाँ तक सवाल है रनों का, और दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और 2 रन यहाँ पर पूर्ण करने में सफल। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक रनिंग बिटवीन द विकेट बिटवीन दीस टू बैट्समैन। ओवर की कंप्लीट, ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन बन चुके हैं, और कुल मिलाकर 7 runs, 7 runs came from this over. 2 overs gone, and after 2 overs, still I must say the batsmen of Sultan Suribail just searching for the right track. It's 12 for the loss of 2 wicket. और जहाँ तक सवाल है 32 रन और चाहिए, 32 more runs now they have to score for victory in remaining 3 overs, and the required run rate is now straight away gone up to exactly 10.66 runs per over. 18 गेंदों में 32 रन, और जहां तक चौके और छक्कों का सवाल है, अब ऐसा कहना पड़ेगा सुल्तान सूरीबैल के बल्लेबाजों को कम बैक करने के लिए चंद चौके और छक्कों को यहां पर लगाना होगा। और तीसरा ओवर शुरू होता हुआ, द बॉलर स्टार्ट्स द फ्रेश प्रोसीडिंग्स इज अशरफ। ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार और सामना करते हुए फारूक। जहां तक सवाल है इस वक्त ओवर की पहली गेंद लेकर अशरफ बाएं हाथ राउंड द विकेट, रिवर्स शॉट, और इस बार गेंद को गैप पर चुनते हुए खेला है खूबसूरती के साथ, कवर पॉइंट की दिशा में गेंद जाते हुए, और 2 रन बल्लेबाज को मिलेंगे। तीसरा रन के लिए दौड़ पड़े इस वक्त, और 3 रन यहां पर पूर्ण करने में सफल। 3 रन, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक रनिंग बिटवीन द विकेट। 3 runs added to the total, and with that 3 runs the scoreboard moving up to 15 on the board for the loss of 2 wicket. Now the equation stands 29 to get from remaining 17 balls. 17 गेंदें बाकी, 29 रन और चाहिए, 8 विकेट सुरक्षित, 8 विकेट they got kept intact, और अशरफ अगली गेंद लेकर तैयार। लेग स्टंप पर आती हुई गेंद, और जहां तक रनों का सवाल है, रन्स इस वक्त नहीं मिलेंगे, और डॉट गेंद उनके खाते में जोड़ता हुआ अशरफ एक बार फिर से तैयार, बाएं हाथ अराउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाह, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन पर, 1 रन का इजाफा हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ लेग पाई का इशारा अंपायर का, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 16 रनों पर, 16 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। 28 more runs now they have to score for victory in remaining 15 deliveries. 15 गेंदें 28 रन और चाहिए विजय के लिए, और इस बीच अशरफ बाएं हाथ राउंड द विकेट, यह गेंद उछाला इस वक्त, मौका मिड ऑफ फील्डर के लिए, आसान सा कैच 20 गज के दायरे के अंदर फील्डर लपकते हुए, और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। फारूक की पारी समाप्त, गेंद को उछाला जरूर लेकिन नॉट क्वाइट फुल्ली कंट्रोल्ड स्ट्रोक दैट ही प्लेड, और गेंद इस वक्त हवे में उछली, आसान सा कैच 20 गज के दायरे के अंदर फील्डर ने मिड ऑफ पर लपका अपनी दाईं ओर जाते हुए, दौड़कर जाते हुए, और एक और विकेट गिर चुका है। फारूक की पारी समाप्त, तीसरा विकेट गिर चुका है 16 रनों पर। इट्स 16 for 3। जहां तक सवाल है, एक सुसज्जित क्रिकेट मैदान, और इस सुसज्जित क्रिकेट मैदान पर प्रथम क्रिकेट श्रृंखला जय भीम महानायक जय भीम ट्रॉफी 2025 की शानदार प्रगति यहाँ पर होते हुए, और BSCA, MCA और UCA 3 प्रतिष्ठित क्लबों के टीम यहाँ पर जुड़ते हुए, और 16 प्रतिष्ठित टीमें इस श्रृंखला में हिस्सा ले रही है। यहाँ पर ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाज दूसरा रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं, 2 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे लेग बाय के रूप में। और जैसा कि मैं फरमा रहा था, BSCA, MCA और UCA ये 3 प्रतिष्ठित क्लबों के 16 प्रतिष्ठित टीम इस मेगा श्रृंखला में यहाँ पर हिस्सा लेते हुए, और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 3 प्रतिष्ठित क्लबों का समागम यहाँ पर होता हुआ। और जहाँ तक सवाल है, बाएं हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए, और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन बल्लेबाज को नहीं मिला। ओवर नंबर 3 की समाप्ति 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 overs, and now 26 to get from remaining last 2 overs. That means in 12 deliveries, and the required run rate is now straight away gone up to exactly
13 runs per over. 18 for the loss of 2 wickets. 3 overs completed. Now 26 runs to get from 2 overs. बहुत ही लंबा सा विशाल सा राजीव गांधी पंचायत मैदान मुडिपू का और न्यूली बिल्टेड नया तैयार किया गया है। ये मैदान पिछले 1 महीने के अविरत श्रम की बदौलत, कार्यकर्ताओं के अविरत श्रम की बदौलत ये सुसज्जित मैदान इस वक्त लोकार्पण हो चुका है। और प्रथम क्रिकेट श्रृंखला, पहली क्रिकेट श्रृंखला इस वक्त महानायक जय भीम ट्रॉफी 2025 2025 के नाम पर यहाँ पर इस प्रतिष्ठित राजीव गांधी पंचायत मैदान मुडिपू पर खेला जाता। वह काफ़ी विशाल सा मैदान और इस वक्त पहले मैच में भिड़ रहे इस वक्त सुल्तान सूरी बैल और कर्नाटका 11 मुन्नूर। गेंदबाज बशीर इस बार ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ, लॉन्ग आउट की दिशा में गेंद जाती हुई फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। जस्ट अ सिंगल ही गॉट और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 19 रनों पर। 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। हर मैन ऑफ द मैच के लिए फ्री शावरमा जो कि दिया जाएगा, फ्री शावरमा का कूपन दिया जाएगा। और शावरमा आप अलादीन शारमा दिरला कट्टे जो कि शावरमा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध दुकान है, अलादीन शारमा दिरला कट्टे, यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। और जहां तक सवाल है इस वक्त अगली गेंद का, बशीर इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद क्विकर और रन के लिए दौड़ पड़े बल्लेबाज। 1 रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है लेग बाय के रूप में 20 रनों पर। 20 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। सिंगल से अब काम नहीं चलेगा, चाहिए इस वक्त चौके और छक्के यहाँ पर कमबैक करने के लिए सुल्तान सूरी बैल के बल्लेबाजों को। और इस बीच ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर डिफ्लेक्ट कर दिया गेंद को इस वक्त, लेकिन स्ट्रोक्स में ज़्यादा रफ्तार नहीं, सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 21 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। इस प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला के अंतर्गत महानायक जय भीम ट्रॉफी 2025 के अंतर्गत मैच नंबर 1 इस वक्त खेला जाता हुआ कर्नाटका 11 मुन्नूर और सुल्तान सूरी बैल के बीच। गेंदबाज बशीर lost it this time. I think no, in fact it taken inside the fence. He just played that one against the wind and he just paid the penalty for that. गेंद को उछाला जरूर लेकिन हवा के रुख के खिलाफ और गेंद अपनी रफ्तार को खोते हुए सीधे इस वक्त लपक ली गई डीप मिड विकेट सीमा रेखा के अंदर। थोड़ा सा सीधा अगर स्ट्रोक्स को खेलते तो शायद छक्का उनके पक्ष में आ सकता था, लेकिन स्ट्रोक्स को खेला 2 स्क्वायर रन और अगेंस्ट द विंड और आखिरकार भुगतान उन्हें करना पड़ा और ठोकर आसिफ पिपलिन वापस लौटते हुए। चौथा विकेट गिर चुका है 21 रनों के ऊपर। इट्स 21 for 4। आसिफ डिपार्ट्स। एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट मैंगलोर मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है। और जहां तक सवाल है एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट कहना पड़ेगा, मैंगलोर मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है जनाब कमल अहमद इनके सानिध्य में। और जहां तक सवाल है इस वक्त नए बल्लेबाज का जकरिया का आगमन होता हुआ बशीर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। इस बीच गेंद को खेल दिया डीप स्क्वायर की दिशा में 1 रन के लिए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 22 रनों पर। 22 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। और चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर। कुल मिलाकर गेंदे बाकी हैं 7। लास्ट बॉल रिमेनिंग दिस ओवर, 7 गेंदे बाकी और 22 रन चाहिए। 22 runs to get from remaining 70 deliveries। बाएं हाथों पर तो विकेट है। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को बोर्ड दिया खूबसूरती के साथ, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट की दिशा में काफी लंबा दौड़। फील्डर लगाने के बाद जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। बेहतर फील्डिंग वहां पर करते हुए डीप मिड विकेट की फील्डर, बेहतर स्ट्रोक्स का था बल्लेबाज का और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 24 रनों पर। 20 रन चाहिए अंतिम ओवर का खेल बाकी। लास्ट ओवर रिमेनिंग 20 runs to get। और इस अंतिम ओवर में ऐसा कहना पड़ेगा सुल्तान सूरी बैल को सिर्फ चौके या छक्के ही यहाँ पर विजय दिला सकते हैं। फिलहाल अंतिम ओवर लेकर गेंदबाज तैयार। द लास्ट ओवर स्टार्ट्स इन देयर इनिंग्स, द बॉलर स्टार्ट्स द फ्रेश प्रोसीडिंग्स इज। गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज और कैफ गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए 20 रिक्वायर्ड फ्रॉम द लास्ट ओवर। और गेंदबाज इस वक्त तैयार, बाएं हाथ
ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए कैफ दाहिने हाथ के बल्ले दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हैं पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर रिवर्स शॉट खेलने में चूंकि 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 25 रनों पर। 22 का इशारा अंपायर का। नाउ 5 बॉल्स रिमेनिंग 19 रन्स रिक्वायर्ड। 19 रनों की दरकार बचे हुए सिर्फ 5 गेंदों में और इस बीच कैफ गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए विकेट कीपर लॉन्ग ऑफ पर एक फील्डर को ठीक सीमा रेखा के पास तैनात किया गया जबकि लॉन्ग ऑन थोड़ा सा वाइडर सीमा रेखा के पास मौजूद है और कैफ ये गेंद बेहतर गेंद क्विकर गेंद थी। गेंद पहुंची इस वक्त शॉट फाइनल की दिशा में 1 रन का इजाफा 22 का इशारा और 22 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 26 रनों पर 26 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट 18 रन्स टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 4 डिलीवरीज और बहुत ही विशाल सा मैदान। छक्का लगाना यहाँ पर उतना आसान नहीं है और निश्चित रूप से इस वक्त छक्के और चौके की सख्त जरूरत बचे हुए 4 गेंदों में बल्लेबाजों को। ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए क्विकर गेंद डॉट गेंद। अब अंतिम अवकाश द लास्ट चांस इन फ्रंट ऑफ द बैट्समैन ऑफ सुल्तान सूरीभाई। 3 sixes required in the last 3 deliveries 18 to get from 3 balls और 3 छक्कों की जरूरत बचे हुए 3 गेंदों में 18 रन बनाने हैं सिर्फ 3 गेंदों में और गेंदबाज इस वक्त कैफ गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ अराउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद क्विकर फैंटास्टिक डिलीवरी। दिस इज आउटस्टैंडिंग पीस ऑफ बॉलिंग परफॉर्मेंस चांस फॉर रन आउट लेकिन इस वक्त थ्रो स्टंप से कुछ दूरी पर निकलता हुआ 22 का इशारा एक बार फिर से एक बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज का 4 बेहतर गेंदें इस ओवर में फेंक चुके हैं। अब 2 गेंदें 17 रन चाहिए विजय के लिए। अगर कोई गेंदबाज नो बॉल या वाइड ना फेंकते तो यहाँ पर उनकी टीम की विजय निश्चित है। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए थर्ड मैन की दिशा में निकल चुकी है और वाइड का इशारा 1 + 1 2 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल एंड विद दैट कपल रन द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 29 for the loss of 4 wicket. That means 15 to get from remaining 2 deliveries. और कैफ अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए लेग स्टंप पर आते हुए गेंद वाइड का इशारा। 4 बेहतर गेंदें फेंकने के बाद 2 लगातार वाइड गेंदबाज कैफ इस वक्त फेंक चुके हैं। 30 रन 4 विकेट के नुकसान पर 14 रन चाहिए बचे हुए 2 गेंदों पर और कैफ अपनी ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट। यह गेंद पैरों पर गेंद टकराई इस वक्त गेंद पहुंची स्क्वायर लेग पर जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। लेग बाय का इशारा 1 रन का इजाफा 31 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एंड नाउ जस्ट लास्ट बॉल रिमेनिंग 13 रन्स रिक्वायर्ड। अगर गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड इस गेंद पर नहीं फेंकते हैं तो यहाँ पर कर्नाटका 11 मुन्नूर की विजय निश्चित है। लेकिन क्रिकेट में ऐसा कुछ कहना मुश्किल है जब तक ना अंतिम गेंद फेंके जाए और देखते हैं इस वक्त कैफ अंतिम गेंद लेकर तैयार उछाला गेंद को मिड विकेट पर लेकिन गेंद गैप पर जरूर गई है और इस वक्त सीमा रेखा के अंदर फील्ड कर दी गई। सिर्फ जस्ट अ सिंगल ही गॉट 32 the score. That's it for this match. 11 runs victory for Karnataka 11 Munnur and with that 11 runs victory Karnataka 11 Munnur are through to the next round of this competition defeating us Sultan Surabel in the inaugural match of this prestigious cricket tournament Mahanayak Jai Bhim Trophy 2025 in this beautiful and large Rajiv Gandhi Panchayat Ground Mudipu और मैच नंबर 1 यहाँ पर समाप्त हो चुका है जिसमें कर्नाटक 11 मुन्नूर विजय रहा 11 रनों से सुल्तान सूरीभाई के खिलाफ और इस विजय के साथ इस श्रृंखला के अगले दौर में प्रवेश प्राप्त कर चुका है। So man of the match of this match So man of the match of this match award goes to the man who batted brilliantly, is out in the final delivery of their innings after being contributing a fantastic knock of 28 runs. Rizwan edged the man of the match. Rizwan of Karnataka 11 Mudu edged the man of the match for his fantastic knock of 28 runs. And so Rizwan will get free shawarma coupon from Aladdin Sharma Derlakatte for this fantastic knock of 28 runs. And congratulations for Rizwan and best of luck for the rest of the matches of the tournament. So the match number 1 has been completed and match number 2 is now going to start.
SRFC Talapadi will going to play against Red Hawks Renjadi and that match starts within just short while. Till then we're taking short break और एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ जब मैच नंबर 2 यहाँ पर शुरू होगा इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत महानायक जय भीम ट्रॉफी 2025 के अंतर्गत। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। ಜೈ ಭೀಮ್ ಮಹಾನಾಯಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ MCA, BCA ಮತ್ತು UCA ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಬೃಹತ್ತಾದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲು ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ಗಂಗೊಳ್ಳಿಯವರು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಜಗದೀಶ್ ಗಂಗೊಳ್ಳಿಯವರು ಇದೀಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸ್ಪೀಕರ್ UT ಖಾದರ್ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಮ್ಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲು ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ಗಂಗೊಳ್ಳಿಯವರು ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ರೂವಾರಿ, ಅವರ ಒಂದು ಕನಸಿನ ಕೂಸಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು, ಈ ಒಂದು ಬೃಹತ್ತಾದ ಮೈದಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪಣತೊಟ್ಟು ಸಾಹಸಕ್ಕಿಳಿದು ಯಶಸ್ವಿ ಆದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ಗಂಗೊಳ್ಳಿಯವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮಾನ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲು ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾದಂತಹ ಜಗದೀಶ್ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದರ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದಿಕ್ರವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿ ಮೈದಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಾಹಸಕ್ಕಿಳಿದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೈ ಭೀಮ್ ಮಹಾನಾಯಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ರೂವಾರಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಅವರನ್ನು ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ MCA, BCA ಮತ್ತು UCA ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವಿತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ರೂವಾರಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ UT ಖಾದರ್ ಸರ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರಾದಂತಹ ಪ್ರವೀಣ್ ರವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು
ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡೆಸಲು ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೀಣ್ ರವರು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಂಡಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ಕಾನ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಾ. ನಮಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮನ್ಸೂರ್ ರಂತಡ್ಕ ಅವರೇ. So thank you very much, Gopi, and welcome to the match number 2 of the day, number 1 of the prestigious, of course, Mahanayak Jai Bhim Trophy 2025-26 is in progress. And winning the toss, selected to field first, team SRFC Talapadi, and over number first is in progress. And the batter Khalil and Shafir are the two batters out there in the middle. He's back in the pavilion in the previous delivery, caught at long off region of the bowling of Nitin. So scoreboard is 4 on the board. Left arm over the wicket balls. This time wanted to stop the ball and missed it completely. One more dot ball, and with that dot ball there is no chance at all for any run. ಎರಡೂ ತಂಡದ 11ನೇ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೀಡಿ 12ನೇ ಆಟಗಾರರು ಅಲ್ಲಿ UCA SRFC ತಲಪಾಡಿ ಹಾಗೂ ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಸ್ ರೆಂಜಾಡಿ ಎರಡೂ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಸ್ಪದವನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿ. So 4 on the board, left arm over the wicket balls. This time, wow, lovely delivery, beautifully balled. Ball is just deflected from the hands of wicketkeeper, fell into the stumps, but no damage done. First over completed, good over there from Nitin. Great start for the team SRFC after completion of first over. Total score is 4 on the board without loss of any wicket. 5 correction, 5 on the board, 5 for 1 after completion of first over. So very bright sunny morning here in this most beautiful Rajiv Gandhi Cricket Stadium here in Mudipu. Former Prime Minister of India, and under the great leadership of UT Khadar, and this cricket tournament is organized in the name of Mahanayak Jai Bhim, and one who's got a very good constitution for India, Dr. B.R. Ambedkar, and this is day number 1 of this prestigious cricket tournament.
So under the great leadership of Jagadish Ganguly, is taking all in charge of this cricket tournament. And this cricket tournament is in progress. Here comes first delivery of the over number second after the power play. And the over number, oh, lovely delivery, beautiful leg cutter in the negation. Bat ball completely received by the slow leg cutter in the negation. Lucky for him is in last moment he's got the bat onto that, and he will going to pick the single for that. And with that single, scoreboard moves on to 6 on the board for the loss of 1 wicket. Karthik brought into attack to bowl the second over. Tall man with just number 10. Bowling second time in this over. Away from us. Right arm over the wicket to the right and the batter. Shafir. Correction 73. The just number, don't know the name. Again, they wanted to come back for the second. And they completed a couple of runs quite easily in the end. Ashwin picked up a couple of runs. With that couple of runs, Kobana moves on to. Shafir picked up a couple of runs, and here comes the next ball. This time, lovely shot, good connection, but protection there in the deep in the square leg region. Fumble from the fielder, and they will go to grab the opportunity to come back for the second. So with that couple of runs, Kobana moves on to 10 on the board. Double figure 10 for loss of 1 wicket in the over number second in progress. Huge cricket ground, and one of the most complete. We can see that in a round shape, and 53 meters boundary line. And I think it's going to be a good chance for the players to get the placement. Of course, it's not so easy to get the distance. Getting a big shot is always going to be difficult. Wanted to go for the expansive reverse sweep, and wicketkeeper missed it. And backstop fielder managed to stop the ball by using his feet, and one run completed in the form of bye. With that extra score, moves on to 11 on the board for the loss of 1 wicket. The match number 2 is in progress between team SRFC Talapadi versus Red Hawks Renjadi. The teams is battle for the victory for this prestigious cricket tournament. Full toss, played it in half-minded. Lofted shot, one day single for that. With that single, score moves on to 12 on the board. 12 for 1 in the over number second is in progress. Both the batters are dealing with a single one day one bound which is came in the first over of the bat of Khalil. Again, down the leg side, short pitch outside the line of leg stump, and batter fails to take the advantage of that short pitch delivery. Leg by call by umpire, and over number 2 completed. After completion of over number 2, the total score is 13 on the board. 13 for the loss of 1 wicket. They're going exactly 6.5 runs per over. So one more Nitin B brought in the attack after Nitin A completed his first over. Nitin B this time lofted in the gap. No gap. It's a long on field underneath it. The wicket number 2 gone. It's not easy to get the distance, especially in this huge cricket ground. I already mentioned it's always going to be a challenge for the batter to get the distance. Even the wind is just a little bit flowing in front of the wicket, but still it's not good enough to get the distance. Wicket number 2 gone. And the batter Khalil is back. Shafir is back in the pavilion. After Khalil is back in the pavilion, now Shafir, the both opening batters are back in the pavilion. It's 13 for 2 in the over number second, which is completed. Third is in progress. So Nitin B got into attack, and straight away he's got a breakthrough for his team. Wonderful cricket tournament which is organized in the name of Mahanayak Jai Bhim Trophy 2025. And of course,
with the guidance of Sri UT Kader Farid and MLA of Lala constituency, as well as he is a speaker, and it's a proud moment for all of us so having such a fantastic cricket tournament. So Jagdish Ganguly, under his leadership, this cricket 3 days of cricket tournament and cricket festival in this beautiful Panchayat Rajiv Gandhi Stadium. Again, nicely plays it down to cover point. They wanted to come back for a second, mix up the chance of run out, direct it, and he's gone. Well, this is an absolutely total mix up, but what a throw coming from the fielder. Absolutely right on the money, right on the target, into the stumps. The batter is out of crease. Wicket number 3 back in the pavilion. Great piece of work done by the fielder in the deep. And Ashwad a little bit disappointed that he is back in the pavilion. And the misunderstanding between Abu and Ashwad, and costing the wicket number 3 of the team Red Hawks Renjadi. They lost their wicket number 3. So in commentary box we have the president of BSCA, that means Bantwal South Cricket Association, Riaz Kolake is a cricketer come, of course now is the president of the association. Here comes the next ball, right arm over the wicket. Balls this time wanted to go for the sweep shot. Ball is deflected from the leg of the batter, so leg by call by umpire. With the addition of that leg by, Skobarna moves on to 15 on the board for the loss of 3 wicket in the over. Number 3 is in progress. Nitin so far is keeping that line and length so accurately, which is targeting midland off stump, not giving any opportunity for the batters to freeze their arm. Kept 5 fielders in the deep mid wicket, deep long on, deep square leg, deep long off, and deep extra cover. This time picked up a single by the batter, one more addition to total. With the addition of that single, Skobarna moves on to 16 on the board without for the loss of 3 wicket. And now that brings Jason into strike now. Nitin will go into ball. Reverse sweep, but protection has been given. Ball is in there for a while, but after one bounce collected by the fielder in the deep cover point region. And with the addition of that single, Skobarna moves on to 17 on the board. Last delivery remaining in this over. Nitin. Balls. This time wanted to go for the sweep shot. Missed it completely. Wicketkeeper missed it. One more dot ball. One more good over, which is comes to an end. After completion of over number 3, the team Red Hawks Ranjad is searching for the right track. They are 17, just under 6 runs per over. The run rate progressing for the team Red Hawks Ranjadi. The successfully 8 time the organizing this cricket tournament under the great leadership of Jagdish Ganguly, in the name of Mahanayak B.R. Ambedkar Jai Bhim Trophy 2026 in this beautiful Balepuni Panchayat cricket ground, Rajiv Gandhi Cricket Stadium, the newly built fantastic and beautiful cricket ground here in Mudipu. Round the wicket, the bowler batting to attack to bowl the 4th over. Devi Kiran, and Devi Kiran, experienced campaigner for the side of Team SRFC, the wicket keeper as well. They kept the fielder in that short fine leg, short mid wicket, short point, and short extra cover. The first ball starts with a dot ball, and over number 4, which is a penultimate over in progress. Second time in this over. Balls opportunity, thick hits outside edge of the bat, defeat the wicket keeper, wicket the third man fielder as well.
They completed 2. They're looking for the third. And they completed 3 as well. Lovely piece of running with the wicket. Umpire called 1 shot. And that means only a couple of runs added to total. So the batters need to be very careful how to cross the line. And umpire called it 1 shot, only 2 runs. And with that couple of runs, Coburn moves on to 19 on the board for the loss of 3 wicket. Opportunities created for the caught behind, wicketkeeper behind the stump fails to collect the ball. Little bit tough one for the wicketkeeper. David Kiran, third time in this over. Round the wicket, right arm. Switch it, played it very nicely in the gap. The fielder will going to get that one. A lovely stop by the fielder by running very quickly to his left. Stop the sudden boundary for his team. And meantime, both the batters completed a couple of runs here. With that couple of runs, Coburn moves on to 21. 21 on the board for the loss of 3 wicket. And of course, the acceleration is much required to get that competitive total. In the previous match, we have observed that the batting first team has scored 40 plus runs in their distributed 5 overs. Against reverse sweep is played straight to the answer field. Chance of run out in a non-strikers, and but throw which is not good enough and quick enough to make that run out. And both the batters completed the single. They have to take the chances here if they wanted to get a good total. But it's going to be a slower one. 22 on the board. David Kiran, 5th time in this over. Balls beaten by the flight and the bounce. Beautifully bowled there by David Kiran, angling round the wicket, pitching that line which is just outside the line of off stump. Little bit deviation going away from the right-hander batter, and no run score. This time drives that one, not quite timed it properly. They wanted to come back for the second, asking for trouble. They settled for single. So one more quiet over, which is comes to the end of David Kiran. After completion of 4 overs, Red Hawks Ranjari are 23. Still their run rate is not that much of healthy enough. And last over remaining in their innings, and wait and see how many runs they will going to score in this last over, the final over. It's going to be a very bright and sunny morning. Time is exactly 10 past 20 in the morning. The typical weather condition of the month of December, slight bit of cool condition, weather condition, and especially in this particular year, we feel in South Canara we got some cool weather condition. And the match number 3 after this will be played between Sangam Panela versus Lucky Star Rantadka. So that I request all the players, please complete your signature and complete the tossing ceremony for the next match. The match number 3 of day number 1 of Mahanayak Jai Bhim Trophy 2025. Srijan brought into attack. Balled him, cleaned him up, perfectly bowled. Beautifully executed leg spin delivery. Of course, the left arm leg spin delivery which is coming into the batter. And he just tried to drive the ball, let the gap between bat and pad. And he disturbing the furniture. The wicket number 4 gone. And it's a 23 for 4. The team are looking in trouble. The team is looking in trouble. And Red Hawks Ranjari, they're dealing with the final overs. Last 5 deliveries remaining. Scoreboard is 23. Patamuru. ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟಕ್ಕೆ, ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಿ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಶ್ರಮಿಸಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲು ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾದಂತಹ ಮುಡಿಪು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಜಲೀಲ್ ಮೋಟುಗೊಳ್ಳಿ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಬಯಸ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Thank you so much, and welcome for all the dignitaries. Now coming back for the second, and David Kiran will going to hit the stump, but the result will not go into his favor. They completed a couple of runs, good running between the wicket, and with that couple of runs, Coburn moves on to 25, and over number last is in progress. Last 4 deliveries left in their innings. Outstanding effort there from all the personalities who was responsible for this beautiful cricket ground. Rajiv Gandhi
cricket stadium here in Mudipu, Balepuni Grama Panchayat. The president did a lot of great work, secretary of block panchayat. Again now one more dot delivery. Wow, my goodness, is going to be a bye. Wicketkeeper missed it completely. Lovely delivery from the bowler. Again pitched it in a very good line and length, and Srijan and bowling with the accurate line and length. And now fourth time in this over, he will go into ball left arm around the wicket to Abu. Again lovely delivery, slower one again. The batter just wanted to go for the expansive drive. Improvising cricketing stroke is attempted, but missed it completely. Leg by call by umpire. With that extra score, moves on to 27 on the board. And the last two deliveries left in their innings. Here comes fifth delivery. Srijan. Round the wicket left arm. Drives that one down to mid-wicket region. Off top by the fielder. Only single offered. Srijan will not going to bother about the single. You know exactly how to restrict the big shots in this last over. 28 on the board. Last delivery of the innings of team Red Ox Ranjadi will go into commence. Here comes last delivery. Round the wicket, left arm. Short pitch delivery, but batters couldn't manage to read that short pitch delivery well. They completed a single. That's it. Team Red Ox Ranjadi will going to finish their 5 overs quota with a total score of exactly 29, and they set a target of 30 to win this match. And wait and see how well the team will going to win this match. The team did a great job, of course, winning the toss, elected to field first. SRFC are bowled brilliantly. With all marks to the bowlers, did a great job to restrict their opposition for 30. But you can't say anything in cricket. Cricket is absolutely the game of glorious uncertainty. And wait and see how well the team will going to chase these runs when the team Red Ox SRFC Talapadi will going to chase these runs. Meanwhile, I request the two teams captain please report here for the tossing ceremony. Ali Sangam Panela ಮತ್ತು ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತರ್ಕ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕು. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸಂಗಮ್ ಪನೇಲ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತರ್ಕ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಮುಖ್ಯ ವೀಕ್ಷಕ ಕೊಠಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ. Mean time, yes, before the innings will going to start of team SRFC Talapadi, I request Mr. Gopi to take over the microphone. And Gopi, just coming back to this match, it's only 30 is a target for the team, and I think the bowlers did a great job of the team SRFC Talapadi. But a lot of hard work is required for the team Red Ox Ranjadi, because they are depending a small total, but in cricket I think it's not so easy to tell before. And of course we are having an announcement here. Alauddin Sharma Derlakatte, they announced the boundaries and sixes. If any batsman will going to hit the boundary and six towards the commentary box, and the commentators will going to get a 200 and 500. It's not for the batters. And this is a special announcement made by the proprietor of Alauddin Sharma Derlakatte, one who sponsored the man of the match, which is a coupon given for the man of the match winner, Pre Sharma, which is given for the man of the match winner, every man of the match winners. So thank you for Alauddin Sharma Derlakatte for your wonderful contribution for the success of this cricket tournament. It's over to Gopi. Thank you. धन्यवाद सतीश। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त
30 रनों का 30 द टारगेट फॉर SRFC तलपाड़ी सेट बाय रेड हॉक्स रंजाड़ी। पहले बल्लेबाजी करते हुए रेड हॉक्स रंजाड़ी ने सिर्फ 29 रन न बनाए, 30 रनों का लक्ष्य उन्होंने रखा और इस वक्त SRFC तलपाड़ी के लिए लक्ष्य 30 रनों का और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होते हुए और दोनों सलामी बल्लेबाज आरंभिक बल्लेबाज कार्तिक और रोशन इस वक्त तैयार। नौशीर गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हैं और बिल्कुल सही बात आपने फरमाया सतीश, इस वक्त बेहतरीन गेंदबाजी की है SRFC तलपाड़ी ने। 30 रनों के अंदर अगर रोक कर रखना है तो यहाँ पर रेड हॉक्स रंजाड़ी के गेंदबाजों के घातक गेंदबाजी राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर यहाँ पर करनी होगी। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, नौशीर गेंदबाजी यहाँ पर प्रारंभ करते हुए। मैच नंबर 2 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट महानायक जय भीम ट्रॉफी 2026 की शानदार प्रगति यहाँ पर होते हुए और मुकाबला इस वक्त जारी है यहाँ पर रेड हॉक्स रंजाड़ी और SRFC तलपाड़ी के बीच। तो इस वक्त सब कुछ तैयार, पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त शुरू होता हुआ और नौशीर ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए और सिर्फ 2 मात्र खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। लॉन्ग ऑफ और डीप मिड विकेट। यह गेंद इस बार बेहतर गेंद, फैंटास्टिक डिलीवरी, दैट्स द लाइन ही हैज टू बॉल राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स। और निश्चित रूप से इस वक्त जहां तक सवाल है रनों का, तो रन इस वक्त नहीं मिलेंगे, 0 पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है। बेहतर गेंद इस वक्त नौशीर की और कार्तिक का इस वक्त तैयार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर। 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात पावर प्ले के अंतर्गत और फील्डिंग में जमावट करने के बाद गेंदबाज नौशीर ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। मिड ऑफ एक्स्ट्रा कवर पॉइंट, शॉर्ट थर्ड मैन, स्क्वायर लेग, मिड विकेट इस वक्त मौजूद, जबकि शॉर्ट फाइन लेग इस वक्त कुछ हद तक सीधा तैनात और नौशीर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, ये गेंद फुल टॉस ड्राइव किया, गेंदबाज के सिर के ऊपर से रन के लिए तौर पर और मिसफील्ड इस वक्त बैकअप होता हुआ वहां पर। और जब तक बैकअप हो बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 30 रन 5 ओवर में बनाने, रिक्वायर्ड रन रेट जो है एग्जैक्टली 6 रन पर ओवर, ठीक 6 रन प्रति ओवर के औसत से निगदित 30 के ऊपर 30 रन इस वक्त उन्हें बनाने और नौशीर गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए। रोशन सामना करने के लिए तैयार, बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद। डीप मिड विकेट पर एक फील्डर तैनात, ठीक सीमा रेखा के पास लॉन्ग ऑन पर एक फील्डर मौजूद। पावर प्ले के अंतर्गत सिर्फ 2 मात्र खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात और गेंदबाज नौशीर इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। 5 से 6 बार जमीन पर गेंद को पटकने के बाद ये गेंद स्वीप करना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े और 1 रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल। बाई का इशारा, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 2 रनों पर। 2 ऑन द बोर्ड टू लूज विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और जहां तक सवाल है इस वक्त हर गेंद के साथ फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए यहाँ पर रेड हॉक्स रंजाड़ी के कप्तान और गेंदबाज नौशीर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त कार्तिक के लिए यह गेंद ड्राइव कर दिया कार्तिक ने, गेंद पहुंची इस वक्त कवर पर। 1 रन का इजाफा हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 3 रनों पर, 3 विदाउट लॉस। ಸಂಗಪ್ಪನೆಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರನ್ ತಡ್ಕ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. I request the captains of Sangapanela as well as Lucky Star Run Tarka please come in front of the stage for the toss procedure. और जहाँ तक सवाल है नौशीर अब तक उनका बेहतर ओवर साबित हो चुका है, गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए रोशन बाएं हाथ के बल्लेबाज जो कि सामना करने के लिए तैयार। नौशीर दाहिने हाथ राउंड द विकेट लेग स्टंप और राती विकेट को मोड़ना चाहता इस वक्त, शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद पहुंची और इस बीच वाइट का इशारा अंपायर का। 1+1 2 runs now added to the total. तो 2 रन एक्स्ट्रा अतिरिक्त के रूप में उनके खाते में जोड़े जाएंगे और इस इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 5 रनों पर। 5 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और नौशीर इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए कार्तिक
जो कि सामना करने के लिए तैयार। अगली गेंद इस बार ऑफ द टोज, गेंद को खेला इनटू द गैप एज वेल और गेंद इस वक्त लंगोन सीमा रेखा के अंदर फील्ड कर ली गई है। काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद बल्लेबाज तीसरे रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो इस वक्त वाइड, ओवर थ्रो और बल्लेबाज चौथा रन पूर्ण कर चुके हैं यहाँ पर। और जहां तक सवाल है वापस गेंद को रोका गया सीमा रेखा के अंदर, 5वां रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा। 4 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे, चारों रन दौड़कर इस वक्त बल्लेबाजों ने प्राप्त किए हैं और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 9 रनों पर। ओवर थ्रो हो चुका था, 4 रन बल्लेबाज और टीम के खाते में इस वक्त प्राप्त होते हुए और 9 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका। संगम पनेला ने टॉस अगले मैच में जीता लकी स्टार रन तड़का के खिलाफ और देखते हैं क्या निर्धार वो यहाँ पर लेते हैं। और इस बीच गेंदबाज नौशीर काफी लंबा और उनका प्रगति पर दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज कार्तिक के लिए अगली गेंद स्वीप करना चाहा लेग से बाहर की ओर निकलती हुई और जहां तक सवाल है वाइड का, तो वाइड यहां पर जरूर मिलेगा। 1+1 2 runs now added to the total and with a couple run the scoreboard moving up to 11 on the board in the over number first in progress। और नौशीर एक लंबा ओवर इस वक्त जारी रखते हुए और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज रोशन जो कि इस वक्त सामना करते हुए नौशीर की गेंदों का, दाहिने हाथ राउंड द विकेट। अगली गेंद एक गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद, विकेट कीपर ने विकेट जरूर चटका है और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पीस ऑफ विकेट कीपिंग मेड बाय विकेट कीपर। लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर अंतिम क्षण में छोड़ दिया था, लेकिन अंतिम क्षण में क्रीज से एक कदम आगे जरूर निकाले और इसे देखते हुए इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड गेंद को रिसीव करने के बाद विकेट कीपर ने तेजी के साथ विकेट चटका दिया। वाइड का इशारा जरूर हो चुका है लेकिन यहां पर विकेट गिर चुका है। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पीस ऑफ स्टंपिंग मेड बाय विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स और इस बेहतरीन स्टंपिंग की बदौलत रोशन की पारी समाप्त। पहला विकेट यहां पर गिर चुका है 12 रनों के ऊपर। इट्स 12 for 1 एंड रोशन डिपार्ट्स। मैच नंबर 2 इस वक्त प्रगति पर इस प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट महानायक जय भीम ट्रॉफी 2025-26 के अंतर्गत। और जहां तक का सवाल है नए बल्लेबाज का, देवी किरण एक और प्रमुख खिलाड़ी SRFC तलपाड़ी की ओर से, एक अरसे से वो SRFC तलपाड़ी का प्रतिनिधित्व करते हुए आ रहे हैं। काफी अनुभवी खिलाड़ी इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद ड्राइव कर दिया, इस वक्त मिड ऑन की दिशा में गेंद पहुंचे, 1 रन का इजाफा। देवी किरण थोड़े से धीरे से दौड़े थे लेकिन अंतिम क्षण में 1 रन प्राप्त करने में सफल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 13 रनों पर। 13 for the loss of 1 wicket after completion of first over. Fantastic start except they lost the wicket up Roshan. SRFC Talapadi made a fantastic start. It's 13 for 1 after completion of first over. बहुत ही सुंदर सा विशाल सा नूतन राजीव गांधी पंचायत मैदान मुडीपू का, और कुछ दिनों पहले इस विशाल से मैदान को तैयार किया गया है काफी मेहनत मुशक्कत के बाद। और जहां तक का सवाल है इस मैदान पर प्रथम पहली क्रिकेट श्रृंखला इस वक्त होते हुए महानायक जय भीम ट्रॉफी 2025 के अंतर्गत। और जहां तक सवाल है बंटवाल मुडीपू और उल्लाल क्रिकेट एसोसिएशन, 3 क्रिकेट एसोसिएशन एकजुट होकर पहली बार अंडरआर्म क्रिकेट के इतिहास में यहाँ पर 3 प्रतिष्ठित क्लब एकजुट होकर यहाँ पर इस प्रतिष्ठित श्रृंखला में इस वक्त खेलते हुए 16 प्रतिष्ठित टीमें। जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, सफीर गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट इस वक्त मंगलूर मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है, कमल द्वय इनके सारथ्य में। और इस बीच गेंदबाज ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, शाफिर गेंदबाज आगे बढ़ाते हुए देवी किरण के लिए ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद सही नहीं, ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई गेंद थी, वाइड का इशारा। और वाइड के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 14 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर
14 for the loss of 1 wicket. अगली गेंद शाफिर, इस बार भी वाइड का इशारा, 2 लगातार वाइड शाफिर इस वक्त फेंक चुके हैं। दोनों गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर उन्होंने फेंके थे और स्कोर बढ़कर 1 रन के साथ अब पहुंच चुका है 15 रनों पर। 15 for the loss of 1 wicket. निश्चित रूप से अपनी सही लेंथ और लाइन को तराशते हुए इस वक्त गेंदबाज शफीर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। रिवर्स शॉट खेलना चाहा, स्टंप्स पर गेंद टकरा चुकी है। जी हां, यहां पर टकरा चुकी है जरूर और देवी किरण की पारी यहां पर समाप्त। धीमी गति की गेंद थी इस वक्त, परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद उन्होंने फेंकी थी। इस गेंद के धीमेपन को समझ नहीं पाए देवी किरण। रिवर्स शॉट खेलना चाहा था, चूके और गेंद सीधे उनके बल्ले को वंचित करती हुई मिडल ऑफ स्टंप पर जा टकराती हुई, बेल्स डिस्टर्ब होते हुए और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है। देवी किरण इज आउट फॉर 1 एंड सेकंड विकेट लॉस फॉर SRFC तलपाड़ी। तो यही एक चारा इस वक्त बचा हुआ है रेड हॉक्स रेंजाड़ी के गेंदबाजों को कमबैक करने के लिए। इस वक्त विकेटें उन्हें जल्द से जल्द चंद और विकेटें उखाड़ने होंगे, चंद कसे हुए ओवर्स यहाँ पर फेंकने होंगे अगर उन्हें इस मैच में कमबैक करना है तो। और जहाँ तक नए बल्लेबाज का सवाल है, इस वक्त नए बल्लेबाज का आगमन इस वक्त होता हुआ सृजन, नए बल्लेबाज और सामना करते हुए इस वक्त वो शाफिर की गेंद का। एक और बाएं हाथ के बल्लेबाज, वन मोर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल, नंबर 4 बैट्समैन फॉर SRFC तलपाड़ी सृजन। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए और काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र अक्षर में यहाँ पर दिखाई देता है। डीप बैकवर्ड थर्ड मैन फील्डर को हटाकर इस वक्त गली और पॉइंट के दरमियान इस वक्त तैनात किया गया है और इस बीच शाफिर दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। धीमी गेंद, लेकिन इस धीमेपन का फायदा उठाने में असफल। ऑन साइड पर गेंद को उछलना चाहता, हल्की अपील जरूर जारी है लेकिन मैं समझा नहीं किसके लिए इस वक्त अपील की जा रही है और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 15 रनों पर। 15 for the loss of 2 wicket इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और दोनों बल्लेबाज सृजन और कार्तिक कुछ बातचीत करने के बाद अपने अपने स्थान पर लौटते हुए और इस बीच गेंदबाज शाफिर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। अपनी ओर की तीसरी गेंद कहना पड़ेगा लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया है खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल और गेंद डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। मिड और लेग स्टंप पर गेंद थी। व्हाट अ फैंटास्टिक स्ट्राइक केम फ्रॉम द बैट ऑफ सृजन और जिस तरीके से गेंद मिड और लेग स्टंप पर आई थी उसी तरीके से गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर खेल दिया था खूबसूरती के साथ, तेज रफ्तार के साथ और गैप खाली क्षेत्र चुनने में सफल। डीप मिड विकेट और वाइडिश लॉन्ग ऑन के दरमियान चौके के लिए और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 19 रनों पर। 19 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 2 विकेट इन द ओवर नंबर जस्ट अ सेकंड इन प्रोग्रेस। शाफिर काफी लंबा ओवर उनका प्रगति पर। इस बीच इस गेंद को खेल दिया एक्स्ट्रा कवर पर और आखिरकार गेंद को जब तक फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 20 रनों पर। 20 for the loss of 2 wickets। सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस और इस बीच शाफिर गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज कार्तिक के लिए इस वक्त दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन जो कि इस वक्त क्रीज पर मौजूद, हर गेंद पर फील्डिंग में तब्दीली करना जरूरी बन चुका है इस वक्त रेड हॉक्स रेंजाड़ी के कप्तान को और इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ। लॉन्ग ऑन पर 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 21 रनों पर। 21 for the loss of 2 wicket। धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर इस वक्त बढ़ता हुआ SRFC तलपाड़ी कमबैक करना है तो इस वक्त एक घातक गेंदबाजी की जरूरत है रेड हॉक्स रेंजाड़ी के गेंदबाजों को और सृजन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाज शाफिर इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। लेग स्पिन गेंदबाजी ऑन साइड पर गेंद को स्विंग किया। इस वक्त सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 22 रनों पर। 22 for the loss of 2 wicket and the second over has been came to an end. Still SRFC Talapadi looking in a commanding situation. 22 for 2 after completion of 2 overs, 7 to get from remaining 18 dealers. That means from remaining 3 overs and the situation, the equation seems to be much easier for them. Haradin Sharma, Dirlakatte, man of the match का खिताब फ्री शॉवर्मा के रूप में उन्होंने घोषित किया है।
जो मालिक है अलादीन शर्मा देरला कट्टे के। और निश्चित रूप से एक बेहतरीन उपहार मैन ऑफ द मैच के रूप में इस वक्त घोषित किया अलादीन शर्मा देरला कट्टे के मालिक ने। और इस बीच गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए खलील। 3 नंबर का खेल बाकी, सिर्फ 7 मात्र रन चाहिए विजय के लिए। जस्ट 7 मोर रन्स टू गेट 8 मोर रन्स इन फैक्ट गेट फॉर विक्ट्री। 8 रन चाहिए विजय के लिए 3 ओवर में। और बल्लेबाज सृजन सामना करने के लिए तैयार। और खलील इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ। पहली गेंद ऑफ सबसे बाहर, स्टार्ट्स ऑफ विद द वाइड। और वाइड के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 30 रन पर। 23 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। खलील लेग स्टंप पर आते हुए एक और वाइड। 24 ऑन द बोर्ड। 2 लगातार वाइड खलील इस वक्त फेंक चुके हैं और अपनी पहली सही गेंद की तलाश में अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट। यह गेंद इस बार वाइड का इशारा। हैट्रिक वाइड इस वक्त फेंक चुके हैं खलील और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 25 रनों पर। 25 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज खलील गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए full toss, pulls, and this time it's got the distance. Yes, it does. It's a biggie. This is an outstanding strike और इस छक्के के साथ SRFC तलपाड़ी registered a comprehensive victory with 8 wickets with more than 2 overs to spare. And the first 6 of the tournament came from the bat of सृजन। और फुल टॉस गेंद को इस वक्त डीप मिड विकेट पर उछालते हुए सृजन ने इस श्रृंखला के पहले छक्के के रूप में अपने टीम को विजय दिलाने में सफल 8 विकेटों से। और इन 8 विकेटों की शानदार जीत के साथ SRFC तलपाड़ी इस श्रृंखला के अगले दौर में प्रवेश प्राप्त कर चुका है रेड हॉक्स रेंजाडी को पराभव करने के बाद। So man of the match, undoubtedly the man who bowled very well, conceding just 6 runs in his 1 over and captured 1 wicket, and also he contributed well from the bat, remained unbeaten on 12 with 1 boundary and 6, and because of this all-rounding performance, Srijan of SRFC Talapadi edged man of the match. Srijan SRFC ತಂಡದ ಸೃಜನ್ ಅವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. And congratulations for Srijan and best of luck for the rest of the matches of the tournament. So match number 2 has been came to an end of this prestigious cricket tournament, Mahanayak Jai Bhim Trophy 2025-26. And the match number 3 of the day 1 of this prestigious cricket tournament is now going to play between Sangam Panela versus Lucky Star Rantarka. और संगम पालेल ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया है और वो मैच यहाँ पर शुरू होगा एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित होकर अपने खूबसूरत अल्फाजों के साथ मेरे काबिल दोस्त मेरे लंबे समय के साथी सतीश के साथ जब यहाँ पर मैच नंबर 3 शुरू होगा इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत। तो अब वक्त है एक ब्रेक करना। इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद।
So thank you so much, Gopi. We are into the match number 3 of day number 1 of the prestigious Mahanayak Jai Bhim Mahanayak Jai Bhim Trophy 2025-26. And this is the tournament which is played for the BSCA versus UCA. And the match number 3, in fact, between Sangam Panela versus Lucky Star Rantadka. And two very good teams are clashing here in the match number 3 of the day number 1. And winning the toss, captain of Sangam Panela, they elected to the ball first. And we are watching opening batters out there in the middle. One of the most popular name in under-arm cricket. And yes, one of the top-class wicket-keeper batter, Mansoor, came into bat as the opener batter. Along with him, one more class player, Imran. The striker is a striker for the first over of the power play. And both are playing for some reputed teams in South Kent district, Tarpados Khana. And of course, Imran is playing for NM Cricketers Mangalore. So two class players out there in the middle to open the innings of our team Lucky Star Rantadka. And wait and see how Sangam Panela will going to justify the decision of winning the toss, selected to ball first. And bowler will going to start the proceedings. Nasir with the jersey number 10 is one more experienced campaigner for the side of Sangam Panela. Will going to start the proceedings. Deep long on, deep mid wicket are the two fielders outside the circle. Short mid off, short extra cover, short cover point, and short gully, short fine leg, short mid wicket. The fielder for right-hander batsman. First ball itself, no ball call by umpire. And very interesting to watch. And maybe someone is. So no ball call by umpire, so that starts with a no ball and a free hit delivery for the batter. So this is not a good start, and straight away Imran has got opportunity to play the free hit delivery round the wicket right now. They wanted to go for the reverse sweep, and just wicket keeper missed it. The short third man fielder is also missed it, and they completed it single in the form of bye. So with that extra, Scobard now started their journey. Of course, a couple of runs added to total, and Rantadka, Lucky Star Rantadka, and one of the star of Rantadka, Mansoor, will going to take the strike of the bowling of Nasir. It's going to be a great contest between these two. Nasir is also a good bowler, experienced campaigner, and Mansoor is known for his explosive hittings, and especially the very useful batter in the form of, especially when coming to the power play overs, is a very good striker of the ball. The way to see in this huge cricket ground how well he's going to bat here, facing his first delivery. Second time in this over. Wanted to go for this, one of his favorite switch it, but it's not so easy when against the pace of Nasir. Good thinking there by Nasir, seeing the batter is going for the switch it. The last moment is changing the line cleverly, pitched outside the line of leg stump and unsettled the batter, and no chance of any run. Very important dot ball. Here comes the next one. It's going to be a delivery, which is umpire will going to punish with that wide decision, with that extra scope. Namuzan to 3 on the board, without 4 on the board. Correction, 4 for no loss. Mahanayak Jai Bhim Trophy 2026 under-arm cricket tournament in this newly built. This time chance of stumped out umpire at square leg is not confirmed that is the batter is in the crease or not. I think it says not out. The wicketkeeper is very confident, but not the umpire. It may be a little bit late by the wicketkeeper in the last moment. Imran is walking. It's not for dismissal. It may be he wanted to change the bat. He's not happy with the bat. ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಗಮನಿಸಿ, ನಾವು ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ 5-8 ಮ್ಯಾಚ್ ಆದಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ.
So here comes the next ball. Nasir, right arm. Reverse a play straight to the field. If they're going for Mansur is not a good runner because you know exactly this time is going for the run means is asking for trouble and not responding for the run and is absolutely and one more dot ball which is completed and over number first is in progress. Round the wicket right arm. Ball system drives that one nicely down to deep long on region. Protection has been given in the deep long on so that the batter have to settle for a single with the addition of that single scope on Namuzan to 5 on the board without loss of any wicket. Both the batters got a steady start there. And Imran is batting on one. Mansoor at 2 open the account. Appeal for leg before wicket, but ball pitched outside the line of leg stump as Mansoor becomes a left-hander. No leg before wicket, in fact, in this match, in this tournament, and no chance of leg before wicket. First over completed, tied over there from Nasir. 6 runs came from this over, and being the fact that this is a power play over, I think Nasir bowled well for team Sangam Panela, and it's 6 without loss of any wicket. Rajiv Gandhi Panchayat Cricket Stadium here in Balepuni, Mudipu. Newly built cricket stadium witnessing inaugural tournament and of course the first tournament for this particular cricket stadium, and good to see that having the prestigious cricket tournament in the name of Mahanayak Jai Bhim Trophy 2026. Dr. B.R. Ambedkar, the great personality, was given the very good constitution for India. Under his sweet memories, this cricket tournament is organized under the leadership of Jagadish Ganguly, under the guidance of U.T. Kadir, proud MLA as well as Speaker, Karnataka Legislative Assemblies. Nikhil brought into attack to bowl the second over. After the power play, we can see that so many bodies out there in the deep spread out field, long on mid wicket and deep square leg. Long off and deep cow point, the fielders are in the deep, the 5 fielders outside the circle. Short fine leg, short mid wicket, short mid off, short gully, the fielder back at point, in fact the fielders inside the ring. Nikhil bowls, nice looking drive there from Mansoor in the gap. It's a huge ground, probably there is opportunity of easy couple of runs. This is what the plus point of having a huge round ground with the dimension of almost you can say that 360 degree, the huge cricket ground, and 53 meters the boundary line, and probably we can't get that much of huge cricket ground in South Kendra. Again played it nicely using the wrist nicely down to mid wicket region. Mansoor picked up a single. Now he is playing confidently, not trying unorthodox cricketing stroke. He's just trying to play the orthodox shot. You know exactly this is a big ground. He can place the ball anywhere. He will get find the gaps, and one more single. So 9 on the board without loss of any wicket. Nikhil round the wicket right arm. Again wrist work comes into play. They're going for the run, quick run, but that not quick enough there from the fielder at short mid wicket to stop the single from this to batter, and straight away double figure comes up, 10 without loss of any wicket. The over number second is in progress. Nikhil searching for the dot ball, searching for the breakthrough for his team. The 10 runs partnership already for Randarkar. This time he connected one properly. One bounce into the fence for 4 runs. This is a typical Mansoor for you. Getting that position so quickly, and have a look at the bat speed. Absolutely magnificent. One of his favorite. He's tried his particular shot in the previous over, but he didn't got that much of width for the big shot for the switch hit. But this time he got the line and length so perfect to hit the ball right from the middle of the bat into the deep back point boundary for 4 runs. And the first boundary of their innings. Total score numbers on to 14 on the board without loss of any wicket. The bowler Nikhil right arm round the wicket to Mansoor. This is what the pressure is all about. They're going for the run, asking for trouble, throw which is not good enough. White call by umpire, white +1, 2 wides added to total with the addition of 2 extra runs. Coburn moves on to 16 on the board
Now runs started to flow. Even the ball after the power play. In power play they got only 6. Now after the power play the runs started to flow. And they got already 10 runs in this second over of Nikhil. 16 without loss of any wicket. Good going for the team. Lucky Star Rang Tadka. Nikhil little bit under pressure after that boundary. Right arm around the wicket he bowls. This time again wrist work comes into play. Played it very gently down to short mid wicket region for a single. With that single score, but moves on to 17 on the board for any loss. Last time in this over. Final delivery of the over number second to Mansoor Rantadka. Round the wicket, right arm balls. Once again wanted to go for the switch it, and they completed single leg by call by umpire. That's it. Over number 2 completed. After completion of over number 2, team Lucky Star Rantadka are going very nicely. It's 18 going exactly 9 runs per over. 18 without loss of any wicket. Big over. 12 runs came from this over of Nikhil. So third over going to start, and jersey number 77 brought into attack to bowl the third over. Fazal brought into attack, the young Fazal will going to bowl to the experienced Mansoor Rantadka. Right arm over the wicket, balls starts with the big wide, and good stop by the fielder using his feet. No ball called by umpire. The ball is gone outside the line of the pitch, so that umpire rightly called it's a no ball. It's a free hit delivery for batter Imran, and the bowler is couple of runs added, total 1+1, and with that couple of runs scored, moves on to 20 on the board. And Fazal correction, the young man struggles to get his line. In the first ball itself he bowled a big one, no ball. Now it's going to be a wait to see. One more no ball, second no ball, and again couple of runs without bowling a single delivery. He conceded 4 runs, 1+1 couple of times, and the free hit delivery continues for Mansoor because of one more no ball. The bowler is under pressure. Fazal, young man, of course needed some direction and of course some guidance for him to how to bowl, not to feel the pressure, and have to concentrate over the line and length. Anything else you have to empty your mind. This is what the new players have to be implemented while you're coming to the big tournaments. Not to think more, just empty your mind, concentrate over the line, and you can be a very successful. Round the wicket now. This time lovely shot. This is the Mansoor once again. Typical reverse shot. Played it very nicely onto the deep gully boundary for 4 runs. Single-handed. You can see that stroke there from Mansoor. While you're trying to get that stroke, he's lost his grip over the bat, but his top hand which comes into play. Played it exquisite switch it, one of his favorite. Second boundary in the similar passion. This time he played it a little bit fine. Down to deep, fine gully boundary for 4 runs. With that boundary score, but moves on to 26 on the board. And Mansoor knows that the bowler is not in a confident. He will going to bowl the loose nut, and he is ready for that. Second time in this over.
Balls. This time Mansur, just like a left-hand batter, played it down to mid-on. He just took his position to play that reverse sweep, but the line is not good enough for him to play that proper shot. But he need to play the stroke because he already committed himself as a left-hander and picked up a single for that. With that single, Skobana moves on to 27 on the board without loss of one wicket. Good partnership is progressing for the first wicket. Imran this time, a wicket keeper not up to the mark. When bowler bowls a good one, wicket keeper not supporting. By call by umpire. With that extra score, moves on to 28 on the board without loss of any wicket in the over number 3 in progress. Our team are cruising towards a big total here without loss of any wicket. Lucky star Rantadka with the Mansoor and Imran. Opening batters are doing the damage, especially the Mansoor. Once again, wanted to go for the expansive reverse sweep. This time he got missed it completely by call by umpire. Of course, he heard the sound, but the ball is not, bat which is not have a contact with the ball, hitting the ground. And one day a single. With that single, Skobana moves on to 29 on the board in the over number 3 is in progress. Good comeback by a young man. After that, his nervous start. Then he bowled very good deliveries, 4 very good deliveries. 5th time in this over. Imran wanted to go for the reverse sweep again. The wicket keeper changes, but result is same. By call by umpire. Nasir came into that behind the stumps, but result which is again the same. That they fails to gather the ball when the bowler managed to defeat the bat. 30 on the board in the over number 4 is in 3 in progress. The last time in this over. Around the wicket right arm. Once again wanted to go for the reverse sweep. Leg by call by umpire. One more addition, 31. So big over from the point of view. Over completed. After completion of over number 3, the total score of team Lucky Star Rantadka is 31. And they're going exactly 10.33 runs per over in 3 overs. Of course, in another 2 overs is going to be a testing time for the team Sangam Panela, how to restrict the runs of their opposition. They fails to fails to have a breakthrough. This is the second highest run partnership for the first wicket. Then the first match, the team has got very good partnership. The team match between Karnataka 11 versus Sultan Suribail. Karnataka 11 opening batters got a partnership of 42 runs for the first wicket, and this is the second highest partnership for the first wicket between Imran and batter Mansoor Rantadka. Altaf brought into attack, 31, which is a total score. The Mansoor will go in to take the strike. Right arm over the wicket balls. This time helicopter shot, but not good enough. I've already mentioned it's a huge cricket ground. The Mansoor's intention to get that one into the mid-wicket region, but because of that is a roll of the wrist, which is need to be played that one into deep long on region, and he pays the penalty for that. Mansoor departs. The first wicket gone. The partnership of 31 runs, which is comes to an end, and Altaf produced that vital breakthrough for his team. Captain of the side walking towards the middle, Shanawaz. One more fantastic performer who's playing for young friend Surva. So very interesting to see that the 3 players already came into bat. They're playing for the different teams. And the batter who played for Tarpados Khana back in the pavilion. Now Shanawaz, one who played for young friend Surva, coming to the middle along with Imran. Is a non-striker. The wait and see how captain will go into perform in this innings. Last few deliveries remaining of this innings, and match number ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ರೋಡನ್ನು ನಾವು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಲ್ಲಿಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಗಾಡಿ ಇಟ್ಟದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ತೆಗೆದು ಕೆಳಗಡೆ ಇಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
So start of of course, a white call by umpire because ball pitched outside and next time. It's not ideal delivery, isn't it? Shanawaz got opportunity to get that wide delivery to the fence, but he's not interested. And extra taken also score into 32 now on the board for one wicket. This time Shanawaz played it down to mid wicket region, but not more than a single. With that single score, but moves on to 33 on the board. Huge cricket ground, isn't it? One of the very good shaped, round shaped cricket ground here in Mudipu, Rajiv Gandhi Cricket Stadium, newly built cricket stadium, and the first tournament of the history of this cricket ground with the Jai Bhim Trophy Mahanayak, Jai Bhim Trophy 2026, 25-26. Altaf. Right, a move the cricket bounce to Imran. Imran wanted to go for the switch, it beaten by the flight and the turn, and they missed it completely. Imran so far is not looking that much of comfortable in the middle. If you see his innings, he won batting on 3, and for that 3 runs he's taken 9 deliveries to get that 3 runs. That means almost 6 deliveries, means 1 hour, which is runless, but still got good runs on the board because of Mansoor Rantadka, who hit couple of boundaries, some extras, which is contributed by the fielding team. Played it nicely, gently down to deep long on for a walkable single. With that single score, but moves on to 34 on the board. And the over number 4 is in progress. This is turning out to be a first better over from Altaf. We can see that only 1 wide. He picked up a wicket, couple of runs, and not a bad over. It's an absolutely good over. 2 runs, 3 runs and a wicket in this 4 deliveries. Here comes Altaf. Right arm over the wicket, bounce to Shanawaz. This time wanted to go for the expansive drive. Nasir rushing for the ball, but fails to stop that single from these 2 batter. Didn't quite timed it properly. Only a single. With that single score, but moves on to 35 on the board. In the over number 4 is in progress. So last time in this over. Altaf to Imran. Oh, again, lovely delivery, fantastically bowled, beaten by the leg cutter. The good over there from Altaf. Excellent over, which is comes in India from Altaf for Panela. And team Sangam Panela now able to put some break on the run rate, but still it's a 35 is a good score on the board after completion of over number 4. Last over remaining. Just under 9 runs per over run rate. Still it's a good run rate for the team Lucky Star Rantadka, and wait and see how many runs they will going to score in this last over. So new bowler in is Justin with the Justin number 1. And the last over, and Captain Shanawaz nicely looking around the field set. The 4 protection which is given in the deep in the onside, 3 protection, deep square leg, mid wicket and long on which is wideish. Long off is there, and deep backward point for the reverse sweep for Shanawaz by Justin in this last over. So final over going to start from the community box end. First ball. Bounce, Shanawaz drives that one down to deep long on region, but not more than a single. With the addition of that single score, but moves on to 36 on the board for the loss of 1 wicket. Umpire signaling that exceeds the time limits. The fielding team have to bring 1 fielder inside the ring as far as the penalty exceeds the time limits, so that have to be 1 fielder inside the ring, not more than 4 fielders outside the circle. Only you can keep 4 fielders outside the circle, not more than that. And now Imran will going to take the strike, and no protection in the deep long, but deep cover point is there. Long on is with a bit straighter to cover the ground. This time catch it is a call, and played it a little bit square of the wicket. They're looking for the second, asking for trouble, and he's gone.
So that's it. Imran's struggled innings, which is comes to an end. Try to complete the couple of runs. They're dealing with the last over, so they have to look for everything. Even though the possibility is very less to come back for the second, but still they're running because Imran knows that he's not really having a good time in the middle. He's back in the pavilion, and before he's back in the pavilion, he scored only 4 runs from his bat. But he taken the few deliveries for that, 13 deliveries to get that 4. And wicket number 2 gone at the score of 37. 37 for the loss of 2 wicket. Next match, match number 4 of day number 1 will be played between Challenge Boys Malar versus Kirti Sporting Ulal. So that I request players, kindly request you to complete the formalities of signatures and complete the tossing ceremony as well. Challenge Boys Malar ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಎರಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ವಿಶಾಲವಾದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಗಡೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ 2 wheelers ಮತ್ತು 4 wheelersಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದೆ. Meanwhile, a couple of runs is completed by the new batter. Akram came into bat and experienced campaigner for the side will going to complete the couple of runs, very important couple of runs, and with that couple of runs Koban moves on to 39 on the board for the loss of 2 wickets. And here comes the next ball, right arm over the wicket, Dustin bowled a lovely delivery, extra bounce in the relegation, chance of run out in the non-strikers, and Akram have to sacrifice his wicket for Shahnawaz, and one more wicket back in the pavilion, 3rd wicket gone at the score of 39 on the board. Good comeback by Panela, Sangam Panela, because the first 2-3 overs they are cruising towards a big total, but after that come back very strongly by the bowlers of Sangam Panela. Now last 2 balls remaining, 39 is the score, and the bowler Justin bowling round the wicket, right arm far outside the line of off stump, and with that extra score Banna moves on to 40 on the board, but still 2 deliveries left in this over. Shahnawaz facing Justin wanted to go for the expansive drive, doesn't get that much of proper connection. This is absence of mind there from Nasir, and of course Shahnawaz not happy with his partner. Nasir have to be there in the crease, still Shahnawaz coming to the crease, but unfortunately he's left the crease and Shahnawaz back in the pavilion. Wicket number 3rd is gone. Fourth wicket back in the pavilion, and 41, 3rd run out in this over. That means this is turning out to be one more good over for the point of view of Sangam Panela. So the final delivery of their innings, and Chami will going to take the strike of this last delivery of their innings, and wait and see how Chami will going to deal with this last ball. So here comes the last ball. Right arm over the wicket to Chami. Chami played it straight to the hands of mid-on, and they will going to complete. This is absolutely, I think, is gone, but it's not a quick fielding there for the fielder. Lazy throw. Very lucky for him that batter just short of his crease. The 1 run to finish the over number 5. That means they finished their innings with the 42. Team Lucky Star Run Tadka. They set a target of 43 to win this match for the team Sangam Panela. And wait and see how Sangam Panela will going to get this total, and wait and see how team Lucky Star Run Tadka will going to get this total. We'll take a short break in commentary box. After a short break, my friend Gopi will going to take over the microphone. Thank you. Thanks a lot.
धन्यवाद सतीश। तो 43 रनों का लक्ष्य इस वक्त लकी स्टार रन तनका ने रखा। इस वक्त संगम पानेला के सामने 5 ओवर में 43 रन बनाने। 43 the target set by Lucky Star run tanka for Sangam Panela in their stipulated 5 overs with a required run rate of exactly 8.60 runs per over. They have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them and the innings now going to start. दोनों आरंभिक बल्लेबाज जावेद और नासिर इस वक्त मौजूद, जबकि गेंदबाजी शुरू करते हुए शाहनवाज और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का शुरू होता हुआ। केवल दो मात्र खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के बाहर तैनात। लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन थोड़ा सा वाइडर, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के दरमियान एक फील्डर मौजूद ठीक सीमा रेखा के पास और इंतजार है इस वक्त पारी की पहली गेंद का। संगम पनेला को रन से बनाने हैं 43 रन। संगम पनेला हैव टू स्कोर इन द स्टिपुलेटेड 30 डिलीवरीज, दैट मींस इन द स्टिपुलेटेड 5 ओवर्स। और पहली गेंद, द फर्स्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। शाहनवाज, ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेला इस वक्त, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। और एक रन के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। एक रन बिना किसी नुकसान के यहाँ पर संगम पनेला जोड़ चुका और सामना करने के लिए इस वक्त तैयार नासिर। जावेद पिछले गेंद पर अपना खाता खोल चुके हैं और कुछ हद तक फील्डिंग में बदलाव इस वक्त लाते हुए विकेट कीपर मंसूर और मिड लॉन्ग ऑफ के फील्डर को इस वक्त मिड ऑफ पर बुला लिया गया है। और डीप बैकवर्ड स्कोर लेगा और डीप मिड विकेट ठीक सीमा रेखा के पास इस वक्त तैनात पावर प्ले के अंतर्गत। और गेंदबाज इस वक्त तैयार था इन हाथों पर विकेट। ये गेंद पैरों पर गेंद टकराई, रन के लिए दौड़ पड़े। एक रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं और जहाँ तक सवाल है इस वक्त रनों का, तो ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त यस राइट एब्सोल्युटली डिलिबरेट इस वक्त घोषित करते हुए अंपायर जानबूझकर गेंद को पैर पर लिया था, कोई स्ट्रोक्स ऑफर नहीं किया था और बिल्कुल सही तरीके से इस वक्त डिलिबरेट घोषित करते हुए। और जहां तक सवाल है रनों का, तो रन से इस वक्त रुक चुके हैं एक रन पर बिना किसी नुकसान के। और गेंदबाज शाहनवाज दो बेहतर गेंदें इस वक्त तो फेंक चुके हैं। अपनी ओर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार नासिर। जावेद नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद और शाहनवाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाह चुके विकेट कीपर मंसूर तेजी के साथ गेंद पर लपके और गेंद को पहले टिप्पे के बाद आफ्टर फर्स्ट बाउंस फील्ड करने में सफल। रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। निस्संदेह 43 रनों के लक्ष्य तक 43 रनों के स्पर्धात्मक लक्ष्य तक जहां तक पहुंचने का सवाल है इस वक्त एक बेहतर शुरुआत की जरूरत संगम पनेला के सलामी बल्लेबाजों को, खासकर पावर प्ले का फायदा इस वक्त उन्हें उठाना होगा। एक पावर प्ले का फायदा इस वक्त उन्हें उठाना होगा। और 3 बेहतर गेंद इस वक्त शाहनवाज यहाँ पर फेंक चुके अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद बेहतर गेंद इस वक्त रन के लिए दौड़ पड़े और निशाना इस वक्त टकरा चुका है। बल्लेबाज दूसरे रन के लिए यहाँ पर दौड़ पड़े, 2 रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल। तो ओवर थ्रो हो चुका था 22 का इशारा और 2 रन उनके खाते में जोड़ चुके हैं। और नासिर यानी नाची इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, शाहनवाज गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए। 2 गेंदें अभी भी बाकी पावर प्ले के ओवर के और 2 फील्डर मात्र इस वक्त 20 गज के दायरे के बाहर रहना। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट ठीक सीमा रेखा के पास। और गेंदबाज अपनी ओवर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए नासिर के लिए इस वक्त गेंद को उछालना चाह, रन के लिए दौड़ पड़े, निशाना इस वक्त मंसूर ने देखा। ओवर थ्रो इस वक्त और जब तक गेंद को बैकअप किया जाता डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर कहना पड़ेगा। बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का, दूसरा रन प्राप्त करने का। और मंसूर का फेंका गया वह थ्रो स्टंप से कोसों दूर निकलता हुआ इस वक्त जब तक गेंद को बैकअप किया जाता डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, दूसरा रन आसानी के साथ बल्लेबाज चुरा चुके। और इन 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के। शाहनवाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, पैरों पर गेंद टकराए, लेग बिफोर विकेट जो कि नहीं है इस श्रृंखला में, वरना निश्चित रूप से यहाँ पर लेग बिफोर विकेट आउट हो सकते थे। बल्लेबाज नासिर बच चुके हैं इस गेंद पर और रन इस वक्त मिल चुका है। 1 का स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 6 रन बिना किसी नुकसान के। 6 without loss after completion of first over and a good over came to an end from Shahnawaz. 37 more runs now they have to score for victory in remaining 4 overs and the required run rate is now gone up to exactly 9.25 runs per over. निस्संदेह इस वक्त चौके और छक्के
लगाने होंगे हर हाल में यहाँ पर कमबैक करने के लिए संगम पनेला के सलामी बल्लेबाजों को। और गेंदबाजी शुरू करते हुए इस वक्त नासिर और सामना करने के लिए तैयार भी नासिर। तो नासिर के लिए और फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं। पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। मैच नंबर 3 इस प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट महानायक का जय भीम ट्रॉफी 2025 के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता है। वही सुंदर से विशाल से राजीव गांधी पंचायत मैदान मुडिपू कर संपूर्ण नवीन मैदान, बिल्कुल नया मैदान और पिछले कई हफ्तों के मेहनत मुशक्कत के बाद एक सुंदर सा विशाल सा मैदान इस वक्त तैयार किया है कार्यकर्ताओं ने। और निश्चित रूप से यहाँ पर एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला फर्स्ट एवर टूर्नामेंट इन दिस ग्राउंड, इस लंबे और विशाल से मैदान पर प्रप्रथम श्रृंखला इस वक्त खेली जाती हुई प्रप्रथम क्रिकेट श्रृंखला कहा जा सकता है। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद, क्विक वन, एब्सोल्युटली क्विक वन एंड फैंटास्टिक पीस ऑफ कलेक्शन मेड बाय विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स मंसूर। और बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद, लेकिन इस गेंद के उछाल को भापते हुए मंसूर ने बेहतर तरीके से गेंद को इस वक्त कलेक्ट कर लिया था। विकेटों के पीछे रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। एक डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ चुका है। और फिर से एक बार नासिर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद इस वक्त रिवर्स शॉट खेलना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई इस वक्त। और जहाँ तक रनों का सवाल है, रन इस वक्त मिलेंगे 1 और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 7 रनों पर, 7 विदाउट लॉस। और एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला इस वक्त जारी रखते हुए गेंदबाज लकी स्टार रन तरका के और जावेद इस वक्त सामना करते हुए नासिर की गेंदों का। और नासिर दाहिने हाथों पर विकेट, जावेद के लिए गेंद को उछाला लेकिन नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज नासिर के पैरों पर गेंद टकराई। और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता शॉर्ट फाइन लेग पर 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रन बिना किसी नुकसान के, 8 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। फिर से एक बार नासिर गेंदबाज जो है इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज नासिर के लिए। यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाह चुके। और जहाँ तक बल्लेबाज नासिर का सवाल है, काफ़ी हद तक कुछ हद तक दिक्कतों का सामना करते हुए इस वक्त खुलकर स्ट्रोक्स खेलने में। और काफ़ी डॉट गेंद इस वक्त तो अब तक खेल चुके। इस बीच एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। और ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेला इस वक्त खूबसूरती के साथ तो नहीं, लेकिन खेला जरूर डीप कवर पॉइंट पर। 1 रन दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े नासिर का। नासिर अपना दूसरा रन पूर्ण कर चुके। इससे पहले कि डीप कवर पॉइंट फील्डर का फेंका गया बथरो सीधे विकेट कीपर मंसूर के हाथों में आता। और इन 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 2 अंकों पर, यानी 10 रन बिना किसी नुकसान के। और दूसरा ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर। नासिर फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए नासिर के लिए दाहिने हाथों बढ़ता विकेट। यह गेंद उछाला, खूबसूरती के इस बार मिड ऑफ फील्डर फिसल कर गिर गए और आसानी के साथ गेंद सीमा रेखा से बाहर कमेंटेटर बॉक्स के अंदर इस वक्त आ चुकी है गेंद 4 रनों के लिए। मिड ऑफ पर जो फील्डर खड़े हुए थे सीधे इस वक्त मिड ऑफ पर गिर पड़े, वहां पर फिसल कर रहा है और गेंद उनके सिर के ऊपर से निकलते हैं सीधे कमेंटेटर बॉक्स के अंदर इस वक्त आ पड़ी है चौके के लिए। और अलादीन शर्मा देड़ाकट्टे ने 200 रुपए का नगद पुरस्कार कमेंटेटर बॉक्स के अंदर आने के लिए घोषित किया है मुझे और सतीश के लिए। एक बार फिर से हम अलादीन शर्मा देड़ाकट्टे का हार्दिक अभिवादन करते हैं कि हम दोनों कमेंटेटर्स के लिए उन्होंने नगद पुरस्कार घोषित किया चौके और छक्के के लिए। और इस बीच कमेंटेटर बॉक्स के अंदर ये चौका आ चुका है, गेंद आ चुकी है चौके के रूप में। 4 रन उनके खाते में जुड़ चुके हैं और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 14 रनों पर, 14 विदाउट लॉस एंड अ गुड स्टार्ट, in fact a slower start in fact. After that in this over they come back a little bit well. Now the side stands at 14 without loss. That means 29 more runs now they have to score for victory in remaining 18 deliveries. 29 रन से चाहिए, 18 गेंदें बाकी और रिकॉर्ड रन रेट जो है 9.66 रन प्रति ओवर। बेहतर स्ट्रोक का नासिर यानी नाची का पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर उछाल होता है फील्डर क्लियर करते हुए मिड ऑफ फील्डर के सिर के ऊपर से चौके के लिए। और तीसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ। इमरान इस वक्त गेंदबाजी प्रारंभ करते हुए और सामना करने के लिए तैयार इस वक्त जावेद। और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा
4 खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात और ओवर की पहली गेंद लेकर इमरान दाहिने हाथ ओवर द विकेट जावेद के लिए लेग स्टंप पर आती हुई गेंद स्टार्ट्स ऑफ विद द वाइड और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 15 रनों पर 15 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर इन फैक्ट। फिर से एक बार इमरान गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए जावेद के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद पहुंची इस वक्त लॉन्ग ऑन पर, फील्डर गेंद का इंतजार करते हुए थोड़ी सी मिस फील्ड और इस मिस फील्ड का फायदा उठाकर बल्लेबाज ने दूसरा रन यहाँ पर पूर्ण कर लिए। हड़बड़ाहट में गेंद से अंतिम क्षण में उन्होंने नजरें हटा ली थी और गेंद उनके हाथों से चूकती हुई और इस चूक का फायदा उठाकर बल्लेबाज ने दूसरा रन तेजी के साथ चुरा लिए और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 17 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 17 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। इमरान अपनी ओवर की दूसरी गेंद माफ कीजिए लेकर तैयार, दूसरी सही गेंद लेकर इस वक्त तैयार। और जहां तक सवाल है इस वक्त कुछ बातचीत चलती हुई खिलाड़ी और बल्लेबाजों के बीच, टीम के अन्य खिलाड़ी और बल्लेबाजों के बीच, शायद पानी ग्रहण इस वक्त करते हुए। निश्चित रूप से इट्स हॉट एंड अ ब्राइट मॉर्निंग और निश्चित रूप से एक ऐसा कहना पड़ेगा निस्संदेह एक गर्मी भरा माहौल इस मैदान पर छा चुका है और इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप की तीव्रता भी यहाँ पर बढ़ती हुई लगभग 21 से 22 डिग्री सेल्सियस मंगलूर का तापमान आज का दाखिल हो चुका है और जैसा जैसा वक्त गुजरता जा रहा है यहाँ पर गर्मी की तीव्रता भी बढ़ती हुई और भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहाँ पर करते हुए। और इस बीच मैच नंबर 3 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट महानायक जय भीम ट्रॉफी 2025 2025 के अंतर्गत एक शानदार प्रगति यहाँ पर करते हुए और इमरान अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिना तो बढ़ता विकेट, बेहतर गेंद थी, पैरों पर गेंद टकराई, रन के लिए दौड़ पड़े। इस बीच एक रन बल्लेबाज पूर्ण करने में सफल लेग बाई के रूप में। रन इस वक्त चाहिए संगम पाने लाके बल्लेबाजों को किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए जरूरी नहीं है और इस बात को मद्देनजर रखते हुए क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज रन बनाने की हर तरीके की कोशिश, हर तरीके का प्रयास यहाँ पर करते हुए। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त अगली गेंद का, तो इमरान इस वक्त तैयार, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त करते हुए और इस वक्त तो गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज नासिर के लिए। पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर नासिर चौका झड़ चुके हैं, कुछ हद तक आत्मविश्वास प्राप्त कर चुके हैं उससे चौके की बदौलत। और इस बीच गेंदबाज इमरान गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए नासिर के लिए दाहिने हाथ ऊपर तक विकेट तैयार रहा। ये गेंद इस बार नासिर का स्ट्रोक लॉन्ग ऑन पर और गेंद गैप पर जाती हुई लेकिन गेंद को रोका गया। बेहतर तरीके से दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और 2 रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल। बेहतर स्ट्रोक था इस वक्त नासिर का, इनटू द कैप एज वेल। लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में से थोड़ा सा दौड़ जरूर लगाना पड़ा लॉन्ग ऑन के फील्डर को मिड विकेट की ओर, जब तक गेंद को सीमा रेखा के अंदर फील्ड करके थ्रो करे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल, इट्स 20 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग no wicket in the over number 3rd in progress. Slowly and steadily this opening partnership is now building up for them. इस बार नासिर का स्ट्रोक लेकिन not quite mid wicket, straight into the hands of mid off fielder और इसी के साथ नासिर की स्ट्रगलिंग पारी पर पर्दा गिर चुका है। इस बार एक बार फिर से गेंद को फील्ड क्लियर करना चाहता लेकिन गेंद ऐसा कहना पड़ेगा गेट सम एक्स्ट्रा बाउंस एट द लास्ट मोमेंट, गॉट इज टॉपर ऑफ द बैट, टॉप एज पर गेंद टकराई और मिड ऑफ पर अपने दाईं ओर दौड़ते हुए इस कैच को लपक लिया। इस वक्त फील्डर ने बेहतर जजमेंट के साथ पहला विकेट गिर चुका है। नासिर डिपार्ट्स एंड नाउ इट्स 20 for 1 for संगम पनेला। ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ಅನೀಫ್ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರಂದರ್ಕ ಚಪ್ಪಲಾಕಿ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುವಾದವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆರೀಫ್ ಹೂವಾಕೊಕಲ್ಲು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬಾಳೆಪುಣಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮತ್ತು ಓನರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಜೈ ಭೀಮ್, ಮಹಾನಾಯಕ ಜೈ ಭೀಮ್ ಪರವಾಗಿ, ಆಟದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. धन्यवाद। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त नए बल्लेबाज का न्यू बैट्समैन नंबर 3 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल, लेफ्टी बैट्समैन सादिक का नए बल्लेबाज इस वक्त। यस
नंबर 3 बल्लेबाज इस वक्त तैयार और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। सादिक नए बल्लेबाज स्ट्रोक्स को उछालना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद पहुंची, 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 21 रनों पर 21 for the loss of 1 wicket after the completion of 2.5 overs. That means last ball remaining in this over. और गेंदबाज इस ओवर में अंतिम बार इमरान इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट जावेद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद इस ओवर में अंतिम बार इमरान गेंदबाज आगे बढ़ाते हुए जावेद के लिए गेंद को खूबसूरती के साथ निकाला। इस वक्त एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा की ओर बढ़ती हुई गेंद वाइड लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। स्टंप्स एक्सपोज करते हुए गेंद के इस वक्त उछाला था स्क्वायर ऑफ द विकेट वाइड लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान लॉन्ग ऑफ पर फीडर मौजूद थे लेकिन 2 स्ट्रेटर और काफी जीतोड़ कोशिश करने के बाद लंबा दौड़ लगाने के बाद गेंद तक नहीं पहुंच पाए और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त जावेद के बल्ले से लगता हुआ ये चौका, और ये चौका ऐसा कहना पड़ेगा संगम पनेला के विजय के उम्मीदों को बरकरार रख चुका है। तो स्कोर है इस वक्त 25 रन चाहिए 18, गेंदे बाकी हैं 12, 18 to get from 12 deliveries. Still I must say it could be anybody's game at this situation. और ये जो ओवर शुरू होने जा रहा है इसमें अगर संगम पनेला के बल्लेबाज 10 से 12 रन बटोरते हैं तो निश्चित रूप से इस मैच में वापस आ सकते हैं। और जहां तक लकी स्टार रन तक का सवाल है, इस ओवर जो गेंदबाज शुरू करने वाले हैं इस ओवर में किफायती गेंदबाजी उनके गेंदबाज करते हैं, कम से कम 2-3 रन प्रदान करते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर लकी स्टार रन तक का पलड़ा भारी हो सकता है। फिलहाल दोनों टीमों के लिए ये ओवर जो शुरू होने जा रहा है काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर साबित होगा। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो बॉलर स्टार्ट्स द फ्रेश प्रोसीडिंग्स। इकबाल इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए और बल्लेबाज सादिक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार हो। जहां तक इकबाल का सवाल है, मंसूर जो विकेट कीपर हैं उनके भाई, छोटे भाई इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए इकबाल, और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार सादिक का संघर्ष अभी भी बरकरार रखते हुए संगम पनेला के बल्लेबाज। और ओवर की पहली गेंद लेकर इकबाल इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज सादिक के लिए काफी दूर दूर तक का फैला हुआ क्षेत्रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट इस वक्त मौजूद, लॉन्ग ऑन थोड़ा सा वाइडर और जहां तक सवाल है लॉन्ग ऑफ और कोई डीप कवर पॉइंट नहीं, कोई डीप बैकवर्ड थर्ड बैन नहीं। पहली गेंद ये गेंद उछालना चाहा, मंसूर वहां पर फिसल गए और आखिरकार फॉलो थ्रू में गेंदबाज इकबाल जब तक अपने आगे की ओर आकर गेंद को फील करे पहले टिप्पे के बाद आफ्टर फर्स्ट बाउंस बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 26 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 26 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर। इन फैक्ट 11 बॉल्स लेफ्ट, 17 रन रिक्वायर्ड और मैच में कशिश अभी भी बरकरार है। और गेंदबाज इस वक्त इकबाल गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए जावेद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, 8 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए 1 चौके की मदद से। और इस वक्त गेंदबाजी इकबाल करेंगे। मंसूर विकेट कीपर जो है इस वक्त फील्डिंग में जमावट करते हुए और इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इकबाल तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद जावेद के लिए रिवर्स शॉट, खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला बैकवर्ड थर्ड मैन पर, लेकिन फीडर वहां पर मौजूद, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। जस्ट अ सिंगल ही गॉट। स्ट्रोक बेहतर था लेकिन प्लेसमेंट उतना कुछ खास सही नहीं और सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज और टीम के खाते में इस वक्त जुड़ता हुआ। 27 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस, स्टिल 16 टू गेट फ्रॉम 10 बॉल्स। और गेंदबाज इकबाल गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को खेल दिया, एब्सोल्युटली कॉपी बुक स्ट्राइक स्ट्रोक। पहले सोचा कि गेंद को आक्रामक स्ट्रोक खेला जाए लेकिन अंतिम क्षण में गेंद की लाइन को पहचानते हुए गेंद को इस वक्त खेल दिया खूबसूरती के साथ मिड ऑफ पर। 1 रन के लिए बल्लेबाज सादिक ने 28। दर्शक काफी खामोशी के साथ मैच का मुआयना इस वक्त करते हुए और मैच एक दिलचस्प मोड़ पर आकर यहाँ पर रुक चुका है। 3 गेंदे 3 सिंगल्स इकबाल इस ओवर में प्रदान कर चुके हैं, 3 बेहतर गेंदे फेंक चुके हैं और अब 9 गेंदों में रन्स इस वक्त बनाने हैं 15। यह गेंद टॉप एज लेकिन फीडर थोड़े से पीछे था ना, शॉट फाइन लेग पर 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 29 रनों पर। 29 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट
and 14 runs to get from remaining 18 overs. And this is turning out to be a fantastic over from Iqbal. He just conceded 4 runs in the first 14 overs. और अपने ओवर के 5 विकेट लेकर तैयार. ये गेंद उछालना चाहा, पैरों पर गेंद टकराए. एक और बेहतर गेंद. 5th delivery, very well bowled by the bowler Iqbal. Iqbal का इशारा, 1 रन का इजाफा. 30 on the board, 13 required from 7 balls now. 5 गेंदे 5 सिंगल्स. बेहतर ओवर अब तक साबित हो चुका है गेंदबाज इकबाल का. और जावेद जो कि एक बेहतर पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए इस वक्त सपना करने के लिए तैयार है. और इस ओवर में अंतिम बार इकबाल गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए तैनात तो बढ़ता विकेट. ये गेंद स्वीप करना चाहा, गेंद पहुंची शॉट तर्जमान की दिशा में. 1 रन बल्लेबाज को फिर से मिलेगा और एक बेहतरीन ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है गेंदबाज इकबाल की, जिसमें सिर्फ 6 रन उन्होंने प्रदान किए. 4 रन बल्ले के रूप में, 2 रन बाई के रूप में, 4 रन बैट के रूप में, 2 रन बाई के रूप में. और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 31 रन पर. 31 for the loss of 1 wicket after completion of 4 overs, and now 12 required from the last 6 balls. That means from the last over. ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಲಾರ್ ಹಾಗೂ ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದರ ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಲಾರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ the captain of Kirti Sporting Ullal, please come in front of the stage for the toss procedure. So back to this game. 12 to get from 60 delivery. Still it could be anybody's game at this situation. और गेंदबाज मैच निर्धारित ओवर लेकर इस वक्त तैयार. मैच डिसाइडिंग ओवर स्टार्ट्स इन देयर इनिंग्स. और जावेद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. एक दिलचस्प मैच, एक बेहतर फिनिश की ओर इस वक्त बढ़ता हुआ. और इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ दर्शकों की संख्या भी यहाँ पर बढ़ते हुए सुबह के 11:41 यहाँ पर बज चुके हैं. और धूप अपना कहर मैदान पर ढा चुका है. भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी करते हुए. सूरज धीरे धीरे आसमान की बुलंदियों को इस वक्त छूता हुआ अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ. और मैच नंबर 3 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट महानायक जय भीम ट्रॉफी 2025-2025 के अंतर्गत यहाँ पर एक बेहतरीन प्रगति करते हुए एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट मैंगलोर मीडिया चैनल द्वारा इस वक्त किया जा रहा है यूट्यूब पर. न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी कई हजार दर्शक इस मेगा श्रृंखला का मुआयना करते हुए. पहली गेंद को स्वीप कर दिया खूबसूरती के साथ. कोई फील्डर वहां पर नहीं. बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद का पीछा करते हैं फील्डर. 1 रन पूरा कर चुके हैं, 2 रन पूरा कर चुके हैं. 3 रन के लिए दौड़ पड़े इस वक्त. मंसूर गेंद को लपक नहीं पाए और इस बार 3 रन बल्लेबाज पूर्ण करने में सफल. फुल टॉस गेंद को खूबसूरती के साथ इस वक्त स्वीप कर दिया था जावेद ने और 3 रन बटोरने में सफल. और इन 3 रनों के साथ समीकरण कुछ हद तक आसान होता होगा. नाउ 9 runs to get from 5 deliveries. 5 गेंदे बाकी, 9 रन चाहिए. 8 for tie, 9 for win. और जहां तक सवाल है इस वक्त 5 गेंदों में 8 रन चाहिए, 9 रन चाहिए. 8 for tie, 9 for win. और इस बीच गेंदबाज आगे बढ़ाते हुए चम्मी और सामना करने के लिए तैयार. बाएं हाथ के बल्लेबाज सादिक का यह गेंद इस बार दिस इज स्लॉपी. दिस इज एन एब्सोल्युटली स्लॉपी. और वाइड का इशारा. 1+1. नाउ द इक्वेशन सीम्स टू बी easier, more little bit for the batting side. Now 36. That means 7 to get from 5 balls. 5 balls, 7 runs required. 6 for tie, 7 for win. 5 balls remaining. और निश्चित रूप से ये ओवर बेहतर साबित होता हुआ संगम पनेला के लिए. और अगर मैच टाई में समाप्त होता है तो टॉस के जरिए विजेता को निर्धारित यहाँ पर किया जाएगा. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಲಾರ್ ಹಾಗೂ ಕೀರ್ತಿ ಉಲಾಲ್. तो इस वक्त 5 गेंदे 7 रन चाहिए. और इस बीच गेंदबाज तैयार. लेग स्पिन गेंदबाजी करते हुए स्वीप करना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई. मंसूर तेजी के साथ गेंद पर लपके जरूर, लेकिन वहां पर थ्रो करना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा. लेग बाय का इशारा. 37. दैट मींस 6 टू गेट फ्रॉम 4 बॉल्स. दर्शक काफी खामोशी के साथ इस दिलचस्प मैच का मुआयना करते हुए. दबाव इस वक्त बढ़ता हुआ दोनों टीमों के खिलाड़ी के ऊपर. द प्रेशर इज नाउ बिल्डिंग अप ऑन बोथ टीम्स प्लेयर्स. और विजय के लिए इस वक्त कड़ा संघर्ष यहां पर जारी है.
6 to get from 4 balls और गेंदबाज इस वक्त तैयार 5 for tie 6 for win और गेंदबाज इस वक्त चम्मी गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए सादिक के लिए दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अंपायर इस वक्त स्क्वायर लेग अंपायर की ओर जाते हुए और कुछ बातचीत इस वक्त करते हुए और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। निस्संदेह जिस तरीके का फाइट बैक इस वक्त किया संगम पनेला के बल्लेबाजों ने काबिल तारीफ है। हालांकि सशक्त गेंदबाजी का लाइनअप है इस वक्त लकी स्टार रणतरका के सामने और उस बलाढ्य बॉलिंग लाइनअप का समर्थ तरीके से सामना करते हुए इस वक्त मैच पर को एक दिलचस्प मोड़ पर लाकर रुका चुके हैं। इस बार गेंद को उछाला लॉन्ग ऑन पर फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। सादिक का स्ट्रोक दमदार जरूर था लेकिन प्लेसमेंट कुछ खास सही नहीं और लॉन्ग ऑन पर इस फील्डर जो खड़े हुए थे एक बेहतर जजमेंट के साथ आगे की ओर आकर इस कैच को लपकते हुए सादिक की पारी समाप्त, दूसरा विकेट गिर चुका है। 37 for 2, 6 to get from 3 deliveries now। तो निश्चित रूप से इस विकेट के पतन के साथ एक राहत भरी सांस लेते हुए इस वक्त लकी स्टार रणतरका के कप्तान और इंतजार है इस वक्त नंबर 5 बल्लेबाज का। फिलहाल जावेद एक छोड़ पर इस वक्त मौजूद अपनी टीम के लिए एक बेहतर पारी खेलते हुए 13 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर वो बल्लेबाजी करते हुए एक चौके की मदद से और इस वक्त नंबर 4 बल्लेबाज का अब इंतजार है। Challenge boys on the top, select to field first. तो अभी भी इंतजार करते हुए नए बल्लेबाज का अगला मैच चैलेंज बॉयज मलार और कीर्ति स्पोर्टिंग के बीच खेला जाएगा और चैलेंज बॉयज मलार ने टॉस जीत लिया है। तो इसलिए मैं दरख्वास्त रिक्वेस्ट निवेदन करता हूं दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया अगले मैच के लिए तैयार रहे। प्लीज गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट मैच। सो बैक टू दिस गेम, 6 required from 3 levels. Still I must say it could be anybody's game at this situation. तो जावेद जो कि काफी थके मांदे लग रहे थे इस वक्त पेविलियन वापस लौट चुके हैं और रिटायर्ड हर्ट के रूप में। और इस बीच जहां तक सवाल है नए बल्लेबाज का आगमन इस वक्त हो चुका है और इस बीच चम्मी गेंदबाजी करते हुए इस वक्त हल्के से गेंद को पुश कर दिया, पॉइंट पर गेंद पहुंचे, एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। जस्ट अ सिंगल ही गॉट, स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 38 नाउ एंड नाउ द इक्वेशन स्टैंड्स 5 to get from 2 balls, 4 for tie, 5 for win। दो गेंदें बाकी, 5 रन चाहिए। अगर मैच टाई होता है तो टॉस के जरिए विजेता को निर्धारित तक किया जाएगा। दोनों बल्लेबाज इस वक्त कुछ बातचीत करते हुए जेस्टन और निखिल, जेस्टन ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं, निखिल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और चम्मी इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए और दबाव इस वक्त दोनों टीमों के खिलाड़ी के ऊपर साफ पड़ता नजर आता हुआ विजय के लिए कड़ा संघर्ष यहाँ पर जारी है। और इस बीच चम्मी दाहिने हाथों पर विकेट, ये गेंद निखिल के लिए, गेंद को बेहतर, फैंटास्टिक, दिस एन आउटस्टैंडिंग पीस ऑफ वर्क मेड बाय विकेट कीपर मंसूर बहादी साम्स। पहले प्रयत्न में गेंद को विकेट को उखाड़ा लेकिन तब बल्लेबाज मौजूद थे। जैसे ही बल्लेबाज ने क्रीज से बाहर कदम रखा दूसरे सम्स को गेंद के साथ उखाड़ कर स्क्वायर लेग अंपायर की ओर मंसूर ने दिखाया और स्क्वायर लेग अंपायर ने कहा जी हाँ ये आउट है। तो इसकी वजह से इस वक्त अब 5 रन चाहिए अंतिम गेंद पर। लास्ट बॉल 5 runs required, 5 for win, 4 for tie and now just a last ball left in overall calculation in their innings। और टॉस हो सकता है अगर मैच टाई होगा तो मैच टाई होने के लिए चौका लगाना जरूरी है इस वक्त और देखते हैं इस अंतिम गेंद पर बल्लेबाज चौका लगा पाते हैं या नहीं। तो द लास्ट बॉल, द मैच डिसाइडिंग बॉल इज नाउ कमिंग अप और नए बल्लेबाज इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल। तो इस वक्त जहां तक सवाल है अंतिम गेंद, 5 रन चाहिए, 4 रन अगर चौका लगाते तो मैच टाई होगा। तो देखते हैं नए बल्लेबाज लतीफ का आगमन हो चुका है, क्या वो अपनी टीम को यहां पर मंजिल तक पहुंचा पाते हैं या नहीं। और चम्मी इस वक्त तैयार मैच की अंतिम गेंद लेकर। द लास्ट बॉल ऑफ द मैच एंड ऑल्सो अ मैच डिसाइडिंग बॉल इज नॉट कमिंग अप। काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्ररक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ और देखते हैं इस अंतिम गेंद पर
चम्मी अपने टीम को विजय दिला पाते हैं या फिर लतीफ जो बल्लेबाज है अपने टीम को सही मंजिल तक पहुंचा पाते हैं। अंतिम गेंद लेकर तैयार 5 to get 4 for tie, 5 for win, and the last ball of the match deciding ball is now coming up. Right arm over the wicket, इस बार गेंद को उछाला लंगोन की दिशा में, मंसूर चुके, गेंद जाती हुई लंगोन पर, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, 2 रन पूर्ण कर चुके, तीसरा रन नहीं 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 मिलेगा नहीं, और इसी के साथ they lost the match by just 2 runs. सिर्फ 2 रनों से लकी स्टार रनतर का रोमांचक तरीके से इस मैच को जीत चुका है संगम पनेला के खिलाफ, और इन 2 रनों की रोमांचक जीत के साथ इस श्रृंखला के अगले दौर में प्रवेश प्राप्त कर चुका है। लेकिन बेहतरीन फाइट बैक दिया संगम पनेला के बल्लेबाजों ने, लेकिन आखिरकार 2 रन से वो मैच को हार गए। बेहतरीन मैच समाप्त हो चुका है। 2 runs thrilling victory registered by Lucky Star Rantarka against Sangam Panela, and with that 2 runs thrilling victory, they are through to the next round of this competition. ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಂತಹ ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಡಗೌಟನ್ನು 2 ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಿ. So what a fantastic match has been came to an end. And Lucky Star Rantarka emerged the winners of just 2 runs against Sangam Panela, and with that 2 runs thrilling victory, they are through to the next round of this competition. So man of the match of this match award goes to the man who batted very well, scoring 12 runs from the bat. Also, he made a fantastic wicket keeping behind the stumps, and because of this effort, Mansoor of Lucky Star Rantarka adjudged the man of the match. Mansoor, Lucky Star Rantarka ತಂಡದ ಮನ್ಸೂರ್ ಇವರು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಲಾರ್ ಹಾಗೂ ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. So the match number 4 of this prestigious cricket tournament, Mahanayak Jai Bhim Trophy 2025 is now coming up between Challenge Boys Malar versus Kirti Sporting Ullal, और वो मैच यहाँ पर शुरू होगा एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब यहाँ पर मैच नंबर 4 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत शुरू होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆದ ನಂತರ ತದನಂತರದ ತಂಡಗಳು ಸಿಟಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಸಜಿಪ ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆರೆದಿಡಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ. ಸಿಟಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಸಜಿಪ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ. So thank you so much, Gopi, and congratulations for Lucky Star Rantarka, the man who is behind the victory. And Mansoor Rantarka receives the Man of the Match award from Riaz Kolake, the president of BSCA. And we are coming to the match number 4. It's a big match between Challenge Boys Malar versus Kirti Sporting Ullal. Two very good teams, of course. Challenge Boys Malar, the team which has got a name and fame, and a very reputed team from Mudipu, and Kirti Sporting Ullal, one of the fantastic performer from UCA. So this is going to be a great battle between these two teams, and we can see that a very good number of crowds gathered here to witness this big match between Challenge Boys Malar versus team Kirti Sporting Ullal.
So waiting for the opening batters. I request the opening batter please come to the bat immediately. ದಯಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So Jai Bhim Mahanayak cricket tournament in the name of Jai Bhim Trophy 2025-26 under the guidance of respected MLA and Speaker UT Kadir sir, and of course under the great leadership of Jagadish Ganguly. This cricket tournament is organized in this well and newly built fantastic and beautiful cricket ground, Rajiv Gandhi Cricket Stadium here in Balapuni, Grama Panchayat, Mudipu, and everything is set now for the match number 4 of the day number 1 of the prestigious cricket tournament. And of course, by giving respect to our architect of Indian constituency and Dr. B.R. Ambedkar, in the morning inaugural ceremony which is completed by giving respect to Dr. B.R. Ambedkar. And now we are in the match number 4. All 3 matches are good matches which is comes to an end, and now the previous match is a nail biter, and at last the team Lucky Star Antadkar managed to handle the pressure in the last situation, final situation of the game. And Sangam Panel, unfortunately, after the great fight, they are fails to win the match. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ 2 ಡಗೌಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ, ಅವರಿಗೆ ಚೇರ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೀರ್ತಿ ಉಲಾಲ್ ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಅವರು ಆಡೋದು, ಅವರಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸಿದಂಥ ಅವಕಾಶ. ದಯಮಾಡಿ ಆ ಚೇರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿ 2 ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಹಾಗೆ 2 ತಂಡದ ಇತರ ಆಟಗಾರರು ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವೀಕ್ಷಕವನ್ನು ಕೊಠಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. We have Sharif as a scorer, man scorer in our commentary box. Starts with the delivery which is a .1, and the bowler introduced from the commentary box, and Harris starts with a beautiful delivery to Bashit, the captain of Kirti Ullal. This time wanted to step the ball, say to runs the fielder, chance of run out in the non-striker's end, but of course the fielder is standing in the edge of the circle, so that quite easily both the batters completed single. The Bashit has got his first run, and for his team Kirti Ullal. And Kirti Bai Ullal, of course the most successful teams in last 2-3 seasons in UCA, and the Bashit is the one successful captain of the side who is represent for Tarpados Kana in present cricket. Going to be punishable far outside the line of off stump, and the bowler just tried to get the ball outside the line of off stump, but he's missing his line, and a couple of runs added, 2 without loss of any wicket in the over number of first is in progress. Rizwan balls lovely. Of course, Rizwan, the batter, tried to go for across the line. The line is outside the line of off stump. Encouragement for the batter is that there is no fielder in the long on. There is no fielder in the mid wicket, but one to protection which is given in the offside region. Long off is there, and that's why he just wanted to get the ball there. And one fielder down to deep third man for reverse sweep. So very interesting field set. Defensive field in the offside, but offensive field set in the onside region. Different field set for the different kind of players. Now mid wicket going back to deep mid wicket for Bashit, because one of his the scoring zone, the mid wicket and the square leg, one of his favorite areas. He scored plenty of runs in that area. This time switch comes into play. A rare occasion. He is not playing that kind of ticketing stroke regularly, but once he plays it very confidently, perfectly connected. That's getting his position so quickly and getting that exquisite footwork and timing in that shot. Magnificently struck. And with that bound is Coburn Namoz to 7 on the board. Most dangerous batsman in the present cricket, and most successful captain for the side of Kirti Ullal Bail as well as for Tarpados Kana. This time, what we are talking about, he is a man in a terrific form, and any ground he can get the distance. We are only talking about is a huge cricket ground, the 53 meters to travel to get the boundary, but this is more than that.
And additionally, I think maybe that was 56 or 60 meters, 6 pitches came from the bat of Bashit. This is the second sixer of the tournament. What a magnificent stroke, isn't it? Timing is a perfection. The position is so good. And everything is right behind that slog shape shot. And straight away they're on fire. 12 runs came from the first over of Harris. So 13 on the board. 13 without loss of any wicket. A big over from the point of view of team Kirti by Ulal. Excellent start from opening batter, especially the Bashit has got a boundary and 6 in the first over. Mustafa brought in the attack ball right arm over the wicket to Rizwan. Second over in play, and of course power play which is completed, more fielders in the deep. Beautifully balled, starts with the dot, and the perfect line to ball to the right of the batter, pitching in a line just outside the line of off stump. Slight a bit of deviation, leg cutter. The batsman almost catched in the crease. The wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler. Again, lovely delivery, beautifully bowled, well executed off cutter this time. Two different deliveries from young man Mustafa. Needed to be sometime when you're bowling to the caliber like the batters like Rizwan and Bashit. You need to be very careful about the line and length. It looks like the batter has got a problem with the bat, and after that he's tried to stop that beautiful delivery, incoming delivery. Maybe hit the ground pretty hard into the ground, and which is broke the bat of Rizwan. Just instead of asking for the teammates to bring the new bat. Outstanding cricket tournament is in progress. Jai Bhim Trophy 2025-26. The 4 days of festival of cricket in this newly built Rajiv Gandhi Cricket Stadium here in Balepuni Grama Panchayat Cricket Stadium. Already the old ground behind this cricket ground witnessed so many cricket tournaments, and this is a one more opportunity for all the sportsmen's cricketers to enjoy this cricket ground, which is made with a lot of effort behind this cricket ground. Thanks to each and everyone those are behind this construction of beautiful Rajiv Gandhi Cricket Stadium. Here comes next one. Right arm over the wicket, balls to Bashit. Bashit this time nicely behind the line of the ball. Plays it nicely down to point region. This is what the success why Bashit has got. He's not usually try to hit the ball each and every ball. He plays the ball as the merit of the delivery. And anything loose delivery he will going to enjoy to pick the big shots. A lovely delivery coming into the batter, deflected from the leg of the batter. Leg by called by umpire, with the addition of that leg by Skoban Namuzan to 16 on the board. Good start, electrifying start here for the team. Kirti Ulalbail leading from the front, captain of the side. Again wanted to go for the expansive drive, doesn't get that much of timing enough, played it down to short mid wicket region. The good over is in progress so far. Young man Mustafa did a great job to keep the things very tight and quiet with a good line and length last time in this over. One more lovely delivery, beautifully balled, fantastic over which comes in, and the kind of over which is badly required for the team challenge Mulur and challenge young boys Mulur Malar correction. They are bowled a fantastic over. The second over which is comes in, and in this particular over he considered only 4 runs. This is a quiet over. 13 from the first, 4 in the second, and 17 after completion of over number 2. Challenge boys, Malar knows that they're playing one of strongest opposition, so that they have to be very careful about that runs what they wanted to concede, because they are the one chasing the runs. So anything run around 40, below 40, it might be a game for challenge boys Malar, and wait and see how well they are going to bowl the remaining 3 overs. It's going to be a very interesting game of cricket.
Still, Bashit, the captain of the side, is in the middle, batting on 13 with the help of boundary and 6. Asif, right arm, correction, yes, Asif, right arm over the wicket, balls, and going to be a no ball called by umpire. This is a disappointment, disaster. Ball pitched outside the line of the pitch, so that umpire got no hesitation. Free hit delivery for the batter because of that no ball. Opportunity for Rizwan to take that free hit delivery for the big one. And wait and see how Asif will going to survive. 19 on the board. Here comes Asif. Right arm over the wicket away from us. Again, it's going to be a one more wide +1. Couple of runs. Is not a good start there for Asif. He's really struggling. No ball and the wide. Then again the free hit will going to continue. Free hit delivery will going to continue because of the wide delivery. Bashit will going to take that free hit delivery. 21 on the board. Asif have to survive from this delivery. Right arm over the wicket to Bashit. Bashit drives that one firmly down to deep long on. And filled up with the fielder. Grabbing this opportunity. Completed a couple of runs. With that couple of runs, Koban moves on to 23 on the board. And Asif already conceded 5 runs in this one delivery bowl. Second time in this over. Right arm over the kitty balls. Catch it is a call. Mid-off fielder will going to get this one. This is a huge pitch in the net. Maybe the Bashit bat which is struck while he tried to hit the ball. And ball is along the carpet, but simultaneously he hit the ball, but at the same time he hit the bat hard into the ground, so that he missed that timing, and the ball ballooning up in the air, and the mid-off-fielder takes a catch. A huge wicket there for Asif and for the team Challenge Boys Malar. It's 23 on the board for 1 wicket. Bashit departs after scored a valuable 15 runs from his bat. He faced only 7 deliveries to get that 15. The strike rate is still so good. 215 is a strike rate for Bashit. The one more good innings which just comes to an end of Bashit. Taif, the brother of Bashit, came into bat here. Is a little bit tall enough compared to Bashit. Taif will going to face his first delivery. And just tried to paddle the ball down to fine leg, but missed it completely. Ball is hitting his face. Extra bounce. Might be a little bit trouble, but looks like he's fine because the ball is not pretty hard in the nature. It's a Wilson ball. And so that batsman just survived from that extra bounce, bad bounce into his face. 23. Reverse played it very nicely down to deep gully region. One more single and Taif is off the mark with that single. Skoban moves on to 24 on the board. Good comeback after Asif has got a nervous start with the wide and no ball. Then he picked up a wicket of Bashit. Here comes the next one. Right arm over the wicket. Swept the ball very fine. The fielder is there in that short fine region. Will go into collect the ball. Ample time for Rizwan to complete the single. With the addition of that single, Skoban moves on to 25 on the board. 25 for 1 wicket. Asif, final time in this over. Taif drives that one. Nice looking drive towards the mid-wicket region, but not more than a single. They wanted to come back for the second, but asking for trouble. So good throw came from the fielder. Over number 3 completed. 26 on the board after completion of over number 3. 2 overs remaining in the now innings of team Kirti Ullal Bail. Time is exactly 12 past 10, a bright sunny afternoon. And of course some areas we can find some extra hot condition. The temperature seems to be a little bit higher compared to the other places, because this is a one cricket ground which is made in a few days with a great effort. ದಯಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ. ವಿ ಆರ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್.
As for the scheduled time, you need to complete this match. Need to start the 5th match, but so that it's needed some quick work from all the teams to complete these matches in a scheduled time. Aziz brought into attack to bowl the 3rd over. Wanted to go for the reverse sweep, missed it completely. Good one. Good start there from the bowler Asif in the over number 4. This is a penultimate over. Challenge boys Malar have to be very economical. So already they conceded runs in this first 3 overs, 26 runs. But good comeback, isn't it? After that 13 runs in the first over, then bowler Mustaf is bowled well. Wide outside the run off from. This is one area. They are considered a lot of extras. A wide signal by umpire. There's so many extras which is conceded in this last 3 overs of 3 wides, 1 no ball. One more. It's going to be a disaster, isn't it? 1 more extras. So extras always plays impact in that result of the match. Big impact. 28 on the board. Aziz, second time in this over. To Taif. Taif drives that one. Wrist work comes into play. They wanted to come back for the second. In comes the throw. Huge cricket ground. And it's not so easy to return the throw quickly. Good placement and good running from Taif. With that couple of runs, Coburn moves on to 30 on the board. Over number 4 is in progress. A lot of changes in the field set. Some on getting some promotion. Deep square leg fielder coming towards the long on, and the long on fielder going towards the deep mid wicket. Huge cricket ground. This time played it gently down to mid off region for a single by Taif. With that one single run, Coburn moves on to 31 on the board for the loss of 1 wicket. You're watching Jai Bhim Mahanayak Trophy 2025. Oh, lovely delivery. Wicket keeper very confident, but umpire not confident. Just looking at the body language of the wicket keeper, straight away is running, saying that he is very confident, but umpire says he is not confident because the batter is inside the ring. Safwan, the wicket keeper behind the stump, did a fantastic job, but not good enough to get the result here. But good comeback by the bowler. Starts with the dot, then bowled 2 wide deliveries. Then he came back very strongly with the 3 excellent line and length. After that, electrifying start in the first over, and slight a bit of slowdowning in the run rate of Kirti Bailulal. 31. Here comes Aziz to Rizwan. Rizwan again wanted to go for the reverse sweep, didn't got that much of proper connection. Will going to complete the single for that. 32 on the board. The over number 4th is in progress. Penultimate over and last time in this over. Long off, deep gully, deep mid wicket, deep long on. The fielders in the deep. Reverse sweep played it nicely into the deep cow point region. Only a single there. Oh, wanted to come back for second. This is a suicider. Absolutely suicider. Misjudgment of the runs, costing a wicket of Rizwan. Wicket number 2 gone. After completion of 4 overs, team Kirti Bail Ulal are 33 for the loss of 2 wickets. 33 for 2 after completion of 4 and last over remaining. So 13 runs which came in the first over, and after that very good comeback by the bowler, and Mustaf bowled well with the 4 runs. Asif is given away 9 runs, but the previous over is also a good one. 7 runs, and he picked up a wicket in that for him. It's a run out. So Asif will going to bowl the last over of the innings of Kirti Bailulal, and wait and see how many runs they will going to score. The target what they wanted to set for one more well-reputed fantastic team, Challenge Boys Malar, one of the most prestigious team in Mudipu Cricket Association.
The match number 5 will be played between City Boys Sajipa versus Youngstar Ambedkar. So that I request all the players complete the signature and ready for the toss. Played back to bowler, chance of run out, but fumble from the fielder. They complete the single. Reaching for the delivery. This is a little bit wide outside the line of off stump, and Shabir picked up his first run. Scoreboard moves on to 34 on the board. 34 for 2 wickets. Last 5 remaining. Taif again inside edge of the bat. Only a single. The bowler will not going to bother about the single. They know exactly how to restrict the big shots. One more addition to total addition of that single score. Moves on to 35 on the board. Last 4 balls remaining. No ball called by umpire. Played it down to extra cover. Good piece of fielding by the fielder. They're coming back for the second. Again the run out. Well. One more run out. But here is no ball called by umpire. So that couple of runs which is added to total. One for the no ball. Overstepping by the bowler. And the batter Shabir is back in the pavilion in the form of run out. Good piece of work done by the fielder at long off. Quickly moves to the direction of the ball. Release the ball quickly to the hands of wicket keeper. And 36 for the loss of 3 wicket. Last 3 balls remaining in their innings. New batter Ansar walks towards the middle. Wait and see how Ansar will go to take these remaining deliveries for his team. Got a very good physique, good height. 35, 36, 36. Going to continue. 38 on the board. So all we can see that some extras conceded by team Challenger Boys Malar. All runs are going to be very crucial. They have to restrict the extras. So many extras conceded in the form of wides and no balls so far. Asif in this particular, he starts well with some good line and length, but after that he bowls a wide, then he bowled a no ball. Again, it's a wide delivery. New batter coming to the middle, replacing the place of Taif. Nabil is a new batter in. Oh, my goodness. One more wide. Is really struggling. The runs which is coming freely. Bonus run, 39. The free hit continues. Lovely delivery, lifting him on the back foot, and umpire will going to raise his leg to signal the leg by. With that leg by, scoreboard moves on to 40. Now 40, psychological advantage when you get the 40 runs in a 5 overs game. And here comes the next ball. Ball him, cleaned him up, beautifully executed delivery from Aziz. Asif correction. And one more wicket back in the pavilion of team Kirti Ullal Bail. 40 for the loss of 5 wickets. Now last 2 balls remaining, last 2 deliveries left in their innings. Time which is exceeds by the fielding team. They have to bring one fielder inside the ring, not more than 4 outside the circle in the remaining 2 deliveries, so that opportunity for the batter Ansar to take that advantage of 4 fielders in the outside the circle. Here comes 5th delivery. Drives that one down to long on region. Oh, this time misfielded. My goodness. This is absolutely sloppy.
He's almost charging to the ball, but he's not watching the ball. He just removes his eyes on the ball. Ball little bit kept low, defeats his hands, went into the boundary. This is absolutely disappointment. What could be a certain single? They got a boundary for that. 44 now. Down the leg side, going to be one more run for the batter. They're coming back for the second. Chance of run out, and umpire raises his finger. Is gone. Wide call by umpire. Now umpire goes for the third umpire. The first third umpire call from umpire for that wide decision. It's a fair delivery from the third umpire. It's not a wide. And that's it. The team will going to complete their 5 overs quota. Kirti Ullalbail, they finished their innings with the 45 runs. And they set a target of 46 to win the match for the team Challenge Boys Malar. 46 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ 5 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 30 ಚೆಂಡು 46 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಟೀಮ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಲಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೋಡುವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಐ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೋಪಿ ಟು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫೋಟೋಗೆ ಪುಷ್ಪನಮನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರ ಪಿ ಆದಂತಹ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ
ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಆಶಾದಾಯಕ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಇದೇ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಅಂಗವಾಗಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಮುಡಿಪು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಹೋಳಿಯರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ 3 ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ धन्यवाद सतीश. So the target is 46 for Challenge Boys Malar, set by Kirti उल्लाल एंड their innings now going to start. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त मसूद और साहुल आरंभिक बल्लेबाज और सामना करने के लिए गेंदबाजी करने के लिए तैयार. तैफ पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का शुरू होता हुआ और देखते हैं इस 46 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चैलेंज बॉयज मलार के बल्लेबाज किस तरह की रणनीति टैक्टिक्स बल्लेबाजी यानी बैटिंग में अपनाते हैं. तो उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होती है. पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथों पर विकेट. यह गेंद ड्राइव कर दिया, खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन फील्डर मौजूद लॉन्ग ऑन पर. जस्ट सिंगल ही गॉट. सिर्फ एकमात्र रन मिलेगा. दमदार स्ट्रोक जरूर था लेकिन प्लेसमेंट कुछ खास सही नहीं. और इस बीच एक रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है. तो जहाँ तक सवाल है अगली गेंद का, तो तैफ इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद उछालना चाहा. इस वक्त गेंद पहुंचे इस वक्त पॉइंट पर. रन्स जहाँ तक सवाल है मिलेंगे एक. सिटी बॉयज सजीಪ ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ಸ್ಟಾರ್ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. और 2 गेंदें 2 रन. तैफ गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए और मसूद सामना करने के लिए तैयार. दाहिने हाथों पर तो विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का जारी. और गेंदबाज यह गेंद उछाला खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल. काफी लंबा दौड़ फीडर लगाते हुए जब तक गेंद को वाइनिस लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के अंदर लंबा दौड़ लगाने के बाद रोकते फील्डर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. खूबसूरत स्ट्रोक था. इस वक्त लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान गेंद को खेल दिया था. खाली क्षेत्र चुनते हुए पावर प्ले का फायदा उठाते हुए बल्लेबाज मसूद ने 2 रन के लिए 4 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के. और गेंदबाज इस बीच तैफ अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथों पर तो विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद पैरों पर गेंद टकराई. और जहाँ तक सवाल है रनों का, तो रन से इस वक्त मिलेंगे 1 रन. पकबादा यानी लेग बिफोर विकेट इस श्रृंखला में नहीं है. और जहाँ तक सवाल है रनों का, तो रन 1 के साथ लेग बाई के रूप में स्कोर बढ़कर अब पहुँच चुका है. कुल मिलाकर
5 रनों पर 5 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और तैफ अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। यह गेंद उछाला स्ट्रेट इनटू द हैंड्स ऑफ मिड ऑन फील्डर। काफी ऊंचा स्ट्रोक नहीं था और गेंद सीधे पहुंची, मिड ऑन फील्डर थे और कुछ ज्यादा उन्हें दौड़ भी जरूर लगानी नहीं पड़ी। 2-3 कदम अपने पीछे की ओर जाते हैं, 20 गज के दायरे के कुछ बाहर इस कैच को लपक लिया और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है। साहुल का विकेट यहाँ पर गिर चुका है 5 रनों पर और चैलेंज बॉयज मोड़ा और अपना पहला विकेट खो चुका है 5 रनों के ऊपर। इट्स 5 for 1। New batsman, number 3 batsman is now comes out to the middle. 4 challenge boys Muller is Aris और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार तौफ की ओवर की अंतिम गेंद का। और तैफ गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए पावर प्ले खत्म होने से पहले की अंतिम गेंद लेकर तैफ तैयार है। गेंदबाज बल्लेबाज एरिस के लिए अंतिम गेंद। बेहतर फैंटास्टिक डिलीवरी, जस्ट मिसिंग और साथ ही ऑफ स्टंप। विकेट कीपर ने तेजी के साथ विकेट जरूर चटका है लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित। बेहतरीन ओवर समाप्त हो चुका है तैफ का जिसमें सिर्फ 5 रन उन्होंने प्रदान किया और साहुल का विकेट प्राप्त करने में सफल। और पहले ओवर की मुकम्मल यानी समाप्ति के बाद स्कोर है इस वक्त 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ಸಿಟಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಸಜಿಪ ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ ನನ್ನ ಚಿಮುಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. और back to this game 5 for 1, that means 46 minus 5, that means 41 more runs now they have to score for victory in remaining 4 overs and the required run rate is now straight away gone up to exactly 10.25 runs per over. 41 रन 24 गेंदे 4 ओवर 10.25 रन प्रति ओवर रिक्वायर्ड रन रेट। और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए नवाज नंबर 21 की जर्सी पहने हुए इस वक्त तैयार और सामना करते हुए इस वक्त मसूद जो कि 3 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए 3 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया है। और नवाज पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर विकेट। पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर बासित जो कि इस वक्त फील्डिंग में जमावट यहां पर करते हुए और इस बीच नवाज पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 6 रनों पर 6 for the loss of 1 wicket at the start of this second over in fact। और गेंदबाज रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाह नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट, पॉइंट पर गेंद पहुंचे और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं। 7 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर और कुल मिलाकर दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। और इस बीच अगली गेंद लेकर गेंदबाज नवाज इस वक्त तैयार रहता है तो बढ़ता विकेट लेग स्टंप पर आते हुए गेंद वाइड का इशारा और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 8 रनों पर। सिटी बॉಯ್ಸ್ ಸಜಿಪ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹಂಬೆಂಬಳ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ ನನ್ನ ಜೀವಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ और नवाज अगली गेंद इस बार पैरों पर गेंद टकराई, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन पर 1 रन का इजाफा। रन सिर्फ सिंगल्स के रूप में बनते हुए चाहिए कुछ दमदार स्ट्रोक चौके और छक्के के रूप में यहाँ पर कमबैक करने के लिए चैलेंज बॉयज मलार के बल्लेबाजों को। और नवाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर तक विकेट तैयार। यह गेंद उछाला इस वक्त मिड विकेट पर लेकिन फील्डर मौजूद, प्रोटेक्शन आउट देयर है, डीप मिड विकेट, जस्ट अ सिंगल ही गॉट और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 अंकों पर यानी 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 10 for the loss of 1 wicket in the over number second in progress। और गेंदबाज इस बीच नवाज अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट। यह गेंद उछालना चाह नॉट करेंगे दैट वन प्रॉपर्ली फॉलो थ्रू में नवाज अपनी दाईं ओर जाकर गेंद को जब तक फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 11 for the loss of 1 wicket in the over number second in progress। slower progressing here for City Boys
इस बीच रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ गेंद को उछाला जरूर, लेकिन स्ट्रोक्स में इतना पर्याप्त दम नहीं कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके। और एक बेहतरीन कैच यहाँ पर लपकते हुए डीप कवर पॉइंट के फील्डर, हालांकि हवा के रुख के साथ इस वक्त गेंद को उछाला था। ही जस्ट प्लेड दैट वन विद द विंड, और जैसे ही गेंद सीमा रेखा को पार करे वहां पर डीप कवर पॉइंट पर जो फील्डर थे बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को उन्होंने लपका, और आखिरकार सीमा रेखा से लगभग 1 या 2 इंच अंदर कहना पड़ेगा इस कैच को उन्होंने लपका बेहतर तरीके से, बेहतर जजमेंट के साथ। और इसी के साथ ये दूसरा विकेट तो इस वक्त अंपायर कुछ बातचीत करते हुए यहाँ पर कि कैच को लपकते समय फील्डर का शरीर का कोई अंग सीमा रेखा को टकराया था या नहीं, वहां पर परिशीलन न करते हुए। और इस वक्त देखते हैं आखिरकार क्या निर्धार देते। तो इस वक्त बल्लेबाज So welcome back once again. 1.5 overs completed and the batsman departs. Masood caught brilliantly by the deep cover point fielder just inside the fence of the bowling of Nawaz. And 11 on the board, 2 wickets down. 11 रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान पर 1.5 ओवर 1.5 ओवर्स का खेल इस वक्त पूर्ण हो चुका है और अंतिम गेंद इस ओवर के लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। आसिफ नए बल्लेबाज का आगमन इस वक्त होता हुआ निश्चित रूप से चंद चौके और छक्कों की यहाँ पर सख्त जरूरत चैलेंज बॉयज मलार के बल्लेबाजों को यहाँ पर कम बैक करने के लिए। और गेंदबाज इस ओवर में अंतिम बार नवाज गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट
यह गेंद उछाला इस वक्त खूबसूरती के साथ गैप चुनते हुए लंग ऑफ पर, लेकिन फील्डर काफी तेजी के साथ दौड़ कर आए वहां पर। बेहतर फील्डिंग फील्डर ने की इस वक्त लंग ऑफ पर, और 2 रन मात्र इस वक्त बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ। खूबसूरत स्ट्रोक था, लेकिन उतनी ही खूबसूरत फील्डिंग वाइड लंग ऑफ फील्डर के द्वारा सीमा रेखा के अंदर 2 रन मात्र बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 13 रनों पर। 2 ओवर की मुकम्मल यहाँ पर हो चुकी है, और 2 ओवर की मुकम्मल के बाद 13 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। दोनों आरंभकार बल्लेबाज को खोने के बाद अब इक्वेशन की ओर नजर डालें तो 46 से 13 घटा दिया जाए तो 33 रन और चाहिए विजय के लिए। 33 more runs now they have to score for victory in remaining 3 overs, and the required run rate is now straight away gone up to exactly 11 runs per over। ठीक 11 रन प्रति ओवर के औसत से बचे हुए 18 गेंदों में 33 रनों की और दरकार। और कुछ बातचीत के बाद गेंदबाजी का जिम्मा इस वक्त सौंपा जा रहा है गेंदबाज जो कि 06 नंबर की जर्सी पहने हुए इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए सियाब, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। तीसरा ओवर शुरू होता हुआ चैलेंज बॉयज मलार की पारी में, और फील्डर से इस वक्त मैदान पर जाते हुए दोपहर का वक्त लगभग और धूप का प्रकोप काफी गहरा मैदान पर, और एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट महानायक जय भीम ट्रॉफी 2025-26 की शानदार प्रगति सुंदर से विशाल से राजीव गांधी पंचायत मैदान मुडीपू पर इस वक्त होते हुए इस बार गेंद को उछाला, नॉट क्वाइट मिड लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसमिसल, और ऐसा कहना पड़ेगा गेट सम एक्स्ट्रा बाउंस फॉर द बॉलर द लास्ट मोमेंट, और इस एक्स्ट्रा बाउंस को समझ नहीं पाए यहाँ पर बल्लेबाज। गेंद को उछाला जरूर लेकिन गेंद टॉपेज पर टकराए, मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, और मिड ऑफ पर आसानी के साथ इस कैच को लपक लिया गया। एक और विकेट गिर चुका है यहाँ पर, एरिस की पारी समाप्त, और तीसरा विकेट गिर चुका है। चैलेंज बॉयज मलार आर नाउ लुकिंग इन ट्रबल इन दिस सिचुएशन। इट्स 13 for 3, 17 balls left, 33 runs required. Absolutely a difficult task in front of the batsmen of Challenge Boys Malar, but not impossible. If they batted bravely, it would have been possible for them. जहाँ तक सवाल है सफवान नए बल्लेबाज का आगमन इस वक्त होता हुआ, और वो इस वक्त सामना करेंगे सियाब की गेंदों का, जो कि अपनी पहली गेंद पर विकेट प्राप्त कर चुके हैं। अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट। यह गेंद बेहतर क्विकर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी, लो फुल टॉस के तौर पर गेंद थी, गेंद को ऑन साइड पर पुल करना चाहता चूके, और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है 13 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार सियाब गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद स्वीप करना चाहा, शॉर्ट टर्न पर गेंद पहुंची तेजी के साथ, 1 रन के लिए दौड़ पड़े बल्लेबाज। वाइड का इशारा, ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकलते हुए, और 1+1 2 runs now added to the total, और 2 रन वाइड के रूप में उनके खाते में जुड़ते हुए, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 15 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 15 for the loss of 3 विकेट, और सियाब अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद उछाला, खूबसूरत स्ट्रोक लंगोन पर जाती हुई, लेकिन काफी लंबा दौड़ इस वक्त लगाते हैं फील्डर। गेंद तक जब तक पहुंचे बल्लेबाज के बाद मौका था 2 रन प्राप्त करने का, डायरेक्ट हिट लग चुका है। तीसरे रन के लिए दौड़ पड़े, 3 रन यहाँ पर पूर्ण करने में सफल। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, 3 रन यहाँ पर बल्लेबाज प्राप्त करते हुए बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट द्वारा, और इन 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 18 रनों पर। बेहतर स्ट्रोक था बल्लेबाज का, और एनफील्ड क्लियर करते हुए गेंद को खेला था लंगोन पर, और 3 रन बल्लेबाज आसिफ इस वक्त बटोरने में सफल। 18 for the loss of 3 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। 3 गेंदें इस ओवर में फेंके जा चुके हैं। कुल मिलाकर 2.3 ओवर का खेल पूर्ण हो चुका है, और 2.3 ओवर का खेल होना बाकी, यानी 15 गेंदें पूर्ण हो चुके हैं। 15 गेंदें और बाकी, बचे हुए 15 गेंदों में रन से चाहिए इस वक्त 28 टू गेट इन रिमेनिंग 15 डिलीवरीज, और गेंदबाज सियाब एक लंबा ओवर उनकी पारी का इस वक्त गुजरता हुआ बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज सफवान जो कि इस वक्त सामना करते हुए सियाब की गेंदों का,
और अगली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद, ओह बेहतर गेंद, फैंटास्टिक डिलीवर, एक्स्ट्रा क्विक वन। गेंद को ड्राइव करना चाह चूके विकेट कीपर बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर भी गेंद को ठीक समझ नहीं पाए और गेंद जब तक शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्ड हो 1 रन का इजाफा। लगभग ऑफ स्टंप से कुछ थोड़ी सी दूरी पर गेंद निकली थी इस वक्त। बेहतर गेंद थी गेंदबाज सियाब की, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ इस गेंद को उन्होंने फेंके थे और अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार आसिफ इस वक्त सामना करते हुए सियाब की गेंदों का। और यह गेंद आसिफ का स्ट्रोक स्ट्रेट इनटू द हैंड्स ऑफ मिड ऑफ फील्डर। दमदार स्ट्रोक जरूर लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल गलत था और यहाँ पर गेंद सीधे पहुंचे मिड ऑफ फील्डर के हाथों में और इसी के साथ एक और विकेट यहाँ पर गिर चुका है। आसिफ का विकेट गिर चुका है, चौथा विकेट हो चुका है इस वक्त। चैलेंज बॉयज मलार 19 रनों के ऊपर। आसिफ डिपार्ट्स एंड नाउ चैलेंज बॉयज मलार वंस अगेन लुकिंग डीप इन ट्रबल। इट्स 19 for 4. So number 6 batsman is now comes out to the middle. जाफर और वो इस वक्त सामना करेंगे सियाब की गेंदों का। सियाब गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। जाफर के लिए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद सियाब बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए यह गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त मिड ऑफ की दिशा में तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े। निशाना इस वक्त चूक चुका है मिड ऑफ फील्डर का और इस बीच बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके हैं। जोखिम भरा रन लेकिन यशस्वीतम दोनों बल्लेबाज पूर्ण करने में सफल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 20 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर की मुकम्मल लेने समाप्ति के बाद 3 gone 20 for the loss of 4 wicket for challenge boys Mala. Still they are searching for the right track. 26 to get from remaining 12 balls, that means remaining 2 overs. और जहाँ तक चौके और छक्कों का सवाल है तो ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त चंद चौके और छक्कों के सख्त दरकार इस वक्त बल्लेबाज चैलेंज बॉयज मलार के। और इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए शाकिर और रोबर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद बेहतर, फैंटास्टिक पीस ऑफ वर्क मेड बाय विकेट कीपर। अप गोस द फिंगर फ्रॉम स्क्वायर लेग अंपायर। 1 more wicket fallen. ऐसा कहना पड़ेगा स्ट्रोक खेल में चूंकि अपना बैकफुट कुछ हद तक उठाया था, लिफ्ट किया था और इसे देखते हुए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड विकेट कीपर ने तेजी के साथ विकेट यहाँ पर चटका दी है और इसी के साथ एक और विकेट यहाँ पर गिर चुका है। बेहतर स्टंपिंग विकेट कीपर द्वारा जाफर की पारी समाप्त। 20 रनों पर 5वां विकेट खो चुका है। चैलेंज बॉयज मलार काफी संकष्ट की स्थिति में इस वक्त नजर आता हुआ। तो इमरान का आगमन इस वक्त होता हुआ। 11 गेंदें बाकी, 26 रन चाहिए। मुश्किल सा लक्ष्य जरूर लेकिन नामुमकिन नहीं और एक दिलेर भरी बल्लेबाजी, गट्सी बैटिंग जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, यहाँ पर निश्चित रूप से चैलेंज बॉयज मलार को इस मैच में वापस ला सकती है। और इस बीच गेंदबाज शाकिर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। नए बल्लेबाज इमरान जो कि इस वक्त सामना करते हुए और शाकिर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद ड्राइव करते इमरान ने खूबसूरत स्ट्रोक वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद पहुंचे। क्लीन पिकअप, नॉट मोर देन अ सिंगल। इनफैक्ट कम बैक फॉर द सेकंड, दिस टाइम ही वोंट सर्वाइव। इस बार बल्लेबाज बच नहीं पाएंगे। सीधा थ्रो पहुंचा था, बेहतर थ्रो वाइड लॉन्ग ऑफ फील्डर का। इस वक्त सीधे विकेट कीपर के हाथ में स्ट्राइकर एंड पर और एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। विकेटों के ऊपर विकेट यहां पर गिरते हुए और हर विकेट के पतन के साथ दबाव इस वक्त चैलेंज बॉयज मलार के बल्लेबाजों पर बढ़ता हुआ। इमरान की पारी समाप्त। 1 रन पर रनआउट के रूप में पेविलियन वापस 6वां विकेट खो चुका है। चैलेंज बॉयज मलार 21 रनों के ऊपर। इट्स 21 for 6. आसिफ नंबर 18 की जर्सी पहने हुए नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद।
सामना करेंगे शाकिर की गेंदों का। और शाकिर इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार ड्राइव, ओह ब्रिलियंट, दिस इज एन आउटस्टैंडिंग वर्क, बट आई थिंक द बैट्समैन गॉट हिज बैक फुट टू स्क्रीज एट द लास्ट मोमेंट बिकॉज ऑफ, हालांकि स्ट्रोक्स खेलते समय उनके एक हाथ से बल्ला यानी बैट फिसल गया था, लेकिन स्ट्रोक्स खेलने में सफल और एक रन पूरे करने में भी सफल। 27 रन बन चुके हैं, 27, दैट मीन्स लास्ट ओवर रिमेनिंग एंड 19 रन टू गेट, 19 टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग लास्ट 6 deliveries for challenge boys Malar. So what a fantastic tournament is now progressing here in the name of Mahanayak Jai Bhim Trophy 2025-26 और निश्चित रूप से सुंदर से विशाल से राजीव गांधी पंचायत ग्राउंड मुडीपू के इस मैदान पर ये प्रतिष्ठित श्रृंखला वन प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट एक शानदार प्रगति यहाँ पर करते हुए और अंतिम ओवर शुरू होता हुआ गेंदबाज पहले गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली बट ही गॉट अ सिंगल। शबीर गेंदबाज है, स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 28 रनों पर, 28 ऑन द बोर्ड, दैट मींस 18 रिक्वायर्ड फ्रॉम 5 बॉल्स नाउ। और शबीर अगली गेंद, बेहतर गेंद थी, फैंटास्टिक डिलीवरी, विकेट कीपर चूके इस वक्त बिल्कुल सही रफ्तार के साथ, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद को इस वक्त फेंक दी थी और बाई के रूप में एक रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुका है, बिल्कुल सीधी लाइन के साथ कहना पड़ेगा इस गेंद को फेंकी थी इस वक्त गेंदबाज ने। 4 गेंदें बाकी, 17 रन चाहिए, 17 टू गेट फ्रॉम 4 डिलीवरीज, ड्राइव किया मिड ऑन पर, तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन प्राप्त करने में सफल, ओवर थ्रो और बल्लेबाज दूसरे रन के लिए यहाँ पर दौड़ पड़े और दूसरा रन पूर्ण करने में सफल। couple of runs added to the total, 31 now 3 balls left and 15 runs required और अंपायर ने इशारा किया कि देयर एग्जिट्स देयर टाइम लिमिट, तो एक खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा। अंतिम अवकाश बल्लेबाजों के सामने चैलेंज बॉयज मलार के 15 टू गेट फ्रॉम 3 डिलीवरीज, 2 sixes and 1 boundary required in the last 3 deliveries. Misses, quicker one from the bowler, fantastic delivery, सिर्फ एक मात्र रन मिलेगा, 32, that means now 14 runs to get from 2 balls। अगर गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड न फेंकते इन बचे हुए 2 गेंदों में तो यहाँ पर कीर्ति स्पोर्टिंग क्लब उल्लाल की विजय निश्चित है, लेकिन क्रिकेट में कुछ कहना मुश्किल है जब तक ना अंतिम गेंद फेंकी जाए। और देखते हैं इन 2 गेंदों में गेंदबाज किस तरीके की गेंदबाज यहाँ पर अपनाते हैं। लेग स्टंप पर आती हुई गेंद और शॉर्ट फाइन लेग पर पहुंची, 1+1 2 runs now, equation stand, 2 sixes required in the last 2 deliveries, 12 runs to get from last 2 balls और 2 छक्कों की जरूरत अंतिम 2 गेंदों में और अंतिम अवकाश बल्लेबाज के सामने, चूंकि बेहतर गेंद थी, फैंटास्टिक डिलीवरी। नाउ 12 रन्स रिकॉर्ड फ्रॉम द लास्ट बॉल और निश्चित रूप से ऐसा कहना पड़ेगा विजय के अति निकट, विजय के द्वार पर आकर रुक चुका है कीर्ति स्पोर्टिंग उल्लाल। और द लास्ट बॉल ऑफ द मैच इज नाउ कमिंग अप, 2 for Sadi off stump, again 1+1 2 runs added, 36, 10 required from last ball now। अंतिम गेंद 10 रन चाहिए विजय के लिए और गेंदबाज, ये गेंद शबीर की गेंद थी, उछालना चाहा चूके और जहाँ तक सवाल है यहाँ पर रन आउट हो चुका है। सो 9 runs victory for कीर्ति स्पोर्टिंग उल्लाल against challenge boys Polar, and with that 9 runs victory they are through to the next round of this competition and the next match is now going to play between City Boys Sajipa versus Young Star Ambedkar. Man of the match of this match, the award goes to the man who scored a valuable 15 runs including 1 6 and a boundary. Basit of Kirti Sporting Ullal adjudged the man of the match for his fantastic knockoff of 15 runs. और जहाँ तक अगले मैच का सवाल है, इस वक्त सिटी बॉयज सजीपा का मुकाबला होगा यंग स्टार अम्बेम्बला के साथ और वो मैच शुरू होगा एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद। तो तब तक
एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. छोटे ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब यहाँ पर मैच नंबर 5 शुरू होगा इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत. तो अब वक्त है एक ब्रेक करना हो. इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू. धन्यवाद. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಡಗೌಟಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಅದು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ. ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣ ಕೊಠಡಿಯ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಿ. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. 2 ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸರ್. ಸೊ the match number 5 between City Boys Sajipa versus team Young Star Amembala. After winning the toss, the captain of Young Star Amembala, they elected to field first, so that we are going to witness the first over of the power play. And just I want to see the field set for the power play. Short fine leg, the fielder at square leg in front of square, the mid on, the fielder down at deep long on, that is onside field and offside mid off, short extra cover, short cover point, short third man, and one fielder down at deep long off. So
This is what the field set for the power play. Here comes the first ball. Start with a good one just outside the line of off stamp. A better line to bowl to the right-hander batter. The tall man Mansoor brought into attack and either faced the first delivery without having any contact with the ball. Wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler. So lovely delivery, beautifully bowled. Perfect one here from the bowler and so second consecutive dot delivery, either trying to get open this account. This time played it straight to runs the feed off. Chance of run out and wide throw came from the field and they survived from the run out. Slight appetization for the run in the occasion after the ball is played straight to the hands of mid-on. The batter either struggled to get home and lucky for him that ball, the throw which is misses the stump and they completed a quick single and risk single. One without loss of any wicket in the over number first stage in progress. Good start there for Mansoor so far. Is experienced campaigner for the team, a youngster Memar. Very good opening bowler, very economical bowler for the side. It's not so easy to come and bowl in the power play when the batters are looking for some domination. Need to be very accurate in the line and length. Now slight bit of change in field set. One more extra fielder added in the ring and getting the protection into the straight long off region for the right-hand batsman. Lovely sweep shot. Played it in the gap down to deep square leg regional fielder behind the ball. Will it going to be ball winning the race against? Yes, it is. The ball winning the race against the fielder. The fielder chasing the ball like a cat chasing a mouse. At last, which is a fielder fails to win the race against the ball. Lovely sweep shot. Played it down to deep square leg. Musin, the batter, is getting that very lovely sweep shot. Quite effectively played. Minimum effort, but he got a maximum result for that. He got a boundary for his team as well. Welcome boundary for team Sajipa City Boys. Sajipa again wanted to go for the expansive drive. Played it beautifully. Exquisite timing as well. It's not quite intended, but he's got a plenty of bat onto that. He put some power behind the stroke. The line is outside the line of off stamp. He drags it. There's no long on. That's why once the ball defeats the mid-on, the quick outfield in this newly built Rajiv Gandhi Cricket Stadium. The very good outfield and ball went like a tracer bullet and a couple of boundaries, consecutive boundaries for the bat of Musin and Skobat Namuzan to in 9 on the board without loss of any wicket. Again, wanted to go for the single. This time they're going for the single as well. Quick running between the wicket, directed, but of course the batter is safe. One more addition to total after completion of over number first. Good start for the team. City Boys, Sajipa got a 10 in the first and it's a great start for Sajipa, not for the team youngster Amembala. Next match, the match number 6 will be played between team Shine Sports Ullal versus Najat Ullal, and the two teams from the same localities will going to have a battle for the next match, match number 6, and wait and see which team will going to win this match. I request all the players of Shine Sports Ullal as well as Najat Ullal to kindly request you to complete the formalities of signatures as soon as possible. ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ 6ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಶೈನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಜತ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ತಂಡ. Second over will going to start. Just number 18 brought into attack to ball the second over. After that, power play. The fielding restriction is off, so that we are finding some fielders in the deep. Then straight away, watching the one fielder at long off, one at long on, one at mid wicket, and again the one fielder is going towards a deep long on. Bowler name, please. Bowler name.
Enough the bowler to bowl the second over. So we can see that three protection which is given in the onside region. Deep square leg and one at deep mid wicket and one at deep long on. Different condition, different experience for all the team players in this huge cricket ground. Starts with the delivery which is the batsman wanted to go for the reverse sweep, improvising reverse sweep, ball missing his bat, hitting his leg. Leg by call by umpire. With that leg by scope Namuzan to 11 on the board without loss of any wicket. Exquisite live telecast of this prestigious cricket tournament through Mangalore media. The day number 1 of prestigious Jai Bhima Mahanayak Jai Bhima Trophy 2025-26 is in progress. Lovely deliver, extra bounce, last moment for the bowler Anauf in the delegation. Ball along the carpet, and at the moment batter wanted to go for the drive. He missed it completely. Either facing his next delivery on Safa. Third time in this over. Enough correction. Right now over the wicket bounce. Lovely delivery once again. He's just testing the temperament of the batter with that line. And either a little bit struggling to get the ball, especially when he was trying to play the ball outside the line of off stump. The technique which is not really up to the mark to get into that line. He tried to play away from his body. Again missed it completely. Good bowling, good line from the bowler. This time switch it. Chance here for the fielder to take the catch, but drops it a little short of the fielder. A little bit late movement there from the fielder. The ball is in there for a while, but there is not a good quick movement from the fielder. The batter survived from that catch. He picked up a single either. Scored Namuzan to 12 on the board without loss of any wicket in the over number. The second is in progress. Time is exactly 1 past 10 in the afternoon. Still, it's not hot. I want to tell you because of that month of December and the cool condition. Again, down the leg side, going for the expansive drive. Chance of run out. The wicketkeeper fumbles and umpire called it by. A difficult opportunity whenever the ball is outside the line of leg stump. It's not so easy work for the wicketkeeper behind the stump. Judgment is always the key for the success when you are trying to get the ball outside the line of leg stump. And scored Namuzan to 13 without loss of any wicket in the over number. Second is in progress. Lovely delivery, beautifully bowled. Now once again we can see that the bowler is so clever. You know exactly the reads that batsman has got a little bit problem with that line outside the line of off stump. And over number 2 which is completed. Good over there from Anauf. Very tidy over is indeed. After completion of over number 2, it's 12 on the board. 3 runs coming from this over. The great over from the point of view of team youngster Amembala. 13 for no loss. Going exactly 6.5 runs per over. 10 in the first, 3 in the second. So third over going to start with the jersey number 7. Anwar brought into attack. One more very good bowler for the side of youngster Membar. Very talented. Now he's just setting a field. Long off is there. The fielder at a deep extra cover. The long on is there. Mid wicket is there. Deep square leg is there. Inside the ring there is a fielder at the backward point. Short extra cover. And one fielder at short fine leg. Wicket keeper standing well after the stumps. Now short square leg coming into that short mid wicket region. Musin will go into face Anwar. Oh, lovely delivery. Again, the bowler, all the bowlers, we can see that they're targeting that line. They're seeing that batsman is not good enough in that outside the line of off stump. The line is so good to start with the dot ball. Anwar, second time in this over. To Musin, and again, the fielder coming a little bit wider into the deep extra cover region.
Right arm over the gate and bounce down the leg side. It's going to be a chance for run out in the non-striker's end. And he's tried to hit the stump but missed the stump completely. A good opportunity to cross over for extra run. 1+1, a couple of runs added to total. Golden chance of run out. Missed out by Anwar and they conceded extra run. So 15 on the board. 15 for no loss in the over. Number third is in progress. Anwar to continue. Either is betting on 2. Once again, problem continues here for either. Already played 6 dot deliveries and only scored a couple of runs. And 5 overs game, playing 6 dot balls is always going to be the crime, what you can say, in the limited over matches. Again, played it nicely down to deep square leg region. Will they come back for the second? Definitely. The fumble from the fielder, grabbing this opportunity. 2 more to the total after a long time, and either managed to get his runs what he wanted. A couple of runs. 17 on the board without loss of any wicket in the over. Number 3 is in progress. The first day of prestigious Jai Bhim Trophy 2025-26. The tournament which is organized for UCA A Pool and BSCA A Pool. Drives that one down to deep extra cover region. Protection has been given in the deep. They wanted to come back for the second. Slight a bit of agitation, but they're going against the second run. Rightly so. One run to either, and for his team, score moves on to 18 on the board. 18 without loss of any wicket. And Anwar to continue. So far in this over, conceded some runs in the form of extras. Again, attempted for the switch it. Wicketkeeper missed it. They completed the single. I think it's from the bat. No signal came from umpire. It's a bye call by umpire now. The ball missed the bat of the batter. The wicketkeeper missed it. One more addition to total. 19 on the board for the without loss of any wicket. Either and Musir are the batters are there in the middle. Try to build some partnership. Driven upishly but quite safely down to long off decision. Fielder almost rushing towards the ball. Very lucky for him that ball is just kept low and he kept his eye on the ball. Just a single. One more over completed after completion of over number 3. And team Sajipa are searching for the right track. They're 20. Not a bad run rate. 2 overs remaining. They got all 10 wickets in hand, so that they can try for some acceleration of run rate in remaining 2 overs. It's not an easy condition because they are playing in a different condition. So City Boys, Sajipa, one more well-reputed team, has got a record of defeating the top ranking teams of Mangalore in the last 2 years back in the Manchi cricket ground. They defeated Young Friends Surwa and they defeated NM Cricketers Mangalore, and even they defeated Gori Young Boys in the semi-final. And this has been outstanding record what team City Boys Sajipa has got. They got some good players in the side. They can give some kind of course, every kind of competition for any big teams. So far, I think going very well for the team. It's score what talking about. Salman brought into attack. 20 on the board. Right arm over the wicket. Balls drives that one down to long on. Only the single, not more than that.
Good fielding there by the fielder. Deep long on, rushed on to that ball. You know exactly the batter will going to try for the second. Settle for a single. 21 on the board. Without loss of any wicket. Both opening batters are slowly and steadily. They're trying to get some acceleration in the run rate. Second time in this over. Anwar away from us. Balls exposing his stamp and deck. Wanted to go for the single. Chance of run out. White throw came from the field. By call by umpire. Shuffled across the line of the delivery. And Hussein just wanted to go for across the line. Try to get the big shot on the mid wicket. But he missed it completely. 22 on the board. Right above the wicket, Salman. Lofted and looks like the fielder is underneath it. Oh, he drops the catch. My goodness. Straightforward chance for the long off fielder. He not only drops the catch, but a couple of runs which is considered. That's very costly. Dropping the catch, giving the runs. It's 24. You can't give the life to the batter like either. Down the leg side. This is what happening when the fielder we are not supporting you. The bowler all in sudden lack of confidence as he balls down the leg side, called it wide. 25, quarter century comes up here for the team Sajipa, City Boys Sajipa. Wanted to go for the expensive try. Mansoor once he looking for the run out, but quickly realizing that if he misses the stumps, it might be an overthrow. So he's just going against that one and happy with the dot ball. Salman, final time in this over. Correction, fifth time in this over. This time chipped it away and fielder in the mid wicket will going to get that one. This time either can't be a lucky. His luck, he got a luck in the previous couple of deliveries back and long off fielder drops the catch. But now mid wicket fielder not making a mistake at all. This takes a catch. That's end of either the first wicket back in the pavilion of City Boys Sajipa. It's 25 for 1. Either contributed with the 9 runs. Came as an opener for the side. Even Musir is also batting on 9 with the help of 2 boundaries. He played less deliveries compared to either. So new batsman came into bat. Ismail, one more lovely batter, recognized player, accomplished player. Fantastic striker of the ball. Ismail. Salman to continue. Again, this is what the quality of Ismail. Just have a look at that running. But oh, it's just trouble. He's in trouble. He's in trouble. Now they're going for the second run as well. Chance of run out in the striker's end. Looks like they have made it. Oh, there is a chance for run out. Ismail, he starts his second run. But lucky for him that the bowler misses the throw. Over number 4, which is comes to an end after completion of 4 overs. Team City Boys Sajipa are 27 on the board. Just under 7 runs per over. The run rate progressing. Yes, we are talking about the next match. 6th match. Shine Sports Ullal takes on Nazat Ullal. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೈನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಜತ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ತಂಡದ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. The last over we're going to start. The jersey number 69, Zawad
Jawad will go into ball that last over. This time I wanted to go for a reverse shot, a slog sweep shot, but missed it completely. Yes, I just heard the sound of kadle, the groundnut seller. Rafiq is ready here to sell his groundnuts. ಸಿದ್ದಿಕ್ ಅವರ ಬ್ರದರ್ ರಫೀಕ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಡಲೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. Beat it nicely down to long operation, not more than a single. With that single, Skoboda moves on to 29 on the board. 29 for 1 in the over number. Last is in progress. Last 4 deliveries left. Right above. Again across the line, swings. This time Ismail have to run back. I think he have to run back not to the non-striker, but he need to run back towards the pavilion. No response coming from his partner. The ball misses the bat, deflected from the leg. Ismail wants to complete the single. You know exactly this is the last over. I have to get some runs, but unfortunately he's back in the pavilion. Ismail gone. It's one more wicket back in the pavilion. 29 for 2 wickets. Imran is a new batter in. Good comeback by the team Amemar, youngster Amemar. Excellent comeback. We can see that after that first over 10 runs, then 3 runs in the second, 7 in the third, even 7 in the fourth. And this is the last over. Once again is going to be very effective and very economical as well. Jawad, so far a very tight bowling performance right above the wicket to Musir. This time lofted. It's going to be one more opportunity. We'll go and take this one. Long on fielder drops the catch. My goodness, all the time in the world to take this catch. But he thought it might be a catch for the mid-on fielder. He started a little bit late. Ball is absolutely fumbled by the fielder. After hitting his farm, ball slipped out of his hand. Again, if you see that, 2 drop catches costing 4 runs. One at long off and one at long on. That might be the little bit turning point if it's going to be a low scoring encounter. 31. Disappointment for the bowler. 2 balls remaining. Mushir is trying for the big one. There's some bowled him, cleaned him up, beautifully bowled by the bowler. Absolutely right on the spot, right on the money. The batter just wanted to go for the expansive drive by exposing his stump, shuffled across too much, and bowler did the trick of hitting that furniture and disturbing the furniture, and wicket number 3 is gone. It's 31 for 3. One more fantastic over is in progress from the point of view of team Amemar. So sometime you need to be a little bit sensible when you're playing ground like this. I already mentioned this is almost like you are playing in a Nehru Maidan, the huge cricket ground. In that particular ground when you're playing, you have to be very careful because wicket is not so easy. So placement is I think the perfect technique to implement, rotating the strike. Umpire called this time which is exceeds, so that have to pick one fielder inside the ring. Have to pick one fielder from deep to inside the ring, not more than 4 outside the circle. Last delivery. Mustafa will going to take the strike. Can he get one big shot here? Jawad going for the sweep shot. Will going to complete the single. Not more than that. They're looking for second, and good presence of mind by the bowler. One more wicket back in the pavilion. So that's it. 1 run and a wicket in the form of leg by. 1 run, and the team City Boys Sajipa will going to finish their innings with 32 runs and 33, which is a target set for team Young Friends, correction, Amembala.
youngster Amembala have to get 33. All marks to the bowlers, especially one who bowled the second over, and third and fourth and fifth over bowled brilliantly. The last over has been outstanding from Jawad. And because of their big contribution, they managed to restrict their opposition for just 32. And they set a target of 33 to win this match. Now all up to the batters of team youngster Amembala, how well they will going to justify the effort of their bowlers. And we will see how well the team Sajipa will going to come back. City Boys Sajipa will going to come back with their bowling. Very interesting innings will going to commence, and for that I request Mr. Gopi, my long-time cricket partner, will going to take over the microphone and in Hindi language. It's over to Gopi. Thank you. धन्यवाद सतीश। तो इस वक्त लक्ष्य है 33 रनों का, 33 द लक्ष्य, 33 द टारगेट फॉर यंगस्टर Ambedkar set by City Boys Sajipa. And their innings now going to start. जवाद और अशरफ आर्मिक बल्लेबाज, रहीम गेंदबाजी शुरू करते हुए उनके पारी की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। 33 रन, 33 लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, पहली गेंद इस बार लेग स्टंप पर आते हुए गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर मोड़ना चाहता और गेंद कुछ ज़्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और रन इस बीच इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 0 पर और इस बीच गेंदबाज रहीम गेंदबाज आगे बढ़ाते हुए जवाद के लिए पहला और एकमात्र पावर प्ले ऊपर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर और इस बीच रहीम अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद, ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद एक बार, इस बार वाइड का इशारा, लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकलते हुए और वाइड के इस रन के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है यंगस्टर Ambedkar के लिए। 1 रन 90 रन से नुकसान के 1 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर और रहीम अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए यह गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को बोलना चाहा, गेंद पहुंची मिड विकेट पर जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और इससे पहले कि गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। नॉट क्वाइट मिडली गेट एट द लास्ट मोमेंट बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के और गेंदबाज रहीम अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार अशरफ जो कि सामना करने के लिए तैयार रहीम की गेंदों का और रहीम स्वीप करना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग पर, तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े और 1 रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल लेग पाई के रूप में और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 3 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर, 33 द टारगेट फॉर देम इन 5 ओवर्स फॉर यंगस्टर Ambedkar और इस बीच रहीम अगली गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ
राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। टॉप एज मौका हो सकता है मिड विकेट फीडर गेंद के नीचे आते हुए और इसी के साथ पहला विकेट यहां पर गिर चुका है। बल्लेबाज ने गेंद को ऑन साइड पर इस वक्त उछालना चाहा था, लेकिन गेंद कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा बाउंस इस वक्त लेते हुए असामान्य उछाल जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, टॉप एज पर गेंद टकराई और मिड विकेट पर अपनी दाईं ओर जाते हुए इस कैच को एक बेहतर जजमेंट के साथ इस वक्त फील्डर ने लपका और इसी के साथ जवाद की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है और यंगस्टर अम्बेम्बला अपना पहला विकेट खो चुका है 3 रनों के ऊपर। इट्स 3 for 1, जवाद डिपार्ट्स। जस्ट talking about the next match, Shine Sports Ulal takes over Nazat Ulal in the next match। दो उलाल की बेहतर टीम है अगले मैच में मुकाबला आमने सामने होंगी। शाइन स्पोर्ट्स उलाल और नजत उलाल के बीच अगला मैच खेला जाएगा। जहां तक इस मैच का सवाल है, इस मैच में इस वक्त मुकाबला जारी है इन दोनों टीमों के बीच, सिटी बॉस सजीपा और यंगस्टर अम्बेम्बला के बीच। और गेंदबाज इस वक्त तैयार बाएं हाथ राउंड द विकेट रहीम। ये गेंद मंच बॉल आउट, जस्ट गॉन फॉर ड्राइव एट द लास्ट मोमेंट इन फैक्ट एंड द बॉल पास्ड बिटवीन हिज बैट एंड लेग एंड स्टक टू हिज मिडल ऑफ स्टंप, uprooted at last। This is an absolutely good delivery। और ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त गेंद को हल्के से खेलना चाहते थे इस वक्त ऑफ साइड पर, लेकिन गेंद लगभग ब्लॉक होल पर टिप्पा खाते हुए और उनके बल्ले को वंचित करती हुई, बल्ले और गेंद को चीरती हुई सीधे इस वक्त ऑफ स्टंप को बिखेर कर ले गए और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। द बैन डिसमिस्ड इज मंसूर फॉर अ गोल्डन डक एंड नाउ इट्स अ 3 for the loss of 1 विकेट। और सेल्फी इस वक्त लेते हुए रहीम जो गेंदबाज है, विकेट जैसे ही दूसरा विकेट उन्होंने प्राप्त किया, एक बच्चा इस वक्त मैदान पर दौड़ कर आया और सेल्फी इस वक्त उन्होंने लिया। इस वक्त रहीम के साथ शायद रहीम के सबसे बड़े फैन मालूम होते हैं और सेल्फी इस वक्त लेने के बाद निश्चित रूप से ये सेल्फी लेना रहीम जो गेंदबाज है उनके लिए कुछ हद तक आत्मविश्वास को और बढ़ा देगा। और बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त अगली गेंद स्टीयर किया, इस वक्त बैकफुट पर जाने के बाद पॉइंट पर गेंद पहुंची, 1 रन का इजाफा, 1 run added to the total, 4 on the board, 2 wickets down। और पहले ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुका है। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, 4 on the board, 2 wickets lost for youngster Ambembala and this is an absolutely mixed start for them in the first over, 4 for 2 after first over। Match number 5 of this prestigious cricket tournament, Mahanayak Jai Bhim Trophy 2025-26 is now progressing here। और निश्चित रूप से 5वें मैच में इस वक्त मुकाबला जारी है यहाँ पर यंगस्टर अम्बेम्बला और सिटी बॉयज सजीपा के बीच। और नए बल्लेबाज नए गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से और मुस्तफा, और दूसरा ओवर शुरू होता हुआ इस वक्त यंगस्टर अम्बेम्बला की पारी में। और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट मुस्तफा इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। Bowled out, 1 more wicket fallen, fantastic delivery this time from Mustafa and what a dream start for him in the bowling department। Much straighter line, गेंद को खेलने में चूके, he just wanted to play that one with the wrong line, he just paid the penalty for that, off stump uprooted and the man departs, Rabi at the man departs and 1 more wicket lost for youngster Ambembala। Now I must say they are looking in trouble now, it's 4 for the loss of 3 wickets। एक बेहतरीन गेंदबाजी के जरिए इस वक्त गेंदबाजी की शुरुआत कर चुके हैं मुस्तफा, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद थी, गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए, बीट हो गए और गेंद उनके बल्ले और पैर को चीरती हुई सीधे ऑफ स्टंप को बिखेर कर ले गई और इसी के साथ दूसरा विकेट गिर चुका है। नए बल्लेबाज इस वक्त रबियत का स्थान ग्रहण करते हुए नौफल और इस वक्त तो क्रीज पर मौजूद और गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस वक्त मुस्तफा, बाएं हाथ माफ कीजिए इस वक्त अगली गेंद लेकर तैयार नए बल्लेबाज नौफल के लिए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद हल्के से गेंद को खेल दिया बैक टू द बॉलर की दिशा में, रन नहीं मिलेगा, हालांकि 32 रन जरूर यहाँ पर बनाए हैं
सिटी बॉयज सजीपा के बल्लेबाजों ने, लेकिन उस 32 रनों के स्कोर का समर्थन करते हुए इस वक्त गेंदबाजी करते हुए सिटी बॉयज सजीपा के गेंदबाज और दाहिने हाथ ओवर द विकेट मुस्तफा अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेला, डिलीकेटली गेंद पहुंची गली की दिशा में, तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा, लेकिन इससे पहले कि थ्रो पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करेंगे। जस्ट प्ले दैट वन विद द रिवर्स शॉट इन द लास्ट मोमेंट डिलीकेटली जस्ट वाइड ऑफ द गली फील्डर एंड गॉन थ्रू फॉर अ क्विक सिंगल एंड गेट इट कंफर्टेबली एट लास्ट। और एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर और मुस्तफा इस वक्त गेंदबाजी करेंगे अशरफ के लिए, जिन्होंने सिर्फ एक गेंद का अब तक का सामना किया है। फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए गेंदबाज मुस्तफा और इस वक्त वो गेंदबाजी करेंगे अशरफ के लिए। काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र हमें यहाँ पर दिखाई देता है। डीप बैकवर्ड स्कोर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, थोड़ा सा वाइडर और डीप कवर पॉइंट पर एक फीडर मौजूद। स्क्वायर ऑफ द विकेट ठीक सीमा रेखा के पास दाहिने हाथ के बल्लेबाज अशरफ के लिए। और मुस्तफा इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद जस्ट गॉन फॉर अ वाइड स्विंग एट द लास्ट मोमेंट, गुड वन, फैंटास्टिक डिलीवरी, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद यार। गेंद कुछ हद तक टिप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए गेंद को साइड पर पुल करना चाहता बल्लेबाज ने, चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। बेहतर गेंद और इस बीच मुस्तफा अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, 10 से 12 बार गेंद को जमीन पर पटकने के बाद दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद एक बार फिर से फैंटास्टिक वर्क मेड बाय विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स एंड अ फैंटास्टिक डिलीवरी फ्रॉम द बॉलर मुस्तफा। एक बार फिर से बीट हो गया। इस बार गेंद लगभग जमीन के साथ आए थे, ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता, लेकिन गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। विकेट कीपर ने तुरंत 3 विकेटें जरूर उखाड़े, लेकिन बल्लेबाज का बैकफुट क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित उनके लिए। एक गेंद अभी भी बाकी। बेहतरीन ओवर इस वक्त प्रगति पर मुस्तफा का, जिसमें सिर्फ एकमात्र रन अब तक वो प्रदान कर चुके हैं। और अंतिम गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज मुस्तफा तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, 2 लगातार डॉट गेंदें इस वक्त तो फेंक चुके हैं बल्लेबाज अशरफ के लिए। इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए यह गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में पहुंची, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया फील्डर द्वारा। और जहां तक रनों का सवाल है, रन नहीं मिलेंगे। बेहतरीन ओवर की समाप्ति इस वक्त, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद ऐसा कहना पड़ेगा यंगस्टर अंबेबला स्टिल सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक, अभी भी अपनी सही राह को तलाशता हुआ सिर्फ 5 रन जोड़ चुका 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 5 for 3 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 overs फॉर यंगस्टर Ambedkar, still searching for the right track with 3 to go in their innings, and now in remaining 3 overs they have to score 28 more runs for victory, and the required run rate is now straight away gone up to exactly 9.33 runs per over। 18 गेंदें 28 रन चाहिए, और कुछ हद तक मुश्किल इस वक्त लक्ष्य बन चुका है, समीकरण बन चुका है यहाँ पर यंगस्टर Ambedkar के बल्लेबाजों के लिए, लेकिन नामुमकिन नहीं है। और देखते हैं इन बचे हुए 18 गेंदे यानी 3 ओवर में किस तरीके से यंगस्टर Ambedkar के बल्लेबाज 28 रन न बना पाते हैं। तो इस वक्त जहां तक सवाल है, तीसरा ओवर, थर्ड ओवर स्टार्ट्स इन देयर इनिंग्स। सहद गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए। 18 balls remaining and 28 runs required for यंगस्टर Ambedkar। सहद अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त मोड़ना चाहता, चूंकि लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकलती हुई, और वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 6 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। निस्संदेह ऐसा कहना पड़ेगा परीक्षार्थ समय इस वक्त गुजरता हुआ यंगस्टर Ambedkar के बल्लेबाजों के ऊपर। रनों के लिए कड़ा संघर्ष यहाँ पर करते हुए बल्लेबाज, और गेंदबाज सहद दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद विकेट कीपर चूके गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग पर, और 1 रन बल्लेबाज को मिला लेग बाई के रूप में, और लेग बाई के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर। 7 for the loss of 3 wicket in the over number 3 started just short while ago in their innings। और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए सहद दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार, और दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए सहद की गेंदों का। यह गेंद इस बार गेंद को मोड़ना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त गली की दिशा में। 1 रन फिर से मिलेगा, और लेग बाय का इशारा अंपायर द्वारा। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 8 रनों पर। रन
इस वक्त बल्ले से रन न बनना कुछ हद तक मुश्किल हो चुका है बल्लेबाजों को। कोशिश तो ज़रूर कर रहे हैं बल्लेबाज, लेकिन सफलता अब तक उनके पक्ष में नहीं आई है। और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए इस वक्त गेंदबाज सिटी बॉयज सजीपा के साथ इस वक्त अगली गेंद लेकर तैयार नौफल सामना करते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट। ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, गेंद पैरों पर टकराई। यहाँ पर रन के लिए जरूर दौड़ पड़े, लेकिन फील्डर इस वक्त मांग करते हुए कि बल्लेबाज ने जानबूझकर यहाँ पर गेंद को पैर से टकराया, लेकिन जी नहीं, अचानक गेंद उनके पैरों पर टकराई और वहीं पर दूर चले गई टकराने के बाद। और सही तरीके से पर इस गेंद यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा रन इस वक्त रद्द कर दिया गया। शायद डिलिबरेटली इस वक्त गेंद को उन्होंने ढकेला था पैर के जरिए आखिरकार रन जो कि है इसे रद्द कर दिया गया है। अचानक गेंद उनके पैरों से टकराकर दूर नहीं गई थी, डिलिबरेटली जानबूझकर गेंद को उन्होंने पैर से ढकेला था, तो इस वजह से इस रन को रद्द करते हुए अंपायर। और इस बीच गेंदबाज शाहद अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। तो इस वक्त गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार साहद। और जहां तक सवाल स्कोर का, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 8 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाज साहद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार सामना करते हुए इस वक्त नौफल। और इस बीच साहद की ओवर की अगली गेंद दाहिने हाथ ऊपर द विकेट। ये गेंद इस बार एक्स्ट्रा बाउंस, रन के लिए दौड़ पड़े। कोई बैकअप नहीं, वहां पर कोई बैकअप नहीं नॉन स्ट्राइकर एंड पर। और निश्चित रूप से यहाँ पर रन आउट था जरूर नॉन स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं स्टंप्स के पास नॉन स्ट्राइकर एंड पर। और बल्लेबाज इस गेंद पर बच चुके हैं और एक जोखिम भरा रन उनके खाते में जुड़ चुका। 9 रन बच चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 9 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। साहद फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा, बेहतर गेंद इस वक्त, फैंटास्टिक डिलीवरी फ्रॉम साहद, मच स्ट्रेट लाइन। और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। अपने दूसरे प्रयत्न में इस वक्त गेंद को फील्ड कर लिया विकेट कीपर ने और डॉट गेंद, एक और डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ता हुआ। अंतिम गेंद इस ओवर में बाकी, ऐसा कहना पड़ेगा रनों के लिए कड़ा संघर्ष यहाँ पर करते हुए यंगस्टर अम्बेबला के बल्लेबाज इस ओवर में अंतिम बार साहद गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज नौफल जो कि इस वक्त सामना करते हुए। ये गेंद ऑन साइड पर, गेंद को मोड़ा जरूर लेकिन नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली राइट फ्रॉम द मिड ऑफ द बैट, जस्ट अ सिंगल ही गॉट। सो सिंगल टू एंड द ओवर, वन मोर गुड ओवर in City Boys Sajipa's point of view came to an end. So after 3 overs, struggling time continuing here for the batsmen of youngster Ambedkar. It's 10 for 3 after 3 with 23 to get from remaining last 12 overs. That means remaining from the last remaining 2 overs. And the required run is now straight away gone up to exactly 11.5 runs per over. हर मैच के मैन ऑफ द मैच के लिए अलाउद्दीन शर्मा देलकट्टे की ओर से एक कूपन दिया जाएगा, फ्री शावरमा जो कि प्रदान किए जाएंगे। अलाउद्दीन शर्मा देलकट्टे जिन्होंने इस मैन ऑफ द मैच की घोषणा की है। फ्री शावरमा हर मैन ऑफ द मैच के विजेता को एक ट्रॉफी के साथ दिया जाएगा, एक शावरमा और एक स्वादिष्ट शावरमा जो कि दिया जाएगा अलाउद्दीन शर्मा देलकट्टे की ओर से मैन ऑफ द मैच के ट्रॉफी के साथ। तो काफ़ी बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला, एक शानदार प्रगति यहाँ पर करते हुए महानायक जय भीम ट्रॉफी 2025-26 के अंतर्गत। और चौथा ओवर हैदर इस वक्त शुरू करते हुए। पहली गेंद लेग स्टंप पर आती हुई, गेंद को मोड़ा खूबसूरती के साथ बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में, बेहतर फील्डिंग है। जी हाँ, गेंद को रोकने में सफल हो चुके हैं। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद को रोका गया बड़ी मुश्किल के साथ और इस बीच बल्लेबाज तीसरा रन यहाँ पर दौड़कर पूर्ण करने में सफल। 3 रन यहाँ पर मिल चुके हैं। विकेट कीपर के पहुंच से बाहर थ्रो पहुंचा था फील्डर का
और जब तक गेंद को बैकअप किया जाता 3 रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ चुके हैं। 13 रन बच चुके 3 विकेट के नुकसान पर। 13 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर। 11 बॉल्स लेफ्ट एंड 20 रन्स मोर रिक्वायर्ड। 20 रन चाहिए, 11 गेंदें बाकी और कम से कम एक चौके या छक्के की सख्त जरूरत है यहाँ पर यंगस्टर अम्मेबला के बल्लेबाजों को यहाँ पर मैच में वापस आने के लिए। और गेंदबाज हैदर दाहिने हाथ अराउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद अच्छी गेंद थी, बेहतर गेंद थी, परिवर्तन के तौर पर कुछ हद तक धीमी गेंद पिछले गेंद के मुकाबले और गेंद को बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे, खेल नहीं पाया और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला और फिर से एक बार हैदर गेंदबाज यहाँ पर आके बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ, जस्ट वेटिंग टू द बॉल टू कम ऑन टू हिज बैट एंड ड्रिवन दैट वन परफेक्टली। स्क्वायर ऑफ द विकेट एक्स्ट्रा कवर पर 1 रन के लिए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। रन्स अभी भी ज्यादातर सिंगल्स के रूप में बनते हुए चाहिए चौके और छक्के यहाँ पर कम बैक करने के लिए यंगस्टर अम्मेबला के बल्लेबाजों को। फिलहाल सिटी बॉयज सजीपा के गेंदबाज एक बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। हैदर अगली गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, शॉट थर्ड मैन पर थ्रो लेकिन निशाना चूक चुका है। Wide, 1 + 1, 2 runs now added to their total. 16 on the board. Now, the equation stands 17 to get from 9 deliveries. 9 गेंदें बाकी, 17 रन चाहिए विजय के लिए और हैदर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद रिवर्स शॉट टॉप एज लेकिन कोई फील्डर वहां पर नहीं। बैकवर्ड थर्ड मैन से फील्डर दौड़ कर आए, 1 रन बल्लेबाज को जरूर मिला। आफ्टर फर्स्ट बॉन्स पहले टिप्पे के बाद बैकवर्ड थर्ड मैन पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता फील्डर द्वारा स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर अब पहुंच चुका 17 रनों पर। 17 8 बॉल्स लेफ्ट, 16 रन नाउ रिक्वायर्ड और हैदर अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद बल्लेबाज ने गेंद को उछालना चाहा लेकिन गेंद उनके पैरों पर टकराई। रन्स यहाँ पर बल्लेबाज को नहीं मिला। 1 डॉट गेंद और उनके खाते में जुड़ता हुआ अशरफ जिन्होंने गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा था, चूंकि गेंद उनके पैरों पर टकराई और एक और डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ता हुआ। 7 गेंदें बाकी, 16 रन चाहिए। हर डॉट गेंद के साथ इस वक्त इक्वेशन और भी कठिन होता हुआ यंगस्टर अम्मेबला के बल्लेबाजों के लिए। हैदर इस ओवर में अंतिम बार अशरफ के लिए दाहिने हाथ राउंड द विकेट, यह गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद थी इस वक्त। वाइड का इशारा इस बीच अंपायर का और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 18 रनों पर। 1 गेंद अभी भी बाकी इस ओवर में, 7 गेंदें बाकी, 15 रन चाहिए। 15 रन टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 7 डिलीवरीज। ये गेंद इस बार बेहतर, फैंटास्टिक डिलीवरी। हालांकि 2 वाइड जरूर फेंके हैं हैदर ने इस ओवर में, लेकिन इसके बावजूद एक बेहतर ओवर वो फेंकने में सफल। और 4 ओवर की समाप्ति के बाद, 4 ओवर की मुकम्मल के बाद इस वक्त स्कोर है 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर। यंगस्टर अम्मेबला 15 रन चाहिए अंतिम ओवर में। 15 टू गेट फ्रॉम लास्ट ओवर, दैट मींस इन रिमेनिंग 6 डिलीवरीज। और जहां तक सवाल है इस वक्त, जस्ट टॉकिंग अबाउट the first 4 overs game, the first 4 overs completely belongs to the bowlers of सिटी बॉयज सजीपा। पहला 4 ओवर संपूर्ण सिटी बॉयज सजीपा के पक्ष में रहा है। उनके गेंदबाजों ने पहले 4 ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया है, फलस्वरूप उनका तख्ता यहाँ पर भारी लगता हुआ। ಶೈನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಹಾಗೂ ನಜತ್ ಉಳ್ಳಾಲ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ ನಾಣ್ಯ ಚಿಪಿಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೈನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನಜತ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ फॉर द टॉस प्रोसीजर. तो इस वक्त अंतिम ओवर 15 रन अंतिम ओवर में चाहिए। 6 गेंदें बाकी, 15 रन चाहिए। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए अंतिम ओवर शुरू होता हुआ 15 रन की दरकार इस बचे हुए अंतिम ओवर में। जैद इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए, जैद इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और 6 गेंदें बाकी और 15 रनों की दरकार। और सामना करते हुए इस वक्त नौफल पहले गेंद लेकर गेंदबाज जैद दाहिने हाथ ऊपर द विकेट। यह गेंद उछालना चाहा, विकेट कीपर को बीट करती हुई गेंद निकल गई। इस वक्त बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराने के बाद शॉर्ट फाइनल की दिशा में 1 रन का इजाफा। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर, 19 for 3। नाउ 14 टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 5 डिलीवरीज। 14 रन चाहिए 5 गेंदों में। और जैद इस बार गेंदबाजी करेंगे अशरफ के लिए। दाहिने हाथ
ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। यह गेंद फुल टॉस के तौर पर गेंद थी, लेकिन इस गेंद का फायदा उठाने में असफल। गेंद लगभग पहुंची थर्ड मैन पर। लेग बाय के रूप में स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं यहाँ पर अशरफ। स्ट्राइकर एंड की ओर दौड़ पड़े। यहाँ पर विकेट गिर चुका है, लेग बाय का इशारा हो चुका है, एक रन उनके खाते में जोड़ा जाएगा। 20 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 3 विकेट। और अशरफ ऐसा कहना पड़ेगा स्ट्राइक पर वापस आने में सफल हो चुका है। नौफल का विकेट गिर चुका है। इससे पहले कि विकेट नॉट स्ट्राइकर पर उखाड़े जाते गेंदबाज द्वारा थ्रो को रिसीव करने के बाद दोनों बल्लेबाज क्रॉस ओवर कर चुके थे, तो इस वजह से क्रॉस ओवर हो चुके थे, तो इस वजह से नौफल आउट होकर पेविलियन वापस लौटते। 4 गेंदें बाकी, 13 रन चाहिए। 13 रन टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 4 डिलीवरीज। अब ऐसा कहना पड़ेगा यंगस्टर अम्बेम्बला को सिर्फ चौके या छक्के ही इस मैच में वापस ला सकते हैं। फिलहाल जैद अपनी ओर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद, चूंकि इस वक्त पैरों पर गेंद टकराई, विकेट कीपर के हाथों में गेंद, सिर्फ रन लेना नहीं चाहा उन्होंने। अब लगभग अंतिम अवकाश, ऑलमोस्ट लास्ट चांस इन फ्रंट ऑफ द बैट्समैन ऑफ यंगस्टर अम्बेम्बला। 15 टू गेट, 2 6 and a 4 required in the last 3 deliveries। और गेंदबाज इस बीच ये गेंद उछाला लंगोन पर, और गेंद इस वक्त लंगोन सीमा रेखा के अंदर फील्ड कर ली गई है। तो ऐसा कहना पड़ेगा टिप्पा खाने के बाद गेंद लगभग वहां पर कुछ हद तक कुछ पत्थर था, उस पत्थर से टकराने के बाद अपना रफ्तार को होकर वहीं पर उछली और इस गेंद को ढकेल दिया गया। इस वक्त फील्ड कर लिया गया सीमा रेखा के अंदर लंगोन पर। सिर्फ 2 मात्र रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ, तो अंपायर ने इशारा किया कि देयर एक्सीड्स देयर टाइम लिमिट, सो वन फील्डर दे हैव टू ब्रॉट इनसाइड द 20-yard सर्कल। नाउ द इक्वेशन स्टैंड्स 11 to get from 2 deliveries. 11 to get from 2 deliveries. 2 big strokes required in the last 2 deliveries. और इस बीच गेंदबाज अपने और की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर था विकेट, एक छक्का और एक चौका मैच को टाई कर सकता है यहाँ पर। अंतिम 2 गेंदों में जैद अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर था विकेट, रिवर्स शॉट, फैंटास्टिकली स्ट्रक, दिस टाइम ही फिल्स द गैप, द होप्स अलाइव फॉर द बैटिंग साइड। यंगस्टर अम्बेम्बला के लिए उम्मीदें बरकरार रख चुके हैं इस वक्त बल्लेबाज। और इस स्ट्रोक को आपने देखा होगा तो जिस तरीके से उन्होंने खेला था, काबिल तारीफ, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक रिवर्स शॉट प्लेड बाय द बैट्समैन अशरफ। लास्ट बॉल नाउ रिमाइनिंग, 7 to get, 6 for tie, 7 for win। और जहां तक सवाल है, कम से कम इस मैच को टाई करने का मौका इस वक्त यंगस्टर अम्बेम्बला के सामने। देखना यह कि अंतिम गेंद पर क्या अशरफ छक्का लगा पाते हैं या नहीं। अंतिम 2 गेंद पर 6 रन बटोरने के बाद उम्मीदों को बरकरार रख चुके हैं यहाँ पर यंगस्टर अम्बेम्बला के बल्लेबाज अशरफ। अब मैच निर्धारित गेंद लेकर तैयार। 7 for victory, 6 for tie, and the match deciding ball is now coming up। और देखते हैं यहाँ पर जैद किस तरीके की गेंदबाजी इस अंतिम गेंद पर अपनाते हैं और बल्लेबाज अशरफ किस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर करते हैं। Here we go, 7 to get from last ball, reverse shot played but straight to field directly back on the third man, not quite middling it at the last moment। अगर थोड़ा सा भी मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट करते तो शायद गेंद बैक ऑन द थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर हो सकती थी, लेकिन इस बार गेंद कनेक्ट हुआ था टॉप एज पर। रिवर्स शॉट, मिस टाइमिंग्स और बैक ऑन द थर्ड मैन पर जो फील्डर खड़े हुए थे इस कैच को लपकने में सफल। लेकिन एक बेहतरीन पारी जो कि समाप्ति हो चुकी है अशरफ की, बेहतरीन बल्लेबाजी जरूर की, लेकिन दुर्भाग्यवशात उनके टीम को विजय नहीं दिला पाए और 6 रनों की रोमांचक जीत यहाँ पर दर्ज हो चुका है सिटी बॉयज सजीपा यंगस्टर अम्बेम्बला के खिलाफ। City Boys Sajipa registered a 6 runs thrilling victory against youngster Ammembala, and with that 6 runs thrilling victory they are through to the next round of this competition. So match number 5 of this prestigious cricket tournament, Mahanayak Jai Bhim Trophy 2025 26 has been came to an end, which won by City Boys Sajipa against youngster Ammembala. With that victory, they are through to the next round of this competition. Next match, the 6th match, is now going to start between 2 Ullal's team will clashing each other in this match, number 6. And the match starts between Shine Sports Ullal versus Nazat Ullal. और छठा मैच इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत शुरू होगा एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे जब यहाँ पर मैच नंबर 6 शुरू होगा इस श्रृंखला के अंतर्गत। तो अब वक्त है ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद।
Welcome back. Thank you very much, Gopi. Good afternoon, cricket lovers. And the match number 6 of day number 1 of prestigious Jai Bhim Mahanayak Jai Bhim Trophy 2025-26 is under progress. And the fantastic day for cricket. Every match is absolutely going to be a nail biter. The previous match also, the good challenge given by both the teams. And at last, the team Sajipa, City Boys Sajipa have managed to handle the pressure in the final overs, especially youngster Amembala. They tried their level best but not good enough to win this match. And Signports Ullal will going to take on Nazat Ullal. The two teams will going to take the challenge of these two teams and wait and see which team will going to win this match. Shine Sports Ullal versus Rajat Ullal. Captain of Nazatullah winning the toss, selected to field first, and we are just waiting for the first over of the match, opening match. Opening batters already made their way to the middle of the pitch with just number 333, Suleiman, experienced campaigner, Salim as a non-striker. One more good striker of the ball, and wait and see how well these two batters will go into lay the foundation for the team Shine Sports Ullal. And both the teams a well reputed team from ECA, Ullal Cricket Association. Cricket teams are clashing here in this prestigious Jai Bhim Mahanayak Jai Bhim Trophy 2025-26. Almost it's going to be a final tournament of the season. Of course, the year 2025 will going to finish tomorrow, and after that we're going to start the 2026 and have some lot of cricketing action in the 2026 as well. Especially the World Cup of Underarm Cricket, EFCA Trophy, RRP Memorial Trophy will going to organize in the next Sunday, the 4th of Sunday. And the prestigious cricket tournament, 49th RRP Memorial Trophy, UFC Trophy, 30 overs format of games. The World Cup of Underarm Cricket will going to start in the 4th January. First ball, and umpire called it wide. Just a couple of runs, 1+1 to start with the extras. And the team Shine Sports, they got to start with extra. 2 without loss of any wicket. The bowler brought in to take Farviz. And Salim will going to take the strike. Right arm over the gate. Balls again is struggling to get a line. One more extra, 2 more extra. White plus wide, white plus 1. Couple of runs again added to total without bowling a single delivery. He conceded 4 valuable runs for the team. And what the captain is hoping for this opening bowler. So Shining Sports Ullal has got to start with the extras with the 4 valuable runs. Farviz have to get his line and land so quickly, and otherwise very difficult for them to restrict the runs. Here comes Farviz, right arm over the wicket, searching for it's going to be one more, the big one after that consecutive 3 wide deliveries to start with. 6 already on the board without a single delivery. Just imagine how difficult for the batter to get the 6 in this huge cricket ground, and you are conceding that 6 in without bowling a single delivery. And this is what discipline is so important in cricket. And lack of confidence, lack of concentration from the bowler. So everyone is surrounded. Bowler Farviz. This is what I'm always talking about. The warm-up is so important for the cricketer before coming to the
entering to the ground, you need to have some warm up so that relax your shoulders. This time, lovely delivery. After that, 3 consecutive wide deliveries. Farvez managed to get his line and length. He got first better delivery and fair delivery. 6 without loss of any wicket. Lovely delivery just outside the run of off stump. Wanted to go for the drive. Missed it completely. One more one more dot ball. Good comeback. After that, 3 wide deliveries, a couple of dot deliveries. Salim to face next delivery from Fawez. Again, almost drags the ball from outside the line of off stump. He played it down to long on region and just played that cross batted stroke well down to long on region to get his single. Salim is off the mark with a single scope, but numbers on to 7 on the board. There's some lovely connection. No need to run for that. Ball down to deep square leg region boundary for 4 runs. Good placement, little margin for error when you're bowling in the power play. I think the bowling that line means you are asking for trouble. Lovely sweep shot with the power played by Suleiman. You can't do the mistake to bowling to the caliber of Suleiman. The experienced campaigner gets it front foot into the line of the ball and played it exquisite, powerful sweep shot down to square leg boundary for 4 runs. With that boundary, Scober jumps into 10 now without loss of any wicket. This is about the frustration and the pressure straight away after that boundary. 4th wide of this over. Already 10 deliveries you need to bowl in this particular over. Twelve on the board. Big score on the board. Right arm over the wicket balls. Reverse sweep is played it quite nicely down to back point region for a single with that single score, but moves on to 13. It's a big over from the point of view of Shining Sports Ulal. Final time in this over for V's balls. Again wanted to go for the sweep shot. We're going to take the single for that and that's the completion of over number first. It's 14. 14 runs came from this over and big contribution from the extras in this particular over and 1 boundary which is came from the bat of Suleiman. Altogether good start for the team Shining Sports Ulal. Second over is going to start. The bowler brought into attack. Sahil brought into attack to bowl the second over. I have to restrict the runs after that. Expensive first over. 14 runs came from this over. Every man of the match, there will be a trophy with the coupon of Sharma from Aladdin Sharma De Lagate. For every man of the match, got opportunity to taste the Sharmas. It's a very popular outlet in De Lagate, Aladdin Sharma. Here comes next ball. Right arm over the wicket ball. It's going to be a wide. This is what the team Nazatullah is absolutely lacking in the concentration, especially for the opening bowlers. After Farvez is bowled so many wide, now Sahil starts with a wide. 15 on the board. Right arm over the wicket balls. This time again, ball defeats the wicketkeeper's hand and 1 more wide. 1+1. Again, 3 valuable runs already conceded without a single ball. And scoreboard numbers on to 17 on the board. Sahil.
So match will going to resume after that slight bit of interruption in the ground. We're going to continue, and the bowler Sahil is still searching for his right line and length with a short run up, not having any big run up. He's almost standing left of umpire with the short run up, and the ball's right arm over. This time a better line. Wanted to go for the reverse sweep, and bowler on his follow through very quickly react to that fielding and denying the single from this to batter. At last, the bowlers managed to get his line. Sahil, after that, consecutive 2 wide deliveries, bowled the first fair delivery of this over. Scoreboard remains on 17 on the board. Sahil bowls again. The no ball called by umpire. After that, 2 wide. Now it's a no ball. My goodness, Nazatullah, without having some game plan and having any workout, the bowlers straight away coming here and bowling. You can see that a lot of indisciplined bowling performance. No ball means free hit delivery for Suleiman, and going to be an opportunity for Suhail to take the advantage of the free hit delivery. This time he lifted and played it down to mid wicket region, not for boundary, for a single. The placement is not good enough to get the boundary, but just a single. With the addition of that single, score Namozan to 19 without loss of any wicket. Good score on the board for the team Shining Sports Ulal against Nazatullah. Nice sweep shot. Played very nicely into the final region. The fielder will not going to get that one. Yes, he got a footwork in dedication to stop the boundary. And a couple of runs which is completed. 3 valuable runs, in fact. Correction, 2 couple of runs which is completed. Valuable couple of runs. With that couple of runs, Kobar Namuzan to 21 on the board for no loss. Good going here for team Sporting Ulal. This time a lovely shot. Reverse sweep is played in the gap. I don't think the fielder will going to get that one. That will going to be a boundary. Second boundary. This time he played that exquisite reverse sweep with the direction of the wind. The fielder in the deep third man, but he can't get that one. Tried his level best to stop the boundary, but last the ball is going get passing the trying hands of the fielder. With that boundary score, but Namozan to 25 on the board. Shining Sports Ulal are going with a big gun here. 25. This time again pedal that one by the playing that reverse sweep quite effectively down to third man region for a single by Salim. With that single score, but Namuzan to 26 on the board without loss of any wicket. Winning the toss, selected to field first, but plan which is not working out because bowlers not really justifying the decision of their captain, especially in this extras. Wanted to go for the reverse sweep, and one more over completed, one more prolonged over, an expensive over which comes to an end. 2 completed after completion of over number 2. The Sporting Shining Sports Ulal are looking good in the middle. It's 26, going exactly 13 runs per over. The similar run rate, they will going to reach 60 to 65 runs. After that, the cool weather condition in the morning, we are witnessing slight bit of hot condition in the afternoon. Not really having that much of big winds in the ground because we are not surrounded with the trees, not a big trees there. Newly built, constructed cricket ground, Rajiv Gandhi Cricket Stadium here in Balepuni. Bowler brought in attack to bowl the third over. Jersey number 10. Saif have to get some good deliveries here for his team. Saif bowls. This time well within the reach of the batter.
The batsman just tried to get the ball on the onside region. Salim missed it completely. And second time in this over, Saif wanted to go for the expensive drive. Shout for leg before wicket. Umpire will going to lift the leg. One more leg by. With the addition of the leg by, score number moves down to 27 on the board. 27. ಯಾವುದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಉಲಾಲ್. Sam played it just over the head of the bowler on his follow through, fails to collect the ball. Ample time for the batter to complete the single. With that single, score moves on to 28 without loss of any wicket in the over. Number 3 is in progress. Saif fourth time in this over. Bowled him, cleaned him up, uprooting that middle stump. And Salim just wanted to go for across the line, targeting the mid wicket, but choosing the wrong line. And pays the penalty for that. Beaten by the pace. And first better over, you can see in the point of view of Nazat Ullal coming here for from Saif. So far bowled 4 very good deliveries. Picked up 1 wicket. Only conceded a couple of runs. 28 for 1 now. In the over, number 3 is in progress. Partnership of 28 runs for the first wicket. Just broken by Saif. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ನವರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕು. So new batter in is Sharif, left-hand batter. And then have to change the field set for the left-hand batter. Just straight away the deep third man, cover point, short extra cover, deep extra cover. Short fine leg. There is a mid on, long on, and deep mid wicket and deep square leg. Again, the first wide of this over, in fact, bowled by Saif. After the wicket, he bowling a wide. 29. Sam, wicket keeper asking a question over umpire for the stump out, but I think the batter's back foot still inside the line. Good work done by wicket keeper, but not good enough to get the result. But important dot deliveries. Last time in this over, turning over your first good over from the point of view of Nazatul Lal. Nicely driven in the gap towards deep long off wideish. One day single there. Wanted to come back for the second. In comes a throw from the fielder. It might be a little bit trouble, but back up by the fielder. One more over completed. Good over from the point of view of Nazatullah from Sahif. Wicket taking over and quite over. 3 gone. It's 30 on the board, going exactly 10 runs per over. Team Shining Sports Ullal in this afternoon. Last 2 overs remaining in their innings. Match number 7 will be played between Mother India Boliar versus Stars Friends Boliar. So that I request all the players of both the teams complete your signatures as soon as possible. ಈ ದಿವಸದ 7ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೊಲಿಯಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಲಿಯಾರ್. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. The 4th over will going to start and the bowler will going to start from the commentary box, and Shiraj with the jersey number 19 will be the bowler. Starts with the delivery which is coming into the batter. Chance of run out there. Try to make the run out on his follow through, and Sharif completes a single. With that single, scope and moves on to 31 on the board. Need to restrict the runs after that. Plenty of extras conceded in this first 2 overs. 6 wide deliveries bowled, 1 no ball bowled.
Altogether, 7 extras in the ball of form of wides and no balls. This time, wicketkeeper missed it, but good backup by the fielder at short fine leg, so that they will going to survive one more dot ball. 31 on the board. Over number 4th is in progress. Third time in this over. Top edge opportunity and created for run out, but wicketkeeper couldn't manage to get that one very quickly, and the batter Suleiman completes the single. So with that single, score moves on to 32 on the board. 32. ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಜ್. Again, one more dot ball. No run scored. Over number 4 is in progress. Siraj, 5th time in this over. Driven in the gap towards extra cover. One did a single for the batter Sharif. Left and right combination going on, but I think good comeback by Nazatullah. After that, first 2 overs very expensive. Then both the Shaif and Siraj is right on the money, right on the target so far. Excellent comeback by the bowlers. 33 on the board. Last time in this over. Balls, wicketkeeper fumbles, frustration for the bowler, isn't it? What could be a dot ball, and by call by umpire. So one more good over, quite over from Siraj after completion of 4 overs. Team Shining Sports Ullal just lost the momentum what they got. Now they are 34 after completion of 4. Last over remaining in their innings. Prestigious cricket tournament is in progress. Architect of Indian constituency, Dr. B.R. Ambedkar, in his sweet memories, this cricket tournament organized in this most beautiful and newly built Rajiv Gandhi Cricket Stadium here in Mudipu. Pritham brought into attack about the last over, and batter will going to take the strike. Suleiman. Oh, this time lovely walk, fantastic work done by wicketkeeper. Fumbles first attempt, and Suleiman thought the ball is went out of the hands of wicketkeeper, but ball is very close to the wicketkeeper. Second attempt, he just uprooted the stumps, and wicket of Suleiman back in the pavilion. Wicket number 2 gone. It's 34 for 2. Team Shining Sports Ullal. Both the teams knows each other very well. Played plenty of cricket between these two. They knows what is the weak point and the strong point of their opposition. So that I think Nazatullah, after that, the start which is not good from the bowlers. Plenty of extras conceded in first 2 overs, but then came in Shaif. Bowled very well. Then came in Siraj, is also bowled well. And now last over, Pritham starts with the dot ball, the second time in this over. Pritham, recognized player, good all-rounder for the side of team Nazatullah, brought into attack. Experienced campaigner, played for the big teams. Friends Kuttar, one more reputed team from Ullal, represented for big teams and made history in that UCG cricket ground in a present season. Twice they managed to come to the finals in the big tournaments. The winners in Nutan Trophy
This time starts again. One more lovely technique of keeping there from the wicket keeper. Harris has got a very good technique of gathering the ball, especially outside the line of leg stump. It's not so easy, and beautifully done by the wicketkeeper behind the stump. Pritham, third time in this over. Round the wicket right arm. Again, a faster and quicker one. Batsman, of course, misses. Small chance of run out there. Pritham is in throw, but wide throw. Completed a couple of runs. Wait for the umpire decision. It's from the bat, maybe. It's the inside edge of the bat, and then ball hitting the leg. Couple of runs. With that couple of runs, Coburn moves on to 36 on the board. Very disappointment because the ball is not passing that ring, but they completed a couple of runs. Umpire saying that exceeds the time limits. Fielding team have to bring one fielder inside the ring. As far as the penalty is concerned, they wanted to bring that fine leg fielder inside the ring. Opportunity for Abhi to take the advantage of that fielding signal. Lovely delivery. Wicketkeeper fumbles. Chance of run out. Back and flick, and Pritham missed it. It's not a good throw there from the wicketkeeper. And they completed a single. With that single, score moves on to 37 on the board. Last two balls remaining. Excellent comeback by Nazatullah. Especially last 3 overs belongs to Nazatullah. First 2 overs belongs to Shining Sports Sulal. 2 balls remaining. A lot of changes in the field. Left and right combination. Sharif will go to take the strike. This time again. It's going to be a one more run from the bat. By call by umpire. No contact with the bat. By call. The score moves on to 38. Last delivery of the innings of team Shining Sports Sulal. Abhi definitely will go to try for the big one. But Pritham knows exactly. After that, a lot of hard work in the first 5 deliveries. Have to complete the over with the good one. The wait and see. Will it go into a batter or the bowler? Last ball of their innings is coming up. Right arm over. Wanted to go for the expansive drive. Missed it completely. Looking for second. In comes a throw. Chance of run out, and is gone. So only single and a run out in the last delivery of the over. And the Pritham also bowled well. Tidy over. Last 3 overs belongs to Nazatullah, and they restricted their opposition for just 39 runs in 5 overs. And target which is set for the team Nazatullah by Shining Sports, exactly 40, and the required run rate is exactly 8 runs per over for Nazatullah to win this match. And wait and see how well these two teams will go into battle for the victory. And we'll take a short break here, and after a short break, my friend Gopi will go in to have the mic after the lunch break. He will join in our commentary box, and we'll take a short break. Thank you.
धन्यवाद सतीश। तो इस वक्त लक्ष्य है ठीक 40 रनों का नजरत उल्लाल के सामने निर्धारित 5 ओवर में, जो इस वक्त शाइनिंग स्पोर्ट्स उल्लाल ने रखा है। दोनों आरंभिक बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद। दे आर नाउ कम्स आउट टू द मिडल। और जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है तो गेंदबाजी इस वक्त संभालते हुए, और पहला ओवर एकमात्र पावर प्ले ओवर राउंड की पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ। प्रीतम और संदीप आरंभिक बल्लेबाज, जबकि गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए द बॉलर स्टार्ट्स द फ्रेश प्रोसीडिंग्स। मुशफिक गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, और प्रीतम सपना करने के लिए तैयार। संदीप नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और उनकी पारी की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त मुशफिक तैयार। 40 द टारगेट इन they stipulated 30 deliveries, that means they stipulated 5 overs, they have to score for victory. First ball comes, पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और एक रन पूरा करने में सफल। वाइड का भी इशारा हो चुका है और वाइड के इस रन के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। 2 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनका इस वक्त शुरू हो चुका है। 40 रन ठीक इस वक्त नजर उल्लाल को बनाने हैं शाइन स्पोर्ट्स उल्लाल के खिलाफ। और गेंदबाज इस बीच मुशफिक अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का प्रगति पर। सिर्फ तो मात्र खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर तैनात। डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन बिल्कुल सीधा दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाज, ये गेंद इस बार गेंद को उछाला इनटू द गैप एज वेल, और गेंद इस वक्त लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। Fantastically struck this time, came through the bat of Sandeep, और ऐसा कहना पड़ेगा पावर प्ले का फायदा उठाते हुए लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच जो खाली क्षेत्र है उस क्षेत्र से गेंद को उछाल दिया इस वक्त खूबसूरती के साथ मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट करते हुए, और गेंद आसानी के साथ सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ संदीप अपना खाता खोल चुके हैं और स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 6 रन बिना किसी नुकसान के नजर उल्लाल, जबकि पहला ओवर उनकी पारी के इस वक्त प्रगति पर। और मुशफिक अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद स्वीप करना चाहा, गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन्स बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 6 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 6 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और अगली गेंद लेकर इस बीच मुशफिक का गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए संदीप के लिए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद ऑन साइड पर मोड़ना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, शॉट्स को लेग पर गेंद पहुंची। 1 रन का इजाफा हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ लेग बाई का इशारा, स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 7 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं प्रीतम, जिन्हें अभी भी अपना खाता खोलना है। और इस बीच गेंदबाज मुशफिक का दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद पैरों पर गेंद टकराई, गेंद पहुंच चुकी है थर्ड मैन के दिशा में, गेंद का पीछा करते हैं फील्डर। और जब तक डीप थर्ड मैन सीमा रेखा के अंदर गेंद को फील्ड किया जाता, लंबा दौड़ लगाने के बाद बल्लेबाज के पास मौका 3 रन यहां पर पूर्ण करने का। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक रनिंग बिटवीन द विकेट, दे एडेड 3 वैल्यूएबल रन्स इनटू देयर टोटल। और इन 3 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 10 रनों पर और बिना किसी नुकसान के। जबकि पहला ओवर उनकी पारी का प्रगति पर 4 सही गेंदें इस ओवर में गेंदबाज मुशफिक फेंक चुके हैं और अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और सामना करते हुए इस वक्त संदीप। 2 गेंदें इस ओवर में अभी भी बाकी मुशफिक है और अपनी ओवर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार। यह गेंद बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद पहुंची गली की दिशा में, 1 रन का इजाफा, नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। 1+1 2 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल। शायद इस वक्त गेंदबाज ने ओवरस्टेप किया था तो इस वजह से नो बॉल अंपायर घोषित करते हुए और फ्री हिट गेंद इस वक्त बल्लेबाज के लिए। 2 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 12 रनों पर। 12 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। मुशफिक दाहिने हाथ राउंड द विकेट अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए फ्री हिट गेंद का देखते हैं बल्लेबाज किस तरह यहां पर फायदा उठा पाते हैं। और ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया, इस वक्त डीप मिड विकेट की दिशा में गेंद जाती हुई, गेंद को फील्ड कर लिया गया। वहां पर तेज थ्रो इस वक्त पहुंचता हुआ, लेकिन इससे पहले के थ्रो पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका था
2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर 14 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। एक गेंद अभी भी बाकी इस ओवर में और मुशफिक अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए यह गेंद उछालना चाह, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड कर लिया गया गेंदबाज द्वारा। ओवर नंबर 1 की समाप्ति हो चुकी है। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड and after first over Nazatullah chasing the victory target of exactly 40 runs in 5 overs. They made a fine start. In fact, they managed to score 14 runs on the board after completion of first over. Now the equation stands for them 26 they have to score out of their remaining 4 overs. That means 24 deliveries with a required run rate of exactly 6.5 runs per over. Still they got all 10 wickets kept intact. और निश्चित रूप से 3 एसोसिएशन एकजुट होकर इस श्रृंखला में हिस्सा लेते हुए उल्लाल क्रिकेट एसोसिएशन, मुडिपू क्रिकेट एसोसिएशन और बंटवाल स्पोर्ट्स क्रिकेट एसोसिएशन, इन तीनों प्रतिष्ठित क्रिकेट एसोसिएशनों के बीच ये श्रृंखला, ये मेगा श्रृंखला जो कि यहाँ पर खेला जाती है, एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला जय भीम ट्रॉफी, महानायक जय भीम ट्रॉफी 2025-26 के अंतर्गत। और आज और कल 2 दिन ये 3 क्रिकेट एसोसिएशंस के बीच मैचेस होंगे। और जहाँ तक का सवाल है, आज का छठा मैच यहाँ पर इस वक्त प्रगति पर। 6th मैच ऑफ द डे 1 ऑफ दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर। गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और सामना करने के लिए तैयार इस वक्त संदीप। 24 गेंदों में 26 रनों की दरकार और अभी अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है, फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। 4 खिलाड़ी इस वक्त 5 खिलाड़ी खेलना पड़ेगा 20 के दायरे के अंदर मौजूद। इस बीच गेंद को खेलना चाहता, पैरों पर गेंद टकराई। जहां तक सवाल है रनों का, तो रन्स मिलेंगे 1 का लेग पाई के रूप में और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 15 रनों पर बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ हो चुका है और अभी अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रीतम जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए विकेट कीपर और गेंदबाज अभी अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद स्वीप कर दिया इस वक्त खूबसूरती के साथ। गेंद जाती हुई खाली क्षेत्र पर गेंद का पीछा करते हैं फील्डर डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के इस बार अपना संतुलन वहां पर खो बैठे हैं, लेकिन जब तक दूसरे फील्डर गेंद को फील्ड करने के बाद थ्रो करे बल्लेबाज के पास मौका था यहाँ पर 3 रन प्राप्त करने का। काफी बेहतरीन फील्डिंग इस वक्त की थी डीप फाइन लेग फील्डर ने अपनी दाईं ओर दौड़ते हुए अंतिम क्षण में डाइविंग लगाते हुए गेंद इस वक्त रोका सीमा रेखा के अंदर और कम से कम 1 रन अपनी टीम को बचाने में सफल हो चुके हैं। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 18 रनों पर। बेहतरीन तरीके से गेंद को इस वक्त स्वीप कर दिया था बल्लेबाज प्रीतम ने और संदीप इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद इस ऑप्शन जमा काफी बार स्पेक्ट्रा वाइड और गेंद इस वक्त जाते हुए डीप थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर। 5 वाइड्स एडेड नाउ इनटू देयर टोटल। दिस इज एन 5 गिफ्टेड रन, 5 रन तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में यहाँ पर गेंदबाज अभी प्रदान कर चुके हैं और इन रन पंचक की बदौलत अब ऐसा कहना पड़ेगा नजत उल्लाल एक बेहतर स्थिति में यहाँ पर नजर आता हुआ। 23 ऑन द बोर्ड, जस्ट अ सेकंड ओवर स्टार्टेड जस्ट शॉर्ट व्हाइल अगो इन देयर इनिंग्स और सिर्फ 17 रन अपने विजय से दूर और कमबैक करना तो निश्चित रूप से यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा। अब शाहीन स्पोर्ट्स उल्लाल के गेंदबाजों को एक घातक गेंदबाजी की जरूरत है और इस बीच फील्डिंग में जमावट करने के बाद गेंदबाज अभी गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए रिवर्स शॉट गेंद को खेल दिया। इस बार कवर पॉइंट पर गेंद पहुंचे, इस वक्त डाइविंग लगाते हुए गेंद को फील्ड कर लिया गया और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर। 24 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस और अभी फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए प्रीतम के लिए ये गेंद इस बार प्रीतम ने गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ डीप स्क्वायर की दिशा में, जस्ट सिंगल ही गॉट और इस 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 25 रनों पर। 25 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। रन्स आर कमिंग क्वाइट इजीली नाउ फॉर द बैट्समैन ऑफ नजत उल्लाल और इस बीच अभी
स्वीप करना चाह, गेंद निकल चुकी है, थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर हो चुकी है इस वक्त लेग बाय के रूप में चौके के लिए। पैर पर टकरा कर गेंद इस वक्त निकली थी और शॉट थर्ड मैन शॉट फाइन लेग पर जो फील्डर खड़े हुए थे, गेंद उनके बाईं ओर से निकली होती, इतनी तेजी के साथ निकले कि शॉट फाइन लेग फील्डर को रोकने का कोई मौका नहीं था यहां पर। और चौका इस वक्त जुड़ता हुआ। 29 on the board, 1 ball left in this over, and this partnership is now building up here for Nazat Ulal. This opening partnership in fact is now building up here for Nazat Ulal. Just 11 runs far from their victory. और दूसरा ओवर सिर्फ उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर। और इस बीच अभी दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद उछालना चाहा, बैक टू द बॉलर की दिशा में, रन्स नहीं मिलेंगे। और इस बीच जहां तक सवाल है, अपील इस वक्त जारी है शायद कॉटन बोर्ड के लिए, लेकिन देखना है कि यहाँ पर इस अपील को अंपायर पुरस्कृत करते हैं या नहीं। तो ओवर नंबर 2 की समाप्ति हो चुकी है। 2 overs completed, 29 without loss. And now I must say Nazatullah looking in a commanding situation. Just 11 to get from 3 overs, 18 balls, 11 runs required, and the things getting much easier now for the batsmen of for the openers of Nazatullah in fact. हलातीन शाह मादेला करते जो कि ऑफिशियल स्पॉन्सर्स है इस प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला के। और मैन ऑफ द मैच और आउट इस वक्त घोषित किया गया है। यहाँ पर शायद गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराने के बाद, बल्लेबाज के पैर पर टकराने के बाद सीधे गेंदबाज के हाथों में पहुंचे थे। तो इस वक्त जहाँ तक सवाल है विकेट का, तो विकेट नंबर 1 इस वक्त गिर चुका और संदीप की बेहतर पारी पर पर्दा गिर चुका है। आउट फॉर 6 एंड नाउ द स्कोर इज 29 for 1, 2 overs completed. So the bowler starts the fresh proceedings from the commentator box and गौतम गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए। पहली गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 30 रनों पर, 30 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3 स्टार्टेड जस्ट शॉट वाले को, रिवर्स शॉट टॉप एज, कोई फील्डर वहां पर नहीं और गेंद इसमें ड्रॉप्ड। जी तोड़ कोशिश जरूर की थी कवर पॉइंट फील्डर ने, लेकिन गेंद को लपकने में इस वक्त सफल और बल्लेबाज इस बीच तीसरा रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं। 3 runs added to the total. मुश्किल सा मौका जरूर था डीप कवर पॉइंट फील्डर के लिए, लेकिन इस मौके को वो गवाते हुए और गेंद उनके हाथों से छूटती हुई स्कोर बढ़कर पहुंच चुका इन 3 रनों के साथ। अब 32 इनफैक्ट, और इस बीच गेंद को ड्राइव कर दिया, रन से नहीं मिलेंगे। 3rd ओवर इन प्रोग्रेस और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद हल्के से गेंद को मोड़ दिया इस वक्त स्क्वायर लेग की दिशा में, डीप बैक स्क्वायर लेग से फील्डर दौड़ कर आए, गेंद को उन्होंने फील्ड किया लेकिन 1 रन लेने से बल्लेबाज को नहीं रोक पाए और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 33 रनों पर। 33 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। Absolutely fantastic progressing here now for Nazatullah. Just 7 runs. 33 the score. $34 the score. तो 34 रन बन चुके, 34 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट और गेंदबाज अगेन स्वीप कर दिया, गेंद भी इस वक्त पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, 1 रन का इजाफा। With that single, the scoreboard moving up to 35 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. Just 5 runs they have to score for their victory. और गेंदबाज अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया तेजी के साथ, रन के लिए दौड़ पड़े और 1 रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल। 36 now for the loss of 1 wicket. Next ball
This time turns it away down to a deep mid wicket, but straight to fielder. Just a single, he got 37 the score now. Mother India bowler ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೌಲಿಯರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ ನನ್ನ ಜಿಬಿಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. 3 overs completed, 37 on the board, 1 wicket down. Just 3 to get from remaining 2 overs. That means in remaining 12 deliveries, and the things getting much easier now at the situation for the batsmen of Nazatullah. तो गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हैं. फर्स्ट बॉल कमिंग अप फ्रॉम द बॉलर and a fourth over starts. First ball just drifting down the leg side. 1+1, 2 runs now added to their total. With that couple run, the scores are now levelled. Now just a single run they have to score for victory. और सिर्फ एक मात्र रन अब चाहिए विजय के लिए. और इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट ऑफ स्टंप से बाहर चूके इस वक्त और वाइड का इशारा और वाइड के इस रन के साथ नज़रतुल्लाह रजिस्टर्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री अगेंस्ट Shine Sports Ullal, and with that by 9 wickets with exactly 2 overs to spare, and with that 9 wickets, a big margin, a comprehensive victory. Nazatullah are through to the next round of this competition. So this is an absolutely fantastic piece of performance shown by all the players of Nazatullah, and because of that they registered a comprehensive victory by 9 wickets against Shine Sports Ullal. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಇದರ ಸದಸ್ಯರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದರ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಮುಡಿಪು ಬಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿರಾಜ್ ಪಜೀರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ನಜೀರ್ ಮುಡಿಪು, ಸ್ಟಾರ್ ಮುಡಿಪು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು, ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಆಗಲು ಎ ಸಿ ಭಂಡಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮವಹಿಸಿದ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಜೀರ್ ಮುಡಿಪು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ತುಂಬದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ DYFI ಮುಡಿಪು ಬೋಲಿಯರ್ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೌಶಾದ್ ಬೋಲಿಯರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. धन्यवाद श्रीमान जुबेर जी. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त सारे मुख्य अतिथियों का और सारे इस श्रृंखला मुख्य अतिथियों का हम इस श्रृंखला में स्वागत करते हैं. और जहाँ तक सवाल है मैच नंबर 7 इस वक्त शुरू होता हुआ. मैच नंबर 7 is now going to start between two bowler teams will clash each other. Mother India bowler versus Star Friends bowler. And that match starts within just a short while. And we are just taking a short break and we'll be back right after the short break. Thank you. Dhanyavad. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಮುಡಿಪು ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಹಾಗೂ ಓನರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖಾದರಾಕ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಜಿ ಕೈರಂಗಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ಯುವಕರ ಕಣ್ಮಣಿ ಸಿದ್ದಿಕ್ KH ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಜೈ ಭೀಮ್ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಗಲಿರೇನೆಲ್ಲದೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜುಬೇರ್ ಮುಡಿಪು ತಮಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ BSC ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಸೌತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದರ ಕೋಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಯಾಜ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ
ಬೆಳಿಗ್ಗಿನ ಜಾವ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟಾಸ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಸೌತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ತನ್ನದೇ ಆದ ಟೀಮ್ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ BSc ಇದರ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಫ್ಸೀರನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪಿಸುತ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ UCA ಇದರ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಾಗಿ ಮಹೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ. Thank you, Mr. Zubair, for your inspirational words. जहाँ तक ಎರಡು ತಂಡದ 12 ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಹಾಗೂ मदर इंडिया बॉलियर ತಂಡದ 12 ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. धन्यवाद. और जहाँ तक सवाल है, मैच नंबर 7 ऑफ दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट जय भीम महानायक जय भीम ट्रॉफी 25-26 इज नाउ गोइंग टू स्टार्ट. और बोलियार की दो टीमें इस वक्त आमना सामना इस वक्त होते हुए पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार. इस बार ऑफ स्टंप पर आते हुए गेंद को छोड़ दिया, वाइड का इशारा और वाइड किस रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है. एक रन बिना किसी नुकसान के. और गेंदबाज इस वक्त यहाँ पर शुरू कर चुके हैं. अफरीद और नवाज आरंभिक बल्लेबाज. निजाम जो कि इस वक्त गेंदबाजी शुरू कर चुके हैं. तो ऊपर तक विकेट इस वक्त तैयार है. गेंद स्वीप करना चाहा, गेंद पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. एक बार फिर से वाइड का इशारा, लगातार दूसरा वाइड इस वक्त फेंक चुके हैं गेंदबाज निजाम. और 2 रन यहाँ पर बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के. 2 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. और गेंदबाज निजाम इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट. ये गेंद ड्राइव करना चाहता लेकिन नॉट करेक्टेड दैट वन प्रॉपरली. इन फैक्ट दे गॉन थ्रू फॉर अ क्विक सिंगल एंड गेट इट कंफर्टेबली एट लास्ट. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 3 रनों पर. 3 ऑन द बोर्ड एट टू लूज एन विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. निजाम पहली सही गेंद इस वक्त फेंक चुके हैं, लगातार 2 वाइड गेंदें फेंकने के बाद. और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार निजाम. गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर तक विकेट तैयार. ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को स्टीयर कर दिया. गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर. 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुका है. 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 4 रनों पर. 4 ऑन द बोर्ड ये टू लूज इन विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. निस्संदेह बेहतर शुरुआत की इस वक्त जरूरत है यहाँ पर. इस बीच ये क्विकर, absolutely quicker. This is an absolute outstanding delivery and the ball straight went into the hands of wicket keeper after beating the batsman. और निश्चित रूप से काफी तेज रफ्तार के साथ गेंद इस वक्त निकली थी. विकेट कीपर के बल्लेबाज के बल्ले को वंचित करते हुए विकेट कीपर के हाथों में बेहतर गेंद थी इस वक्त निजाम की. और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 4 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर. तो मदर इंडिया बोलियार जो कि पहले बल्लेबाज यहाँ पर करता हुआ. स्टार फ्रेंड्स बोलियार ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था. और 4 रन पहले ओवर में बन चुके हैं. और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर विकेट. निजाम अगली गेंद लेकर तैयार. स्वीप करना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त गली की दिशा में. गेंद पर पहुंचते हुए फील्डर
कवर पॉइंट से फील्डर दौड़ कर आए और जब तक वो गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का, और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 5 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और निजाम अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था। इन्हें हाथों बढ़ता विकेट, ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त पॉइंट पर। 1 रन मिलेगा जरूर लेग बाई के रूप में, और लेग बाई के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 6 रनों पर। 6 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। निस्संदेह इस वक्त पहले 2 वाइड के साथ शुरुआत जरूर की थी गेंदबाज निज़ार ने, लेकिन उसके बाद अपनी सही रिदम लय को प्राप्त करते हुए इस वक्त एक बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार बेहतर, क्विकर, एब्सोल्युटली मार्वेलस डिलीवरी। दिस इज एन आउटस्टैंडिंग वन फ्रॉम द बॉलर निज़ाम। लगभग जमीन के सहारे आई गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर उछालना चाहता, चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। बेहतरीन ओवर की समाप्ति हो चुकी है निजाम की। 2 वाइड इस ओवर में फेंकने के बावजूद, 2 वाइड्स के साथ शुरुआत करने के बावजूद एक बेहतर ओवर इस वक्त फेंक चुके हैं। सिर्फ 6 रन प्रदान करने में सफल निजाम, और पहले ओवर की समाप्ति के बाद मदर इंडिया बोलियार 6 रन जोड़ चुका है बिना किसी नुकसान के। बोलियार की दूसरी टीम स्टार फ्रेंड्स बोलियार के खिलाफ। बंटवाला साउथ क्रिकेट एसोसिएशन पहले शुरू हुई थी, उसके बाद उल्लाल क्रिकेट एसोसिएशन का उदय हुआ, और उसके बाद मुडीपू क्रिकेट एसोसिएशन जो कि रचाया गया। और जहां तक सवाल है, इन 3 प्रतिष्ठित क्रिकेट एसोसिएशंस के टीमों के बीच पहली बार इतिहास में पहली बार यहाँ पर इस राजीव गांधी पंचायत ग्राउंड मुडीपू के इस मैदान पर एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला होते हुए जय भीम महानायक जय भीम ट्रॉफी 2025-26 के अंतर्गत। और निश्चित रूप से ये श्रृंखला एक बेहतरीन श्रृंखला। दिस टूर्नामेंट इज नाउ रनिंग फैंटास्टिकली अंडर द ग्रेट लीडरशिप ऑफ मिस्टर जुबैर, द प्रोप्राइटर ऑफ अलाउद्दीन शर्मा देर लकट्टे, और उनकी जुबैर इनकी कड़ी मेहनत मुशक्कत की बदौलत ये श्रृंखला एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करते हुए नेक्स्ट से बाहर की ओर निकलती हुई फाइन लेग की दिशा में गेंद निकल चुकी है इस वक्त, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद। सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 7 रनों पर। 7 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर। और निसार अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था। इन्हें हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अफरीद के लिए ये गेंद इस वक्त हवे में जरूर, लेकिन एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर थोड़े से सीधे तैनात, और गेंद गई थोड़ी सी स्क्वायर, और एक्स्ट्रा कवर पर अपने पीछे की ओर दौड़कर जाकर गेंद को जब तक फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 8 रनों पर। 8 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस, और सेकंड इन प्रोग्रेस इनफैक्ट। निसार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार इस वक्त नवाज के लिए, दाहिने हाथों पर था विकेट। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को बोलना चाहा, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड दिस टाइम आई थिंक इज गॉन. He's gone this time. Misunderstanding cost him one of them back into the pavilion. स्ट्रोक्स खेलने में चूके थे, गेंद पैर पर टकराई, फॉरवर्ड शॉट लेग की क्षेत्र में गई थी, गेंद को बिना देखे रन के लिए दौड़ पड़े, और आखिरकार जब तक वो क्रीज पर वापस लौटे विकेट कीपर ने तेजी के साथ जाकर फॉरवर्ड शॉट लेग पर गेंद को फील्ड करते हुए दौड़ कर आकर विकेट यहाँ पर चटका दिया, और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है। नवाज की पारी समाप्त, और मदर इंडिया अपना पहला विकेट खो चुका है इस वक्त 8 रनों के ऊपर। इट्स 8 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और जहाँ तक सवाल है नंबर 3 बल्लेबाज का, तो इस वक्त इंतजार है नंबर 3 बल्लेबाज का, तो देखते हैं कौन सा बल्लेबाज नंबर 3 की हैसियत से इस वक्त मैदान पर उतरते हैं। नंबर 3 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडिल, और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो निज़ार इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, और 3 प्रतिष्ठित क्रिकेट एसोसिएशन के टीमों के बीच ये मैच खेला जाता हुआ। बंटवाल स्पोर्ट्स क्रिकेट एसोसिएशन, मुडीपू क्रिकेट एसोसिएशन और उल्लाल क्रिकेट एसोसिएशन के बीच, इन तीनों प्रतिष्ठित क्रिकेट एसोसिएशन के टीमों के बीच यहाँ पर एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला, प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट महानायक जय भीम ट्रॉफी 2025-26 के अंतर्गत यहाँ पर शानदार प्रगति करते हुए मुडीपू के इस राजीव गांधी पंचायत मैदान पर। और इस बीच ये गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया बैकफुट पर जाने के बाद खूबसूरती के साथ, और जब तक गेंद को कवर पॉइंट पर फील्ड किया जाता है 1 रन का इजाफा हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 9 रनों पर। 9 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। गेंदबाज निसार
अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार था, इन हाथों पर विकेट, फुल टॉस गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए वाइड का इशारा, और वाइड के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर, 10 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है, जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर। और निसार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार था, इन हाथ ऊपर द विकेट, ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा टॉप एज, लेकिन फील्डर विकेट कीपर गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे, और जब तक वो गेंद तक पहुंचे और गेंद को फील्ड करे चंद टिप्पों बाद आफ्टर कपल ऑफ बाउंसेस बल्लेबाज के पास मौका था इस बीच 1 रन प्राप्त करने का, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 11 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। रन्स सिंगल्स के रूप में इस वक्त बनते हुए मदर इंडिया बोलियार के लिए, और इस बीच निसार अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद अच्छे हल्के से गेंद को पुश करते हैं इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर, थोड़ी सी मिसफील्ड लेकिन बैकअप होता हुआ, और रन्स का जहां तक सवाल है तो रन्स इस वक्त मिलेंगे 1 बॉल लेफ्ट, ओवर कंप्लीटेड, तो 2 ओवर की समाप्ति, 12 रन बच चुके, 12 for 1 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 overs स्कोर्ड बाय मदर इंडिया बोलियार आफ्टर बीइंग तो इस वक्त स्टार फ्रेंड्स बोलियार के खिलाफ बल्लेबाजी करते पहले मदर इंडिया बोलियार ने इस वक्त बनाए हैं 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 2 ओवर की मुकम्मल यानी समाप्ति के बाद, और जहां तक सवाल है इस वक्त तीसरे ओवर का, तो काफ़ी लंबी बातचीत यहाँ पर चलती हुई फील्डरों के बीच की अगला ओवर किसको दिया जाए, और देखते हैं अगला ओवर किसको यहाँ पर देते हैं। दोपहर का वक्त लगभग दोपहर के 3 बजते हुए, अगर 3 बज चुके हैं कहना पड़ेगा, 3:02 इस वक्त बज चुके हैं, और धूप का प्रकोप उसी हद पे बरकरार, और भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहाँ पर करते हुए एक बेहतरीन एक्सक्लूसिव लाइव टेलीकास्ट मैंगलोर मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है जनाब कमल अहमद इनके सारथ्य में, और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा ये प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट महानायक जय भीम ट्रॉफी 2025-26 एक शानदार प्रगति यहाँ पर करते हुए, और भारत के हमारे इस देश के संविधान शिल्पी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस श्रृंखला का, इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है शानदार तरीके से इस राजीव गांधी क्रिकेट मैदान मुडीपू के इस मैदान पर, और इस बीच नवाज गेंदबाजी यहाँ पर प्रारंभ करते हैं, पहली गेंद लेकर तैयार, ऑफ स्टंप बनाते हुए गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, गेंद जाते हुए इस वक्त डीप कवर पॉइंट की दिशा में काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद गेंद को जब तक फील्ड करे बल्लेबाज फील्डर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का, स्क्वायर ऑफ द विकेट हल्के से गेंद को पंच कर दिया था इस वक्त, और 2 रन बल्लेबाज प्राप्त करने में सफल, कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर। अनवर बेहतर बल्लेबाजी इस वक्त दिखाते हुए, पिछले गेंद पर बेहतर स्ट्रोक उन्होंने खेला था, स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ द बैकफुट गेंद को पंच किया था, और जहां तक सवाल है इस वक्त अगली गेंद का, तो गेंदबाज नवाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए इस वक्त सामना करने के लिए तैयार अनवर, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त करने के बाद गेंदबाज नवाज अनवर के लिए अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद, ये गेंद हल्के से एक बार गेंद को फिर से खेल दिया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, और गेंद इस वक्त कवर पॉइंट सीमा रेखा की ओर बढ़ती हुई, और यहां पर शायद सीमा रेखा के अंदर रोकने में असफल, absolutely fantastically placed, just square of the wicket after being rocked to the back foot, and just played that one very fine, just wide of the cover point fielder, cover point fielder के लिए मौका जरूर था रोकने का, गेंद उनके बाईं ओर से निकली थी जरूर, लेकिन उसके बाद वो एक पल के लिए रुक गए, उसके बाद उन्होंने दौड़ना शुरू किया, और जब तक वो दौड़कर गेंद तक पहुंचते गेंद उनको वंचित कर दे, सीधे डीप कवर पॉइंट सीमा रेखा के बाहर हो चुकी थी 4 रनों के लिए, बेहतरीन स्ट्रोक अनवर का, और इस स्क्वायर ड्राइव के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 18 रनों पर, कवर ड्राइव बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त खेला था बल्लेबाज अनवर ने इस गेंद पर, अगली गेंद नवाज गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए शॉट, थर्ड मैन फील्डर के हाथों में गेंद, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, 1+1 इनफैक्ट बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, टीम को मिलेगा, 2 रन्स वाइड एडेड टू द टोटल, और इन 2 रनों के साथ
स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रन। 8 रन अब तक इस ओवर में बन चुके हैं पहले 2 गेंदों में नवाज के। और अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए हर गेंद के साथ फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए यहाँ पर कप्तान स्टार फ्रेंड्स बोलियार के। और एक बार फिर से दोनों बल्लेबाज कुछ बातचीत करने के बाद अपने स्वस्थान पर लौटते हुए और अगली गेंद लेकर गेंदबाज नवाज दाहिने हाथों पर द विकेट स्वीप करना चाहा। बेहतर गेंद इस वक्त कुछ ज़्यादा तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और सीधे पहुंची इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और फिर से एक बार नवाज गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए अफरीद के लिए दाहिने हाथों पर द विकेट तैयार। ये गेंद उछालना चाहता, पैरों पर गेंद टकराई, 2 कदम आगे जरूर बढ़ाए लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींच लिए बल्लेबाज ने। और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 20 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर 20 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 2 डॉट गेंदे लगातार फेंक चुके हैं दाहिने हाथ बल्लेबाज के लिए अफरीद के लिए गेंदबाज नवाज और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार स्वीप करना। क्विक पिच ऑफ वर्क, दिस इज आउटस्टैंडिंग वर्क मेड बाय विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स। This is an absolutely magnificent work made by wicketkeeper behind the stumps। और गेंद को इस वक्त मोड़ने के प्रयास में 1 कदम आगे जरूर निकले लेकिन गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में और जैसे विकेट कीपर के हाथों में गेंद पहुंचे इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड गेंद को इस वक्त खूबसूरती के साथ गेंद के साथ विकेट इस वक्त उखाड़ दिए गेंद के जरिए। और इसी के साथ इस बेहतरीन स्टंपिंग की बदौलत यह विकेट यहाँ पर गिर चुका है और विकेट नंबर 2 यहाँ पर गिर चुका है। बेहतरीन स्टंपिंग इस वक्त विकेट कीपर ने की और 20 रनों के ऊपर दूसरा विकेट खो चुका है यहाँ पर मदर इंडिया बोलियार। इट्स 24-2। So number 4 batsman is now comes out to the middle और यहाँ तक सवाल है अफरीद का विकेट पिछले गेंद पर गिर चुका है। शानदार विकेट कीपिंग का विकेट कीपर ने की थी स्टंपिंग के जरिए इस वक्त अफरीद को पेविलियन का रास्ता दिखाया। और यहाँ तक सवाल है नए बल्लेबाज का तो नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद इस ओवर की अंतिम गेंद का इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में जमावट करते हुए गेंदबाज नवाज और अपनी ओवर की अंतिम गेंद इस वक्त फेंकने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार। ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त लेकिन थ्रो यहाँ पर काफी वाइड गुजरता हुआ गेंदबाज का फेंका गया हुआ फॉलो थ्रू में नॉन स्ट्राइकर के स्टंप से काफी दूर गुजरता हुआ और 1 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 21 रनों पर 21 for 2। 3 overs had been bowled and 9 runs came from this over। 9 रन इस ओवर में बने, पहला बेहतर ओवर कहा जा सकता है। हालांकि इस ओवर में 1 विकेट जरूर गिरा लेकिन 9 रन बने और ये ओवर पिछले 2 ओवर के मुकाबले बेहतर यहाँ पर कहलाएगा मदर इंडिया बोलियार की पारी में जिसमें 9 रन बने। 3 ओवर की समाप्ति 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और जहाँ तक सवाल है चौथे ओवर का, चौथा ओवर इस वक्त शुरू होने जा रहा है। अगला मैच 7वां मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ और इस वक्त मुकाबला मदर इंडिया बोलियार और स्टार फ्रेंड्स बोलियार के बीच यहाँ पर जारी है। गेंदबाज द बॉलर स्टार्ट्स द फ्रेश प्रोसीडिंग्स फ्रॉम द कमेंटेटर बॉक्स एंड ये श्रृंखला एक बेहतरीन प्रगति करते हुए श्रीमान जुबैर अलादीन शर्मा दिरलकट्टे इनके पूर्ण सहयोग से ये प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला एक शानदार प्रगति यहाँ पर करते हुए और निश्चित रूप से इस कड़ी धूप में भी एक कड़ा मुकाबला यहाँ पर जारी। और जहाँ तक सवाल है अगली गेंद का तो गेंदबाज इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। हाफिल इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहे, शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद पहुंची तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े और इस बीच वाइड का इशारा। The ball missing 2 for the leg stump at the last moment. 1+1 2 runs now added to the total और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 23 रनों पर।
So this fantastic tournament is organized under the great leadership of Mr. Zubair of Aladdin Sharma and Haider Huha Kokallo and Ataullah. और ऐसा कहा जा सकता है 3 मुख्य पिलर से इस श्रृंखला के, इस मेगा श्रृंखला की, इस श्रृंखला का शानदार तरीके से आयोजन करते हुए इस बार रनआउट का खतरा हो सकता है। इस बार विकेट कीपर थ्रो को गैदर करने में असफल। Certainly that was a run out chance at the non striker and निश्चित रूप से वहां पर रन आउट हो सकता था नॉन स्ट्राइकर एंड पर दोनों बल्लेबाज एक छोड़ पड़ते हैं, लेकिन आखिरकार गेंद को थ्रो को ठीक तरह से रिसीव नहीं कर पाए विकेट कीपर। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था दूसरा रन आसानी के साथ पूर्ण करने का और 2 रन यहाँ पर पूर्ण कर चुका 25। और जहाँ तक हैदर हुआ को कल्लो को जिनका सवाल है, एनसीए के अध्यक्ष प्रेसिडेंट है वो जुबैर अलादीन शर्मा और अताउल्लाह इनके साथ मिलकर इस श्रृंखला का शानदार तरीके से इस वक्त आयोजन न करते हुए। और इस बीच 1 रन इस गेंद पर मिला। हाफिल इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर 26 नाउ। और गेंदबाज हाफिल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद फुल टॉस धीमी गेंद इस वक्त रन के लिए दौड़ पर विकेट कीपर पहुंचे, थ्रो पहुंचा और यहाँ पर थ्रो को गेंद को इस वक्त विकेट पर लगाने में असफल और आखिरकार टटोलते रह गए वहां पर विकेटों को। और बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके हैं लेग बाई के रूप में। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 27 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर। हाफिल अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट ये गेंद पैरों पर टकराई, इस वक्त शॉट गली की दिशा में गेंद पहुंची, 1 रन का इजाफा लेग बाई के रूप में। 28 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 in progress. 28 for the loss of 2 wickets in fact. जायज सामना करते हुए ऑफ स्टंप से बाहर और सिर्फ बाई का इशारा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 29 रनों पर। 29 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। स्टिल बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर और हाफिल इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए अनवर। हाफिल की गेंदों का ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद और यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा सही गेंद घोषित। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। 4 overs completed and after 4 overs Mother India bowler are 29 for the loss of 2 wickets with 1 over left in their innings in overall calculation. 6 balls left, 6 गेंदें बाकी और देखते हैं इन बचे हुए 6 गेंदों में मदर इंडिया बॉलियर के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। तीन प्रतिष्ठित क्रिकेट एसोसिएशनों के टीमों के बीच एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला यहाँ पर खेला जाता हुआ ऐसा कहना पड़ेगा। बंटवाल स्पोर्ट्स क्रिकेट एसोसिएशन, उल्लाल क्रिकेट एसोसिएशन और मुडिपू क्रिकेट एसोसिएशन, इन 3 प्रतिष्ठित क्रिकेट एसोसिएशनों के टीमों के बीच एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला महानायक जय भीम ट्रॉफी 2025 एक शानदार प्रगति करते हुए इस मुडिपू के राजीव गांधी पंचायत मैदान में, बिल्कुल नया मैदान और इस मैदान के इतिहास में प्रथम क्रिकेट श्रृंखला यहाँ पर खेली जाते हुए और फर्स्ट एवर क्रिकेट टूर्नामेंट इज नाउ प्लेइंग इन दिस ब्यूटीफुल एंड बिग राजीव गांधी पंचायत ग्राउंड मुडिपू। और जहाँ तक सवाल है 5वें ओवर का, तो रफ गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। रिवर्स शॉट गेंद को खेल दिया इस वक्त गली की दिशा में गेंद पहुंची, जस्ट सिंगल कॉट और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 30 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 30 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर। अनवर सामना करते हुए इस वक्त रफ की गेंदों का, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट ये गेंद जस्ट गॉन फॉर अ माइटी हिव, नॉट सक्सीडेड। फ्लाइटेड गेंद थी इस वक्त लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद कुछ हद तक नीचे रहते हुए आक्रामक स्ट्रोक खेलने के प्रयास में चुके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। 2 बेहतर गेंदें रऊफ इस वक्त फेंक चुके हैं, अपनी ओर की तीसरी गेंद लेकर तैयार। ये गेंद फुल टॉस ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया खूबसूरती के साथ, डीप मिड विकेट पर गेंद पहुंचते हुए 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा और बल्लेबाज यहां पर बच नहीं पाएंगे। रन आउट के रूप में ये पेविलियन वापिस लौटते हुए
काफी शौकीन भरा दूसरा रन लेना चाहता लेकिन नाकामयाब रहे बल्लेबाज और एक रन प्राप्त करने के बाद, एक रन पूरा करने के बाद दूसरा रन चुराने के चक्कर में अपना विकेट खोने के बाद पेवलियन वापस लौटते हुए 31 रनों पर तीसरा विकेट गिर चुका है। एक बेहतरीन पारी अनवर की समाप्त हो चुकी है। He's out for 12. Anwar out for 12 including one boundary scored and a third wicket lost for Mother India bowler. It's 31 for 3. Number 5 batsman is now comes out to the middle. इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर मौजूद और गेंदबाज रऊफ गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए काफ़ी जोरदार हवा मैदान की दाईं से बाईं और इस वक्त गुजरती हुई, जिस तरीके से मैदान के धूल उड़ रहे उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मैदान पर हवा मैदान की दाईं से बाईं और इस वक्त गुजर रही है। डायरेक्शन से बाहर गेंद, रन का इजाफा हो चुका है। 1+1 2 रन नाउ एडेड टू द टोटल इन द फेस ऑफ वाइड और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 33 रनों पर 33। तो अंपायर ने इशारा किया कि देयर एक्सीड्स देयर टाइम लिमिट, तो एक खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा और 3 गेंदें अब कुल मिलाकर मदर इंडिया बॉलियर की पारी में बाकी। रऊफ दाहिने हाथों पर तो विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए फुल टॉस पुल किया इस वक्त मिड विकेट पर, फील्डर थोड़ी से पीछे तैनात, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा लेकिन इससे पहले कि थ्रो पहुंचे बल्लेबाज बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट द्वारा 2 रन यहां पर प्राप्त कर चुके हैं। गैप चुनते कुछ हद तक गेंद को इस वक्त उछाला था, 2 रन बल्लेबाज प्राप्त करने में सफल और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 35 रनों पर 35। 2 balls left now in our calculation in their innings और रऊफ अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर तो विकेट गेंदबाजी करते हुए। इस बीच ये गेंद स्वीप करना चाहा, टॉप एज पर गेंद टकराई, गली की दिशा में पहुंची, 1 रन का इजाफा और स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है अब 36 रनों पर 36। एंड नाउ द लास्ट बॉल रिमेनिंग इन द इनिंग्स, अंतिम गेंद उनकी पारी का बाकी और रऊफ इस वक्त तैयार। द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। रऊफ गेंदबाजी करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज जब्बार के लिए उनकी पारी की अंतिम गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ड्राइव कर दिया इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर सीधे फील्डर के हाथों में, जस्ट अ सिंगल ही गॉट इन द फाइनल डिलीवरी ऑफ द इनिंग्स। सो दैट्स इट, द innings is up for Mother India bowler. They finished with 37 for the loss of 3 wickets in the stipulated 5 overs against Star Friends bowler, and with that they set a victory target of 38 for Star Friends bowler. 38 runs Star Friends bowler have to score in the stipulated 30 delivers. That means in the stipulated 5 overs with a required run rate of exactly 7.60 runs per over with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. और देखते हैं यहाँ पर स्टार फ्रेंड्स बॉलियर के बल्लेबाज इस लक्ष्य तक पहुँच पाते हैं या नहीं। 38 रनों का लक्ष्य 5 ओवर में, 38 द टारगेट इन 5 ओवर्स फॉर स्टार फ्रेंड्स बॉलियर और उनकी पारी की शुरुआत होगी यहाँ पर एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब यहाँ पर स्टार फ्रेंड्स बॉलियर की पारी की शुरुआत होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। So thank you very much, Gopi. And target which is set for team Star Friends Boliar by Mother India Boliar, 38 to win this match. And we are just waiting for the opening the batters.
So thank you very much once again coming back to this match. What we're talking about, the fantastic cricket tournament is in progress in the name of Jai Mahanayak Beam Trophy 2025-26 is under progress under the great leadership of either Huakwakallu, the president of MCA, Zubair of Alauddin Sharma Derlakate, and of course Atahullah Derlakate, and we are thankful and grateful for their contribution for the success of this cricket tournament. Of course, the officials so far did a great job. Umpire Faisal, Munzir, and Nizar Arif. As a scorer, Mr. Sharif and Numan so far did a great job in our commentary box. So altogether, wonderful cricket tournament is in progress under the contribution and combination of Bantwala Sports Cricket Association, Mudipu Cricket Association, and Ullala Cricket Association. As for the history of this underarm cricket is concerned, of course, the first the cricket association which is organized in Bantwal in the name of Bantwal Sports Cricket Association. They're the one association which is shown the discipline and taught lot of good thing for underarm cricket, especially in the form of discipline is concerned. And after that, their successful journey. And Mahesh and Naveen, after coming here playing in this Bantwal Sport Cricket Association under their cricket tournament, they are just thinking about why not. They also wanted to organize cricket association in Ullal, and they are formed at UCA, Ullala Cricket Association, and they are now running successfully. After that, two cricket association organized, and after that, we are coming to this one, Mudipu Cricket Association. So far, they are also following the same following the same thing what the two cricket associations following, and especially they are showing a lot of discipline and character for underarm cricket, and definitely because of that we are expecting that still underarm cricket has got a great future, especially coming to these areas. The most we can say is that regular cricketing action going on, and it's good news for underarm cricket. First ball down the leg side, and going to be one more first run in the form of extra leg by call by umpire. So altogether, because of we are organizing some cricket association under this their rules and regulation, the cricket tournament is organized very systematically. This is very important in cricket, isn't it? And what we are talking about, if you wanted to complete the cricket tournament very successfully, of course we need to come under the guidelines of cricket association. So three cricket association under this cricket tournament, they are cooperating a lot for the wonderful cricket tournament. And the second delivery, right arm over the wicket balls. This time I wanted to go for the sweep shot, missed it completely, and the wicket keeper behind the stump is also missed. Opportunity for the batters to come back for the couple, and three valuable runs in the form of extras. So with that, the three valuable runs scored moves on to 4 on the board without loss of any wicket. Naushad and Nizam are the opening batters, but Mubarak conceded gifted runs, and of course we are coming back to that officials and even in the registration counter and tossing the coins, of course Faris Arkhana, who did a great job in that tossing ceremony, and even in that registration counter Mr. Khalil Arkhana did a great job. Khalid Arkhana, correction, who did a great job by taking the registration that responsibility in his shoulder and making this cricket tournament more successful one. Played it nicely down to mid-wicket region. In fact, short mid-wicket, ample time for the batter to complete the single. With that single, scope moves on to 5 on the board for no loss. Right arm over the wicket. The batter is on strike. In front of him is Naushad, tall man. This time he played the wrong line, exposing his stumps and try to get the ball into that square leg region, going for that sweep shot, missing the line completely. You miss high it. Mubarak strikes, first wicket back in the pavilion. Naushad departs. It's a 5 for 1. 5 for 1 team Star Friends Bolyar.
first wicket back in the pavilion, and Star Friends body are not chasing a big total, but sometime if they neglect the total, there can be a big total for the team. After this match, late match will be played between 8 boys, B Boys Ulal versus Young Friends Hidayat Nagar. And I request both the teams please report here immediately to sign the official chart. And I request please complete the tossing ceremony. B Boys Ulal ಹಾಗೂ Young Friends Hidayat Nagar ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. The new batter came into bat as a number 3. Swept the ball straight to hands of Scarlag region. They completed a single. And the fielder is in a defensive frame of mind, not interested for the run out. But both the batters completed a single. With that single, Skoban moves on to 6 on the board for the loss of 1 wicket. Faisal is up the mark with the single. And that brings Nizam into strike. Prolong over from Mubarak. Right arm over. Bowls and again that indisciplined bowling performance, isn't it? Wide +1. Again a couple of runs. I've already mentioned whenever chasing, whenever depending a small total, it could be a little margin for error. And a couple of runs has taken the total score into 8 without loss of any wicket. Tossing ceremony is going on between Young Friends versus B Boys. Toss which is won by Young Friends. Hidayat Nagar, and they elected to field first. Thank you. Still searching for the right track, Mubarak, and already 8 runs conceded in this over. This time again down the leg side, they're going for the extra run as well. Now all up to the umpire decision. Umpire, no signal, maybe bat is involved. One more addition, 9 on the board. The last ball remaining. Final time in this over. Mubarak to Faisal. Nizam correction. They wanted to go for the sweep shot. Powerful sweep shot is attempted but missed it completely. One more over, first over completed. After completion of first over, total score is 9 on the board for team Star Friends Buliar against Mother India Buliar. 38 is a target, 9 runs which is completed. That means they are in another needed 29 runs to win this match in remaining 4 overs. 24 deliveries remaining and 29 more runs required for the victory. And a very hot afternoon, evening. In fact, it's a 3:30. The match number 7 in progress of day number 1 of the prestigious cricket tournament. So it's a time to change in voice before the second over going to start here. It's a time for Zubair to take over the microphone, the proprietor of
Aladdin Sharma, Delakate, and one of the backbone of this cricket tournament as well. It's over to, of course, a player come commentator, and Zubair will going to take over the microphone in our state language. Thank you. Thank you so much, Mr. Satish, sir. So, coming back to the match after the completion of 1 over, it's 9 on the board. Just a 4-run conceded here. Hello. Hello. Yes. Second time in is over. Right arm over the wicket bowling here. Across play comes into the picture. Yes, just 1 run collected by the time of fielding. Both the partnership is building. Faisal and Nizam for Star French bowler. Now third ball is progressing right arm over the wicket to Nizam, who is playing for Torpedoes Khana in this particular season. One of the youngest bowler as well, who is currently playing for the Mangalore region. First over, third ball progressing, fourth ball progressing over the wicket again. Faisal, one of the classical player, wanted to go for the switch shot, yani across shot, completely dotted, no connection between bat and ball. First dotted delivery of the second over. 2 more legal delivery left in this quota of second over. Faisal going for the cover shot, wanted to go for the cover drive shot, and that's a quick single, wanted to go for the second run, and Nizam is walking back to the pavilion with the run out. Faisal was little bit quicker than Nizam, but unfortunately Nizam couldn't able to finish the line with that run out. It's 16 on the board. Now the equation is 19 deliveries to go, 22 run to get. 19 legal deliveries to go, 20 to get. Mother India bowler strongly coming back to the match after getting 37 run in the 5 overs. The side of Star French bowler have got plenty of star batsmen if you compare with Mother India bowler. But Mother India bowler with their accurate bowling, line and length, they are coming back to the track and they are bowling without any extras, maintaining line and length along the carpet bowling, not at all giving the room to the batsman to get some extraordinary sixes or boundaries. So last 1 more delivery left in this, isn't it? Last 2 more delivery left in this quota. Sorry, last 1 more delivery. So Nawaz is the batsman joining with Faisal, right-handed batsman, classical drive batsman, who can hit some classical shot. That's what I was mentioning, and extra cover drive that goes out of the boundary line for 4 run. Extraordinary cover drive comes into the picture here from the bat of Faisal with that fantastic stroke. Score jumps to 20 on the board. What a good comeback for the team Star French bowler. One man who can change the entire picture for the team Star French bowler after the completion of 2 overs. It's 20 on the board. Now 18 deliveries to go. 18 to get. So Nawaz
younger brother of Faisal. Both playing for Star Friends Boliar, who are playing for Matrix as well. The first ball outside of the off stump. Wide is the call. 1+1 added. Now the equation simply standing here like a 5.10 per over required. Out of 18 deliveries, 16 to get Star Friends Boliar. Not at all taking the pressure. This batsman, once again, outside of the off stump. Wide is the call. 18 to go, 15 to get. Bowlers need to maintain their accuracy. Till 1.5 ball, it was in good condition for Mother India Boliar. But this time, Nawaz walking back to the pavilion. Misunderstanding between the wicket. They were in the good condition. But Nawaz unfortunately giving his wicket in the form of run out. This might be the boosting point, boosting situation for turning point situation for Mother India Boliar as far as their batting team is concerned. They have quite a good batting lineup, but unfortunately losing the wickets in the often time it will be costing. It gonna cost the team Star Friends Boliar, because we have witnessed a lot of matches where giving so many wickets will of course will boost the against the team. Now Mother India Boliar have the time to come back because 17 ball to go. $15 to get. 1 or 2 balls may come back, may have the chance to come back for Mother India Boliar, because recent time we have witnessed a lot of matches who in Mangalore region as well, always 30 plus runs, always tough for the team, because the cricket is always game of glory, and always they can come back if they bowl very good line, if they don't give any extras. Now Faisal walking back to the pavilion with the bowled out with that wicket, third wicket walking back to the pavilion. And Faisal, who built extraordinary innings for Star Friends Boliar. Now the equation is 16 ball to go, 15 run to get. 60-40 match, 60% is in the favor of Star Friends Boliar. Four wickets are already in the pavilion. Now the left-handed batsman joining with the right-handed batsman. Left and right combination always going to be a headache for the team, for any team, because they have to set their fielding as per batting condition. Mother India Boliar have some extraordinary players from Sporting Sajipa as well. The Nawaz, who is behind the wicket keeping. So now the match is getting very tighter. Mother India Boliar need to little bit, they have to tight the screw. They have to bowl line and length, because Star Friends Boliar have already lost 4 wickets. 1 or 2 wickets will definitely going to impact the team shining Star Friends Boliar. This time one more good delivery. Now the batsman getting pressure, first time in the match. The match is slowly getting interesting here. Left and right combination. Both the teams are fighting very sensibly, because they knew now they can't give any more wickets with the runouts.
But there, overthrow. 1+1, 2 run completed, I guess. Yes, 2 run completed. Very good wicket running between the wickets by right and left combination. With the 2 run, scorecard slowly jumps to 27 on the board. Last one more delivery. Now the equation is 11 to go, 11 to get out of 13 delivery. 4th wicket are in the pavilion. Huge ground. They can, of course, they can get 2 to 3 run very easily, because this ground we have built for overarm cricket, because we have overarm cricket to come on Friday, Saturday and Sunday. So it's a wide call, 1+1. Mother India bowler. Just have to bowl wicket to wicket, because batsmen have the pressure already in their shoulder, and they are doing their job rightly, and bowler just giving up extras will definitely going to boost the scorecard of star French bowler. So after the completion of 3 overs, it 30 on the board. Now 12 deliveries to go, 8 run to get. So we have Thursday quarter-final, day-night match will be there. We have Thursday 1 semi-final, and Saturday 1 semi-final, and Sunday we have final, and we are thinking of one extraordinary high voltage match of and we are planning the match between Torpedoes Kana and Young Friends Urva. The talk is going on here with the Mansoor Rantadka to conduct that match, friendly match. Both the teams are very talented teams. So we are planning to conduct that extraordinary friendly match in this ground. It might be on Thursday night or Saturday night. So let's wait and watch what is going to be the result of that talk. So once again, coming back to the match, 11 deliveries to go, 7 to get. This time wanted to go for the leg stroke in the direction of the ball was completely leg strip, and batsman rightly wanted to go for the leg side stroke, but unfortunately missing the ball, and ball hit it to the wicket, and that's the wicket number of 5 going back to the pavilion. Mother India bowler gave almost 8 to 10 run with the extras. If those run, if they able to control, the pitcher would have in the favor of Mother India bowler. That's what makes the difference. Giving extras is always going to boost the team against the team, and in this kind of tournament, bowlers have to bowl wicket to wicket, because this is huge ground. It's impossible to get sixes in an easy way. If the batsman able to connect right from the middle of the bat, it might be the result might get, because we have witnessed only 2 sixes so far in 7 matches. Now once again over the wicket too, right arm over the wicket too, sorry, round the wicket too. So that is wide call, 1+1, again one more wide. Mother India bowler, once upon a time it was a very good team from bowler side, one of the oldest club as well. Now it's 33 on the board. Once again 1 run completed. Very good running between the wicket, Jabir and the new batsman Shafwan. They are almost in the port. The result, the train is just reaching the destination. Star French bowler. So the next match will be going to proceed here between B-Boys Ullal taking against Young Friends Hidayat Nagar. After the lucky toss, Hidayat Nagar won the toss and they decided to field first. 5 overs match will be going to proceed here in this ground. So UCA, one of the best teams, will going to fight, and that is very good stroke down the ground for 4 run. With that 4 run, scorecard jumps to 39 on the board, and
Star Friends Boliar finally win the match, and the next match will be between B Boys Ullal and Young Friends Hidayat Nagar. Thank you so much. So man of the match, which is goes to Faisal of team Star Friends Boliar. Congratulations, Star Friends Boliar, for their victory, and of course Faisal was got the man of the match for his wonderful contribution of exactly 12 runs from the bat. ದಯಮಾಡಿ ಫೈಜಲ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಫಲಕ ಕೂಡ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಫಲಕವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. Welcome back for the match number 8 between B Boys Ullal versus Young Friends Hidayat Nagar. The first round match, last match, this time lofted, and it could be sixer. The first man to hit the sixer into the straight version. Of course, already the two sixes scored, and this is the third six
And this is the only 1-6 I want to tell you, which is played in front of wicket. What a fantastic stroke. And Sadiq once again is showing his excellency. The only one batter who can hit the ball in any ground with that the distance, which is almost 54 to 55 meters. What a shot. This is a typical Sadiq's signature shot. Fantastically struck, and little bit, not that much of the delivery, which is like down the leg side, but the way that Sadiq is touching his front foot and played it exquisite sweep shot into the deep square leg boundary for 4 runs. 10 in 2. Electrifying start. Welcome back once again, and so already electrifying start from the batter Sadiq. One more splendid striker of the ball with the 6 and a boundary. 1-6 straight over the head of the bowler into the deep long on for a maximum. And the very next delivery, stretching his front foot, played an exquisite, powerful sweep shot down to deep square leg for 4. And straight away, bowler is under pressure. And wait and see how Amir will go into bounce back. Right arm over the wicket balls. This time up and over, down to deep extra coverage and 2 fielders behind the ball. The ball is not going to travel quickly because of that stroke which is played a little bit against the wind. And but the meantime, ample time for the batter to complete a couple of runs. So with that couple of runs, scoreboard now was on to 12 on the board. Intention is very clear here from Sadiq that exactly only one power play over. Have to take the most of that
most of that power play overs with the big shots, right arm over the wicket balls, and this is going to be a big one, a big wide. In fact, umpire will going to call that wide +1. The couple of runs which added to total with that couple of runs covered Namuzan to 14 on the board without loss of any wicket. You are watching the match number 8. Almost it was the last match of the first round in this prestigious cricket tournament, Jai Bhim Trophy 2025, which is played under the sweet memory of Jai Bhim Mahanayak Dr. B.R. Ambedkar. This time it's going to be a big shot. One more into the deep mid-wicket boundary for 4 runs. Now Nawaz joining the party. Just a flick of the wrist and nothing else in that stroke. But what a timing in that shot. Beautifully executed off the toes. There is a long on, and the fielder, of course, they are in the mid-wicket, but he's choosing that cow corner to get that boundary. One bounce into the fence for 4. And runs which has started to flow like a fast-flowing waters of the rivers. 18 on the board this time. At last, the bowler managed to get 1 dot delivery here after conceding 16 runs into 5 balls. Last time in this over. Last time in this over. Bowler will going to continue. Amir. Again, wicketkeeper behind the stump fails to collect the ball. Short one leg fielder fields the ball leg by. In fact, it was deflected from the leg. One more addition. Big over. Expensive over which is comes to an end. And absolutely explosive start here from the batters, opening batters of B-Boys after completion of first over. Its scoreboard is 19 on the board. Yes, we are talking about how could be the future of under-arm cricket. And we are just talking about the history of under-arm cricket. Under-arm cricket, what we are talking about, the first, the association which is started in 2014, of course, under the presidency of the started the journey. Saiduddin Tale Mugaru is the one who started Bantwal Sports Cricket Association in late in 2014. This time single-handed sweep shot, and he got the distance as well. Unbelievable stroke. Well, he won. He's lost his grip over the bottom end, but he's just to continue with the top end. Unbelievable, isn't it? The ball with the direction of the wind, ball traveling towards the deep square leg for the maximum. The 4th sixer of the day, number 1. A lovely delivery indeed. And the bowler who bowled second over, Mainu, has got a punishment in the first ball itself. He need to come back very strongly so that he bowled the slower one, not really try to bowl the quick delivery, because the batter like Nawaz and Sadiq loves to face the quick deliveries. This time improvisation. Now sweep shot played it very nicely into the final region. Fielder behind the ball. Quick outfield here. And good stop by the fielder just inside the boundary line. He managed to get his foot into that ball and stops certain boundary. But in the meantime, both the batters are crossed off for 3 valuable runs. With that 3 valuable runs, Kobar moves on to 28 on the board. And even after the power play also, the runs which is absolutely flowing for the team B-Boys with these 2 batters who are really enjoying the big shots so far. Again, place it down to cow point region for a single. Almost the ball is in the leg stump, and inside out cricketing stroke is attempted by Sadiq to pick up a single. With that single, Skobar moves on to 29 on the board. Most classical and delightful batters. You can see that Sadiq Nawaz is the kind of batter who loves to play the big shot. But Sadiq is the kind of batter who play every cricketing strokes, whether it's going to be a big shot, whether it's going to be a technically sound cricketing stroke, or the cover drive, extra cover drive, even the flick of the wrist on drives, all are classical.
Here comes next one, right arm over the wicket, flighted one, extra bounce in the negation, defeats the bat of Nawaz. He wanted to go for the one more slog sweep shot attempted, but this because of extra bounce in the negation, he fails to make a contact, and wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler. 29 already on the board. Again, try to play that inside out cricketing stroke. They complete single looking for 2. But wicketkeeper so quickly react to that one. No one there in that mid-on region. So he himself coming towards the mid-wicket region. And over number 2 completed. After completion of over number 2, still it's going to be B-boys are looking in a commanding position. 30 without loss of any wicket, going exactly 15 runs per over. Yes, we are talking about the start of the association in 2014. Of course, founder president of Bantwal Sports Cricket Association, Saiduddin Talemogero, who started under his great leadership. Of course, it's not so easy, isn't it? Whenever you are starting a journey, it's always a difficult one. But he is the one is taken that BSCA for a successful one, and the cricket association, and because of they started that association, everyone started to follow. After that UCA, then of course now MCA, Mudipu Cricket Association. Coming back to the over number 3rd, Ashraf brought into attack, and first ball they picked up a single in the form of leg bye. With the addition of leg bye, score number on to 31 on the board. Now this particular cricket ground, we can see that this is a huge cricket ground, just like Zubair is mentioned about. Of course, we need to focus about the overarm cricket as well, along with underarm cricket. You need to get some good talents from this area for the MCA, for Bantwal. And this time, lovely sweep shot, but protection is there in the deep square leg region, so that you have to settle for a single. With that single, score moves on to 32 on the board. Quite understandable, because we need to focus both underarm and overarm cricket. Of course, if you wanted to take some talents to the international, of course they need to play some overarm cricket as well, the season ball cricket what we're talking about. And this is one cricket ground will going to provide opportunity to bring that talents if you organize cricket tournament in this particular cricket ground. That's why we are always mentioning about we need to have a proper grounds, and if you're not having any proper grounds, it's very difficult for the talents to come out. And this is a great hard work done by the whoever is responsible, of course under great leadership of proud MLA Kadarji, and one more single been added to total, and umpire called it wide. It's a couple of runs in delegation, wide plus 1. With that wide plus 1, score button was under 35 on the board. Still a lot of talents are representing for of course zonal level, even for the state. Of course, under 14, under 16, under 19, what we are talking about, the overarm cricket, a lot of talents we can find. But if you're not having any big tournaments, it's not so easy to bring your talent to the high level. And picking up the talents is always going to be a big challenge. And of course, quite unfortunately, we are not having any stadium which is almost an international standard. Even though we are just talking about we are having a big city. But unfortunately, we are not having the cricket ground which is suitable for, at least suitable for the home cricket tournament like Ranji trophies. And if you get that one, surely a lot of talents will going to come out from Mangalore and from the areas like Ulal. This time full toss, and it's going to be a huge one. One of the biggest sixer of the day number 1. Nawaz, this is the 5th 6 of the day number 1. Nawaz second, and this is a juicy full toss, so why not? I wanted to say that thank you very much, my dear friend, for that full toss ball by Ashraf. Ashraf have to be very careful while bowling that full toss deliveries. This time one more lovely delivery. The batter just wanted to go for across the line, leg by call by umpire. And one more over, which is last delivery remaining, last ball. One ball remaining in this over. Already 42, and the team B boys cruising towards the highest total score of this day number 1. And without loss of any wicket, already 42
its highest partnership for the first wicket in this day number 1. Not highest, second highest. And now one more single in the form of bye. The first match, I think, the 43-run partnership and the inaugural match. Now the score is of 43. They are level that the record of highest runs in for the first wicket. The next match will be played between Karnataka 11 versus Lucky Star Rantadka. Karnataka 11 Munnur versus Lucky Star Rantadka. ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. Samadh brought in the attack to bowl the over number 4, the penultimate over. This time Nawaz wanted to go for the short chance of run out to direct it. No, this is not a direct hit, I think so. Even the direct hit, I think the batters made it. They completed a couple of runs here. 1 run for the overthrow as well. So with that couple of runs, Kobat moves on to 45 on the board. So this is the highest partnership for the first wicket between these two. Nawaz and Sadiq is absolutely the break that record of highest run for the first wicket. And here comes the next delivery, Samadh. The second time in this over. Right above the wicket bounce. This time played it very nicely in the gap towards a deep square leg boundary for 4 runs. And again, even kept the 2 fielders in the deep indicated and deep square leg field. Still, Sadiq is finds the gap. And Scuba jumps into 49 now. 1 shot of 50. And absolutely dominated batting performance. Astonishing cricketing strokes. And batting performance from Sadiq and Nawaz. Right arm over the wicket, he balls. 1 more loose delivery. The batters wanted to go for 1 more slog hit into the deep square leg, but mistimed it. 50 comes up. 50 comes up for B-Boys. The partnership of 50. Unbeaten 50 between Sadiq and Nawaz. The first unbeaten 50. The partnership for the day number 1 of this Jai Bhim Trophy. Far outside the line of stump and wide call by umpire. 51 on the board. Without loss of any wicket, and the over number 4 is in progress. Little bit disappointment here for young friends are not really able to break any. This time again he going big and he got the big. This is absolutely big. Nawaz, the big man, is once again showing his excellence. 6th of the 6th, and already in this particular match we have witnessed 4 sixes. 4 sixes in this particular match. 1 from Sadiq, 4 from Nawaz, 3 from Nawaz. Down the leg side, going to be a chance of run out in a non-strikers, and he missed it. My goodness. Luck favors the brave. What the slogan in English, and of course, the brave batsman Nawaz is getting some luck here. The second time he's survived from the run out. 1 more addition for Scober moves on to 58 on the board. Last delivery. Slower one and picked it beautifully into the disc square. That ball went like a tracer bullet. What a fantastic stroke. One of the finest slog sweeper of the ball. Sadiq getting his front foot and played exquisite stroke down to deep square leg for 4. And with that bound, Scober moves on to 62 on the board. The last over remaining. The highest score of the team so far out of 7 matches. This is highest team's total in the day number 1. That means in the evening after 2 or 3 o'clock we can see that the conditions slight a bit of changing, and because of strong wind is started to flow in the ground, batters started to enjoy,
And they started with some big shots. We are just thinking about it's difficult for the batter to get the distance. But now it's going to be a huge one. What a shot! This is absolutely a mesmerizing cricketing stroke. What a stroke. Just coming down the track, using his feet, lofted into the deep long on for a huge one. And that ball gone a many miles out of the park. The scoreboard jumps into 70. 68. Now, one more. He is now dealing with the 6. My goodness. The big man is on fire. And the scoreboard jumps into 74 now. This time, one more. It's going to be a hat-trick. Wow, my goodness. What a batting display here from Nawaz. Definitely the crowd is enjoying. It's absolutely entertainment innings there from Nawaz. 3 sixes in a row. The first hat-trick sixer of this tournament. Everyone struggled to get the 6, but for this man, it is so easy. So easy. 5 sixes already. 6 sixes already. Again, wanted to go for the one more, but this time missed it completely. What a batting display. What a decent batting display from Nawaz and Sadiq. One of the highest run and record-breaking partnership is in progress. This time, 6 number 4 in this over. Yes, he does. The fielder in the deep long on tried his level best, but still ball is just defeating his flying hands and into the fence for a 6. This is one of the expensive over of the day, number 1. 4 sixes in this over. 1 dot ball. 24 runs already scored. And last ball remaining. I want to see how many runs Nawaz has scored. He's actually, I think maybe he's crossed the 50 or not. I want to see. Again, he swings it hard. And it looks like one more 6. 5 sixes in an over. And he got a 50 as well. The first 50 of the tournament of this Jai Bhim Trophy 2025. And certainly Nawaz will go in to lift the bat. Why not? This has been one of the entertainment innings. Played some enterprising cricketing strokes all over the ground. All over the ground. 5 sixes in 1 over, the last over. 93 is the target. But I want to see how many runs he scored. 8 sixes, that means already 48 in sixes. Then 1 boundary, that means 52. 1 3, 55. Then 2 singles. 58 runs is scored. And what a fantastic knock. Out of 58, he scored 48 only in the sixes and boundary. Boundary only 1, but he is happy to deal with the 6. And one of the best and explosive knock. And just I want to see how many deliveries faced. It's very important, the strike rate. $20 is faced and he scored 58 runs. Of course, one of the fastest 50 as well in under-arm cricket, isn't it? And which is recorded in this new cricket ground. And of course, new built Rajiv Gandhi Cricket Stadium as witnessing one new record in this particular match with Nawaz with this astonishing batting performance here. And 93 is the target for the team to win this match, and wait and see how well the team will going to win this match. Young friends Hidayat Nagar, of course, have to climb the mountain of runs of 93 to win this match. We'll take a short break, and after a short break, my friend Gopi will going to take over the microphone. Thank you.
ಕರ್ನಾಟಕ 11 300 ಹಾಗೂ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. धन्यवाद सतीश. So a stupendous task in front of the batsmen of So 93 the target for हिदायत नगर और पहली गेंद इस वक्त रन नहीं बना और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहा नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और एक रन के साथ हिदायत नगर का खाता यहां पर खुल चुका है. निश्चित रूप से एक बेहतरीन बल्लेबाज नवाज ने दिखाया 58 runs he scored in just 20 deliveries with a strike rate of 290 and including 8 massive sixes and 1 boundary. This is an absolutely fantastic knock came from Nawaz. 58 remained unbeaten on 58 out of just 20 deliveries. इस बीच बेहतर गेंद एक्स्ट्रा क्विकर और गेंद को इस वक्त खेलने के प्रयास में चूके एक रन बल्लेबाज को मिला. निश्चित रूप से सिर्फ चौके और छक्के हर गेंद पर लगाने होंगे यहाँ पर हिदायत नगर को अगर उन्हें लक्ष्य तक पहुँचना है. तो 2 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार. ये गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट जस्ट ओवर द क्लियर द इनफील्ड. इन फैक्ट 2 रन बल्लेबाज को मिलेगा जरूर इस वक्त. स्ट्रोक्स इस वक्त कवर पॉइंट फील्डर के सिर के ऊपर से निकले थे इस वक्त और 2 रन बल्लेबाज दौड़कर प्राप्त करने में सफल और इन 3 रन प्राप्त करने में सफल और इन 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 5 रनों पर 5 ऑन द बोर्ड. ये टू लूज 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए इजाज गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी. फैंटास्टिक डिलीवरी दिस टाइम मच स्ट्रेटर लाइन और गेंद को इस वक्त खेलने के प्रयास में चूके और गेंद शॉर्ट फील्डिंग फील्डर के हाथों में फील्ड होते हुए रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर रुक चुका है 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के. एक लंबा सा सफर तय करना बाकी हिदायत नगर के बल्लेबाजों को 93 रन बनाना. 93 टारगेट सेट बाय बी बॉयज उल्लाला फॉर हिदायत नगर. ड्राइव किया हाफ स्टॉप ऑन इज फॉलो थ्रू मेड बाय बॉलर जस्ट अ सिंगल ही गॉट और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 6 रनों पर 6 ऑन द बोर्ड. ये टू लूज विकेट एंड ओवर नंबर फर्स्ट हैज बीन केम स्टूडेंट्स. स्लोवर स्टार्ट फॉर हिदायत नगर 6 विदाउट लॉस आउट ऑफ फर्स्ट ओवर. ಕರ್ನಾಟಕ 11 300 ಹಾಗೂ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರನ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮುಕಿಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರನ್ ತಡಕ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ 11 300 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. तो इस वक्त दूसरा ओवर शुरू होता है. सेकंड ओवर स्टार्ट्स इन द रिंग्स. इमरान द बॉलर इज नाउ स्टार्ट्स द फ्रेश प्रोसीडिंग्स और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. हफील सामना करते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं. पावर प्ले समाप्त हो चुका. फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं और गेंदबाज इमरान गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. फर्स्ट बॉल टॉप एज एंड टेकन ओह इन फैक्ट द बॉल फेल जस्ट शॉर्ट ऑफ हिम एट कवर पॉइंट. थोड़ा सा मिस जजमेंट अंतिम क्षण में और गेंद उनके हाथों से टिप्पा खाते हुए उनके हाथ के सामने इस वक्त जमीन पर टिप्पा खाते हुए और बल्लेबाज 1 रन यहाँ पर प्राप्त करते हुए 7 रन बन चुके हैं 7 विदाउट लॉस. तो इस वक्त गेंदबाज अगली गेंद लेकर तैयार. लॉफ्टेड डाउन टू लॉन्ग ऑफ बट नॉट मोर देन अ सिंगल. 1 रन का इजाफा हो चुका है.
with that single run, the scoreboard moving up to 8 on the board. Yet to lose any wicket in the over number second in progress. और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ऊपर द विकेट ये गेंद just gone for a mighty at the last moment, not succeeded. Extra quicker from the bowler इमरान और विकेट कीपर गेंद को फील्ड करते हुए रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. फिर से एक बार गेंदबाज इमरान एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. Lofted this time down to deep mid wicket, but not more than a single. Fielder वहां पर मौजूद. Just a single he got. 9 on the board. Second over in progress. Slower progressing here for Hidayatnagar. और जहाँ तक सवाल है यंग फ्रेंड्स हिदायतनगर इस वक्त अभी भी लंबा सफर उनके लिए तय करना बाकी. Lofted this time I think it's taken and comfortably taken. पहला विकेट गिर चुका है. 9 for 1. Amir Daman departs. Lucky Star run target or won the toss in the next match, and what the decision they will take, just we have to wait and see. एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला महानायक जय भीम ट्रॉफी 25-26 के अंतर्गत यहाँ पर मैच नंबर 8 खेला जाता हुआ और इस मेगा श्रृंखला के प्रमुख सूत्रधार प्रमुख आयोजक श्रीमान जुबैर अलाउद्दीन शर्मा जो जिस देरला कट्टे के मालिक है, श्रीमान जुबैर हैदर हुहाकुअकल्लू MCA के प्रेसिडेंट हैं और अताउल्ला मुडिपू जो कि 3 मुख्य पिलर्स इस श्रृंखला की इस मेगा श्रृंखला के एक शानदार तरीके से इन तीनों ने इस मेगा श्रृंखला का आयोजन किया है. और मैच नंबर 8 इस मैदान पर प्रगति पर मैदान पर धूल उड़ती हुई और इस बात का संकेत देते हुए कि धूल जो कि हवा जो कि मैदान की बाईं से दाईं ओर इस वक्त गुजर रही है. और ऑन साइड पर बल्लेबाजों को स्ट्रोक्स खेलने का इस वक्त अच्छा अवसर है. अगर हवा के साथ साथ स्ट्रोक्स खेलते तो शायद गेंद सीमा रेखा को पार कर सकती है छक्के के लिए. With the wind bowled out, just gone for a big one, lost his leg stump. और विकेट नंबर 2 यहाँ पर गिर चुका है. नवाज की पारी समाप्त पहले गेंद पर गोल्डन टक के रूप में और इस बीच 9 रनों के ऊपर पहला दूसरा विकेट खो चुका है यहाँ पर यंग फ्रेंड्स हिदायतनगर. It's 9 for 2. इस बीच बेहतर गेंद थी इस वक्त तो जहां तक सवाल है इस वक्त रन का तो रन नहीं मिलेगा. मोइनू नए बल्लेबाज के रूप में और गेंदबाज नौशद इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर तो विकेट तैयार. ये गेंद फैंटास्टिक डिलीवरी इस वक्त लगभग रन आउट का खतरा लेकिन एन मौके पर गेंदबाज ने इस वक्त चतुरता के साथ थ्रो नहीं किया क्योंकि कोई बैकअप वहां पर नहीं था और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 2 अंकों पर यानी 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर जबकि तीसरा ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर और नौशद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथों पर तो विकेट गेंदबाजी करते हुए धीमी गेंद स्वीप करने के प्रयास में चूके और गेंद विकेट कीपर ने आगे की ओर आकर गेंद को फील्ड कर लिया. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर रुक चुका है इस वक्त 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर 10 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. नौशद दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद नो बॉल का इशारा गेंद को ड्राइव कर दिया. इस वक्त लॉन्ग ऑन पर 1+1 2 runs now added to the total. Couple of runs added to the total. It's 12 for the loss of 2 wickets in the over number 3 in progress. और अंपायर ने इशारा किया कि फ्री हिट गेंद इस वक्त बल्लेबाज के लिए है. देखना है कि बल्लेबाज इस फ्री हिट गेंद का किस तरह फायदा उठा पाते हैं. नौशद अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट
just gone for a mighty heave, not succeeded. Wanted a single but rightly back to his crease at the last moment. और यहाँ पर बल्लेबाज बच चुके हैं, स्कोर रुक चुका है 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर 12 for the loss of 2 wicket. Still 2 balls left in this over. और गेंदबाज नौशद गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट. Lost it. This time I think it's got the distance. No, in fact it fell just short of a fence at the last moment और गेंद को फील्ड कर लिया गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा चौका इस वक्त मिलता हुआ. गेंद को फील्ड तो जरूर कर चुके थे इस वक्त फील्डर लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के अंदर, लेकिन उनका पैर सीमा रेखा के रोप यानी रस्सी पर लगता हुआ और चौका यहाँ पर प्राप्त करने में सफल. बेहतर स्ट्रोक था इस वक्त हफील के बल्ले से और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर 16 for the loss of 2 wicket. Still a ball left in this over और गेंदबाज नौशद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए राउंड द विकेट कहना पड़ेगा. बाउल्ड आउट, मिडल स्टंप uprooted. One more wicket fallen. 3 overs completed. 16 for the loss of 2 wicket. निसंदेह लगभग ऐसा कहना पड़ेगा असंभव सा लक्ष्य इस वक्त यंग फ्रेंड्स हिदायत नगर के सामने. 77 to get from 2 overs. So fourth over starts in young friends Hidayat Nagar innings. See if the bowler now starts the fresh proceedings. पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथों पर था विकेट. ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद और शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में एक रन मिला. डायरेक्ट हिट इस वक्त स्टंप से ऊपर टकरा था. वाइड का इशारा. स्टार्ट्स ऑफ द वाइड बाय द बॉलर आसिफ और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 18 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. It's 18 for the loss of 3 wicket at the start of the 4th over. In fact अंपायर विकेटों को इस वक्त सही करते हुए और आसिफ अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. अगली गेंद इस बार बेहतर गेंद थी. शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्ड होते हुए रन्स बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. स्कोर रुक चुका है इस वक्त 18 रनों पर. 18 for the loss of 3 wicket in the over number 4 started just short while ago. और आसिफ अपनी ओर की दूसरी सही गेंद लेकर इस वक्त तैयार. अंपायर विकेटों को यहाँ पर सही करते हुए और खेल जो कि कुछ क्षणों के इस मैदान पर रुक चुका है. एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट महानायक जय भीम ट्रॉफी 2025 की शानदार प्रगति यहाँ पर होते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर जो कि संविधान शिल्पी हमारे देश के भारत के, उनकी मधुर याद में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस प्रतिष्ठित श्रृंखला का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है. और आसिफ इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट. लॉफ्टेड दिस टाइम. चांस फॉर द लॉन्ग ऑफ फील्डर. ही वोंट गेट दैट वन. और एक रन बल्लेबाज को इस बीच मिलेगा. जस्ट सिंगल ही गॉट और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. 19 for the loss of 3 wicket in the over number 4 in progress. 10 balls left and 74 runs required. Absolutely impossible task in front of the batting side. Dot delivery आसिफ की और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद उछाल दिया इस वक्त लॉन्ग ऑन पर सिर्फ 1 रन के लिए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 20 रनों पर. 20 for the loss of 3 wicket in the over number 4 in progress. और गेंदबाज आसिफ अपनी ओर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट. Lofted. This time I think he's got the distance. It's gone for a maximum. First 6 in the innings of young friends Hidayat Nagar came from the bat of Ashraf. और खूबसूरती के साथ गेंद को उछाल दिया था
था इस वक्त डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए बल्लेबाज अशरफ ने। एक गेंद अभी भी इस ओवर में बाकी। आसिफ, एक गेंद शफल होते हुए गेंद कौन सा पर उछालना चाहता, मिड ऑफ द पर कनेक्शन नहीं, एक रन जरूर मिला। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 27 रनों पर। 27 for 3 over number 4 has been came to an end. Last over remaining, 27 the score. That means 66 more runs required from the last over. That means in remaining 60 deliveries. Absolute impossible task in front of the young friends Hidayat Nagar in this remaining last over. नवाज गेंदबाजी प्रारंभ करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। पैरों पर गेंद टकराई, शॉर्ट थर्ड मैन पर रन के लिए दौड़ पड़े, रनआउट का खतरा और इसी के साथ विकेट यहां पर गिर चुका, डायरेक्ट हिट लगता हुआ। और अब स्कोर है 27 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 27 for 4। Nawaz loved it and fell short of a feeder at long on. Just a single he got. 28 on the board. Now just 4 balls left in their innings. Quick one. Absolutely fantastic delivery. और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 28 रनों पर। 28 the score. 3 balls left in their innings. सिर्फ औपचारिकताएं ही इस मैच में अब बाकी रह गई। जस्ट एंड जस्ट फॉर्मेलिटीज नाउ रिमेनिंग इन दिस मैच। Misses Gandharvara single and get it comfortably. 29 on the board. Now just 2 balls left in overall calculation in the innings. Nawaz, the second last ball of the match is now coming up. Bowled him, just gone for a loft. No, in fact, just wait. We have to wait and see if the ball went just wide of the leg stump at the last moment. और जहाँ तक सवाल है रन्स का, बल्लेबाज को रन्स नहीं मिलेंगे और इस गेंद पर बल्लेबाज बच चुके हैं। अंतिम गेंद, लास्ट बॉल, लेग स्टंप से बाहर और 1 + 1 2 runs now added to the total. 31 the score now. Still last ball left in this match. Nawaz अंतिम गेंद लेकर तैयार। That's it. So comprehensive, exactly 60 runs, big margin victory for B-Boys Ullal against young friends Hidayat Nagar, and with that 60 runs, big margin, comprehensive victory. They are through to the next round of this competition. B-Boys Ullal defeating young friends Hidayat Nagar in the match number 8 of this prestigious cricket tournament, Jai Bhim Trophy 2025. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ತಾಜ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಹುಸೇನ್ ಚಾ ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಜೆಪಿಎಂ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಹುಸೇನ್ ಚಾ, ದ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಆಫ್ ತಾಜ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್. Heartily welcome to you, sir, once again. So the next match number 9 is now going to start, and for the next further comments, for the first time today, I'll call Mr. Faris to continue the
commentary procedure in our state language, sweet language, Kannada. Please come forward. Thank you. Dhanyavad. ಧನ್ಯವಾದ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರೇ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ನವಾಜ್ರವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ನವಾಜ್ರವರ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುವಕರ ಕಣ್ಮಣಿ ತಾಜ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇದರ ಸ್ಥಾಪಕರು ನಮ್ಮ ಹುಸೇನ್ ತಾಜ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಳಪುಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದರ ಗುಮಾಸ್ತರು ಸದಾನಂದ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡೆಯಲು ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಡೆಯಲು ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸದಾಶಿವ ನಮ್ಮಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಳಪುಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಗುಮಾಸ್ತರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹಾನಾಯಕ ಜೈ ಭೀಮ್ ಇದರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೂಡ ಅವರ ಮೇಲಿದೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಜೈ ಭೀಮ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Okay, start the match. The match is progressing here between Lucky Star Rantadka and Karnataka 11 Munnur. After the victory toss, Lucky Star Rantadka have decided to field first 5 overs match. Progressing here, Shanawaz is bowling right arm over the wicket. Two right-handed batsmen. Power play is on. The first delivery along the carpet, extraordinary extra wicket delivery. And the batsman wanted to go for the switch shot. Who is extraordinary player and so second time in his over, right arm over the wicket again. Shanawaz to the right-handed batsman once again into the block all along the carpet again. One more extra cricket delivery. Mansoor behind the wicket, giving some motivation to the player Shanawaz, who is representing Sridevi Cricketers Jaipur from past 5 years and played many innings for young friends Surua as well. Third time in his over, right arm over the wicket. Power plays on. Two fielders outside the 30-yard circle. Once again, this time into the block hole again. So the last man of the match, Mr. Nawaz of
ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಮ್ 7ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ನಜತ್ ಉಲಾಲ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಪ್ರೀತಮ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯಲು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ BSCA ಇದರ ಸಿಟಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಸಚಿವ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಯ್ದ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಜೈ ಭೀಮ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬರದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾಕಟ್ಟು ಸಿಟಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಸಚಿವ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ತುಂಬರದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಂಡಂತ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಅತ್ಯಂತ ಅಧಿಕ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇರುವಂತಹ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ, ಓವರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಉರುವ ತಂಡವನ್ನು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದಂತಹ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ ಅಜ್ಮಲ್, ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ನಂದಾವರ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಜೈ ಭೀಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬರದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೀತಮ್ ನಜತ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಪ್ರೀತಮ್ ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಾಹಿದ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬರದಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೊಂದು ಅಲಾದಿನ್ ಶವರ್ಮ ಕೂಪನ್ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೀರ್ತಿ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಬೈಲ್ ಇದರ ಕಪ್ತಾನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಶೀತ್, ಮೂಸೀನ್ ಸಿಟಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಸಚಿವ ತಂಡದ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಟಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಸಚಿವ ತಂಡದ ಮೂಸೀನ್ 4ನೇ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಮೂಸೀನ್ ಸಿಟಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಸಚಿವ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಶೇನವ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 2013ರಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 2 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 12 ರನ್ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆಟಗಾರ ಮೂಸೀನ್. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಟಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಸಚಿವ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿ ಕುಕ್ಕಾಜ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ NM ಮಂಗಳೂರನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಮೂಸಿನ್. ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ. That is in the air and gone out of the park. Is one. Karnataka 11. Munnur, one of the finest batsmen ever produced from Munnur area after Anwar Alampadi. The man who is playing for Team Matrix, the man who uses his power to get mighty sixes, who can clear any ground. So after the completion of 1 point, it's
4 ball. It's 12 on the board. Last 12 deliveries to go. Last 2 more deliveries to go to complete the quota. Nasir to Rizwan. Munnur. Fifth time. This time into the low call. One bounce ball. Rizwan just checking the ball, giving the sensational stroke. Just playing sensibly. Just single getting. Skoga slowly jumps. With that 6 also, they are still in 13 on the board. They have to get some extraordinary stroke in order to fight back against Lucky Star Rantarka, because they have mighty players like Mansoor, Imran, Shahnawaz, Akram, Mustafa. What a team this is. This can be very effective team if they continuously play in the Mangalore region, like we have witnessed the SRGT and Reliance Katipalla. That kind of a team we have Lucky Star Rantarka star French bowler. ಧನ್ಯವಾದ ಸುಬೈರ್ ಅವರೇ. ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರಂತರ್ಗ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ 11 ಮುನ್ನೂರು. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಡಂತಹ NM ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುವಂಥ ಆಟಗಾರ ಮುನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ರಿಜ್ವಾನ್. ಮುನ್ನ ತನ್ಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ತುದಿಯಿಂದ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಿಜಾರ್ ಅವರ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು. ಇದು ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಗುರುತಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಡಿದ್ರು. 1 ಓಟಗಳು ಒಂದರ ನಂತರ 2 ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗುವ ಮುಖೇನ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 15 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಜೊತೆಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಜ್ವಾನ್ ಹಾಗೂ ಹಬೀಬ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಆ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜೊತೆಯಾಟವಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಮುನ್ನ ತನ್ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡುವಿದು, ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಂತಹ ಚೆಂಡುವಿದು. ಲೆಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕ 1 ಓಟಗಳು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 16 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ತನ್ಕೂಟದ 3ನೇ ಎಸ್ತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಹಬೀಬ್. ಮತ್ತೆ ಓಡೋಡಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ರಿವರ್ಸ್ ಹಿಪ್. ಇದು ಗಾಲಿಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು, ಟಪ್ ಎಜ್ ಆಗುವ ಮುಖೇನ ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಬೀಬ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಟಾಪ್ ಎಚ್ ಮೂಲಕ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರ ಕೈ ಸೇರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕ 11 ಮುನ್ನೂರು. ತನ್ಕೂಟದ 4ನೇ ಎಸ್ತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರರ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು ನೀರ ಲಾಂಗ್ ಓವರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡುಗಳ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಆಟಗಾರ KP ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಗಮನಿಸಿ, ಗುರುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಿ. ನಾಳೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ MCA ಕೂಟದ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೂರು ಓವರುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 19 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ 11 ಮುನ್ನೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಅಂತಿಮ 2 ಓವರುಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಓಟಗಳು ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಲೆಯಾಗಬಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಎಸೆತಗಾರ ಇಕ್ಬಾಲ್ ರವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತರ್ಗ ಪರವಾಗಿ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೆಪಿ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅವರ ತುದಿಯಿಂದ ಓಡೋಡಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ಇದು. ಲೆಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಓಟಗೋಲು, ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಂತಹ ಚೆಂಡು ಇದು. ಒಂದು ಓಟಗೋಲು, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮತ್ತೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಡಿ ಬಡಿಯ ದಾಂಡಿಗ ರಿಜ್ವಾನ್ ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವವಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಈ ರಿಜ್ವಾನ್. ಮತ್ತೆ ಇಕ್ಬಾಲ್ ತನ್ಕೊಟ್ಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ರಿಜ್ವಾನ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು, ನೇರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಂತಹ ಚೆಂಡು. ಒಂದು ಓಟಗಳು, ಒಂದರ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಓಟ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗುವ ಮುಖೇನ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕ 2 ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಂತಹ ಚೆಂಡು ಚೇಕ್ತ ರಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ 2 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗುವ ಮುಖೇನ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 22 ಬಂದಾಗಿದೆ. ಇಕ್ಬಾಲ್ ರವರ ಪ್ರಥಮ 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಮೂರನೇ ಎಸ್ತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬಿಗ ಪ್ರಯತ್ನವಿತ್ತು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡುವಿದು. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಸೆದಂತಹ 3 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಕೇವಲ 2 ಲೆಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ತನ್ಕೂಟದ 4ನೇ ಎಸ್ತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡುವಿದು. ತೀರ್ಪತ್ತು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದರು ರಿಜ್ವಾನ್. ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಂತಹ ಚೆಂಡುವಿದು. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರ ಕೈ ಸೇರುವ ಮುಖೇನ ರನ್ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಜ್ವಾನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಪಾಯದ ಆಟಗಾರ ರಿಜ್ವಾನ್ ರವರ ಉದ್ದರಿಲಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ 11 ತಂಡದ 2ನೆಯ ಉದ್ದರಿಲಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅನೀಫರ್ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ಇದು. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಕ್ಬಾಲ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಸೆದಂತ 5 ಚೆಂಡು ಮೂಲಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಗೆ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅವರ ತುದಿಯಿಂದ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅನೀಫರ್ ಅವರ ಕರೆಗೆ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟಗಳು, 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಓಡಿದರು. ರನ್ಔಟ್ ಮುಖೇನ ಕೆಪಿ ರವರ ಉದ್ದರಿಲಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 23 ಬಂದಾಗಿದೆ. 3 ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ 11 ಮುನ್ನೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಐದನೆಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಫ್ ರವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ ಅಶ್ರಫ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎದುರಿಸಿದ 24 ಚೆಂಡು ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 23 ಓಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದರು.
ಮತ್ತೆ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಶೇಖ್ ರಕ್ಷಕ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಓಟಗಳು ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಓಟ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಓಡಾಟ. ಎರಡು ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗುವ ಮುಖ್ಯ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 25 ಬಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿ ಶಮೀರ್ ರಂತಡ್ಕ ಮತ್ತೆ ಅಶವ್ರವರ ಕಡೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವಿತ್ತು. ಹೆಜ್ಜೆ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗುವ ಮುಖ್ಯ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 26 ಬಂದಾಗಿದೆ. ಶಮೀರ್ ತನ್ಕೂಟದ ಮೂರನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತವಿದು. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನಿಗೆ ಬಾಲ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ. ಒನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಕಪ್. ಎರಡು ಓಟಗಳನ್ನು ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಕ್ಬಾಲ್. 3 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 4ನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಮೀರ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನೀಫ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವಿತ್ತು. ಒಂದು ಓಟಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು. ಮತ್ತೆ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ ಅಶ್ರಫ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ 5ನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡುವಿದು. ನೇರ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ರನ್ ಔಟ್ ಮುಖೇನ ಹನೀಫ್ ರವರ ಉದ್ದರಿಲಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸತತವಾಗಿ 4ನೆಯ ಉದ್ದರಿಲಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ 11 300 ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ ಅಶ್ರಫ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೈಕಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೈಫರ್ವನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಕ್ಬಾಲ್ ರವರು ಆ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲು ಹೋಗಿ 2 ಓಟಗಳು. 2ರ ಬಳಿಕ 3ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಓಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಂತೂ ರನ್ ಔಟ್ ಮುಖೇನ ಉದ್ದರಿಲಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ, ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಓಟವನ್ನು ಓಡಿದ್ರು? ರನ್ ಔಟ್ ಮುಖ್ಯನ 3 ಓಟಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗುವ ಮುಖ್ಯನ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 33ರ ಗುರಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರಂತಡ್ಕ 30 ಚೆಂಡು ಮೂಲಕ 33 ಓಟಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ. ಮುಂದಿನ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಮೇಕನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ಸೃಜನ್ ಅವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೃಜನ್ ಅವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವರು ವೇದಿಕೆ ತತ್ತರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
धन्यवाद फारिश। और जहां तक सवाल है इस वक्त लक्ष्य का, तो 33 रनों का लक्ष्य। दाहिने हाथ ओवर द विकेट ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दोनों आरंभिक बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद मंसूर और इमरान, और गेंदबाज दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए। ये गेंद मंसूर के लिए पहली गेंद ऑफ स्टंप पर, गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर स्वीप करना चाहता, चूंकि गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, 1 रन का इजाफा हो चुका है। ಅದೇ ರೀತಿ BSCA 2014 ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸೈದುದ್ದೀನ್ ತಲಮುಗ್ರಿ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಆಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗನಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು, ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆಟಗಾರರು ಪರಿಪಕ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಸೈದುದ್ದೀನ್ ತಲಮುಗ್ರು ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು BSCA ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು सलिस्ता इದ್ದೇವೆ. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 1 रन बिना किसी नुकसान के. इमरान इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, 1 रन बिना किसी नुकसान के. 33 the target, just a 1 on the board, yet to lose any wicket in the over number first in progress. नौशद गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए सामना करते हुए इमरान, और निश्चित रूप से 33 रनों के अंदर अगर लकी स्टार रन तरका के बल्लेबाजों को रोक कर रखना तो इस वक्त एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन देना होगा. खासकर मंसूर जैसे बल्लेबाजों पर अंकुश लगाना जरूरी बन चुका है यहाँ पर कि 11 मुन्नूर के गेंदबाजों को. ये गेंद जस्ट गॉन फॉर अ माइटी नॉट सक्सीडेड, फैंटास्टिक डिलीवरी फ्रॉम द बॉलर नौशद. और जहाँ तक रनों का सवाल है, रन इस वक्त नहीं मिलेगा. पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಟಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಸಜಿಪದ ಮೊಹಸಿನ್ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಸಿಟಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಮೊಹಸಿನ್ ಇವರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸಿಟಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಮೊಹಸಿನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವರು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. अगली गेंद, ये गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट, कवर पॉइंट पर रन के लिए दौड़ पड़े. इस बीच 1 रन मिलेगा जरूर. मंसूर हालांकि कुछ हद तक धीमे गति से दौड़े थे, लेकिन 1 रन पूर्ण करने में सफल. जोखिम भरा रन इस वक्त, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर. 2 on the board to lose a wicket in the over number first in progress. जहाँ तक लकी स्टार रन तरका के 33 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, इस वक्त मंसूर की उपस्थिति उनके लिए बेहद ज़रूरी यहाँ पर बन चुकी है. और गेंदबाज इस बीच नौशद गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. और मंसूर इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद, इस बार गेंद को रिवर्स शॉट खेला था. इस वक्त थर्ड मैन की दिशा में गेंद पहुंची और 1 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है. कुल मिलाकर 3 रनों पर. 3 on the board to lose a wicket in the over number first in progress. This is the match number 9 of this prestigious cricket tournament. Mahanayak Jai Bhim Trophy 2025-26 is now progressing here under the great leadership of Mr. Zubair Aladdin Sharma Mr. Haidar Rahu को कल्लो. और इस बार गेंद को उछाल दिया खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए. इमरान के बल्ले से यह छक्का लग चुका है, और ऐसा कहना पड़ेगा just lofted that one in style and finds the gap as well and got the distance last. और छक्का इस वक्त लग चुका है, और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 9 रनों पर. फर्स्ट ओवर completed, 9 runs on the board. Steady start for Lucky Star Run Tarka. This tournament, this fantastic tournament is now progressing here under the great leadership of Mr. Zubair Aladdin Sharma, Mr. Haidar Huhakwallo, the president of MCA, and also Ataullah Mudipu. These 3 pillars making this a fantastic tournament more delightful. और जहाँ तक का सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए रिजवान. एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट मैग्नूर मीडिया द्वारा इस वक्त किया जाता हुआ जनाब कमल अहमद इनके साथ में. और न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी कई हजार दर्शक इस मेगा श्रृंखला का यहाँ पर यूट्यूब पर मुआयना करते हुए. 9 without loss after first over, 24 to get in remaining 24 deliveries. और गेंदबाज रिजवान
4 overs remaining, 24 runs to get. और ओवर की पहली गेंद लेकर रिजवान इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर विकेट मंसूर के लिए इस बार गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट उछाला खूबसूरती के साथ, लो फुल टॉस के तौर पर गेंद ऑफ स्टंप से कुछ बाहर की और निकलती हुई, और इस बीच 2 रन बल्लेबाज प्राप्त करने में सफल। थोड़ा सा विड्थ था और इस विड्थ को कबूल करते हुए लो फुल टॉस गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट स्कूप कर दिया था इस वक्त, और 2 रन बल्लेबाज प्राप्त करने में सफल, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 11 रनों पर, 11 विदाउट लॉस। और रिजवान फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार, और ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, बेहतर कलेक्शन, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक कलेक्शन मेड बाय विकेट कीपर, वाइड डिक्लेयर्ड। ಅದೇ ರೀತಿ ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ತಂಡದ ಬಾಚಿ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। तो इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद उछाला मंसूर ने, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल लॉन्ग ऑन फील्डर आफ्टर इट, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 13 रनों पर। मंसूर और इमरान ने एक बेहतर शुरुआत इस वक्त देने की पूरी कोशिश करते हुए, बासित ದಯವಿಟ್ಟು ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಂಡದ ಬಾಸಿತ್ ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಸಂಘಟಕರಿಂದ। और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, यह गेंद स्टीयर करना चाहा, बैकफुट पर जाने के बाद गेंद कुछ ज़्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे, और स्कोर इस वक्त रुक चुका 13 रनों पर, 13 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज रिजवान अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, ये गेंद स्वीप कर दिया इस वक्त, गेंद पहुंची डीप स्क्वायर की दिशा में, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े इस वक्त मंसूर के लिए खतरा पैदा हो सकता है, लेकिन नहीं, 2 रन यहां पर पूर्ण कर चुके। हालांकि मंसूर अपने पैर में कुछ हद तक दर्द महसूस करते हुए यहां पर, लेकिन दूसरा रन प्राप्त करने में सफल हो चुके, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 15 रनों पर, 15 ऑन द बोर्ड, 33 द टारगेट, दैट मींस 18 मोर रन्स नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। और इमरान इस वक्त सामना करते हुए रिजवान की गेंद को खेल दिया इमरान ने इस वक्त डीप एक्स्ट्रा कवर पर, जस्ट अ सिंगल ही गॉट, with that single the scoreboard moving up to 16 without loss in the over number 2 in progress। काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र क्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ, और गेंदबाज इस बीच रिजवान अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद मंसूर के लिए, दिस इज गॉन मेनी अ माइल्स, इट्स गॉन फॉर अ मैक्सिमम। और मंसूर की यही खासियत है, जब वो गरजते हैं तब ना सिर्फ गरजते हैं बल्कि बरसते भी हैं, और यहाँ पर ये छक्का निश्चित रूप से जो लगाया था एफर्टलेस, और गेंद को उछाल दिया इस वक्त डीप बैकवर्ड स्कोर लेग सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों के लिए बेहतरीन स्ट्रोक मंसूर के बल्ले से लगता हुआ, 22 रन बिना किसी नुकसान के, 12-22 विदाउट लॉस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर्स। लकी स्टार रन तक का लुकिंग इन ए कमांडिंग सिचुएशन। तीसरा ओवर शुरू होता हुआ, द बॉलर स्टार्ट्स द फ्रेश प्रोसीडिंग्स इज बशीर, और इमरान इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, सिर्फ 11 रन चाहिए, बचे हुए 3 ओवर, जस्ट 11 टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 18 डिलीवरीज। इस बीच ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए, और वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 23 रनों पर, 23, दैट मींस 10 रन्स नीडेड। बाएं हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, एक बार फिर से वाइड का इशारा, 24 on the board। इस बीच लेग स्टंप से बाहर रिकवर वाइड, हैट्रिक वाइड फ्रॉम द बॉलर। ಎಸ್ಆರ್ಎಫ್ಸಿ ತಲಪಾಡಿ ಹಾಗೂ ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳಾಲ ತಂಡದ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಯುವುದರೊಳಗಾಗಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। इस बार ऑफ द टोस गेंद को खेल दिया स्लिम मिड ऑन पर सही तरीके से वापस इस वक्त मंसूर ने भेजा। हालांकि मंसूर अपने पैरों पर कुछ हद तक दर्द जरूर इस वक्त महसूस कर रहे हैं, वो जानते हैं कि रन वो पूरा नहीं कर सकेंगे इस गेंद पर, तो इस वजह से बल्लेबाज को उन्होंने वापस भेज दिया लेग स्टंप से बाहर। तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में रन इस वक्त प्रदान करते हुए इस बीच एक रन 1+1 2 runs now added to the total। That a couple run the scoreboard moving up to 27 for the loss of no wicket in the over number 2 in progress। बशीर लेग स्टंप से बाहर, once again just drifting down the leg side at the last moment, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 28 रनों पर, 28 without loss now in the over number 3 in progress। just fight to get for victory, this time just gone for a mighty heave, not succeeded, just a single
That single from the scoreboard moving up to 29 now without loss. Now just 4 runs required for victory. और बशीर इस वक्त गेंदबाजी करेंगे इमरान के लिए. Just gone for a mighty heave, not succeeded. Fantastic delivery from the bowler Bashir. Almost came in around the ground. और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन से बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर रुक चुका है इस वक्त 29 रनों पर. 10 को बूस्ट है 29 विदाउट लॉस. और बशीर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. अंपायर विकेटों को इस वक्त सही करते हुए और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है. गेंदबाज lofted and just fell short of field. A chance of a run out this time. I think he made it. He made it at the last moment. दोनों मौकों में इस वक्त बचते हुए इमरान पहले कैच के मौके से उसके बाद रन आउट के मौके से और एक रन के खाते में जुड़ता हुआ 30 रन बच चुके. 30 विदाउट लॉस. 3 to get for victory now. और अंपायर विकेटों को इस वक्त सही करते हुए मंसूर नाउ बैक ऑन स्ट्राइक. और गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए बशीर बाएं हाथ ऊपर द विकेट. डिफ्लेक्टेड डाउन टू अ शॉर्ट फाइन लेग एंड 1 ball left in this over. Still 3 runs to get for victory in remaining 13 deliveries. Absolutely fantastic cricket we are just watching here in this beautiful Rajiv Gandhi Panchayat ground. 3 runs to get for victory in remaining 13 deliveries. और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार. बाएं हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार बशीर. SRFC ಹಾಗೂ कीर्ति स्पोर्टिंग ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और रन्स के लिए दौड़ पड़े. 1 रन आ डायरेक्ट हिट और इसी के साथ इमरान की पारी समाप्त. इट्स कर्टेन द इनिंग्स ऑफ इमरान. So the score is 30 and a fantastic fine innings came to an end from Imran and they lost their first wicket and now it's 30 for 1. 3 overs completed. 30 for the loss of 1 wicket. 3 to get from 2 overs. That means in remaining 12 deliveries. Fourth over starts in the rings. पहली गेंद मंसूर के लिए. Full toss, pulse, and he just finished the match in a style with a 6. Comprehensive victory with a big 6 by Mansoor for Lucky Star run talka. He remained unbeaten on 17, including 2 massive sixes. And Imran contributed also very well, scored 11 runs, and because of their help, Lucky Star run talka reached the target in just 3.1 overs for losing 1 wicket. And now man of the match undoubtedly. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕ 11 ತಂಡದ ಓರ್ವ ಸದಸ್ಯ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರ ರಿಜ್ವಾನ್, ಕರ್ನಾಟಕ 11 ತಂಡದ ರಿಜ್ವಾನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಕೂಡ ಬೆಳಗಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರನ್ ತರ್ಕದ ಪರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರನ್ ತರ್ಕ ತಂಡದ ಇಮ್ರಾನ್. ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸೊ ದಿ next match will be the match number 10 and the last match of the day 1 of this prestigious cricket tournament. Mahanayaka Jai Bhim Trophy 2025-26 is now coming up live exclusively right in front of you between SRFC Talapadi versus Kirti Sporting Ullal. And that match starts with just a short while. And for the comments, I would like to invite Mr. Farish in our state language, sweet language, Kannada, for the first innings of this match. Please come, Farish. Thank you. Dhanyavad.
MFC ತಂಡದ ಆರಿಫ್ ರವರೇ ಒಮ್ಮೆ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ತಂಡದ ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್, ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರೀಫ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿದ್ರೊಮ್ಮೆ ಮೇಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. MFC ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಆರೀಫ್. ಧನ್ಯವಾದ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರೇ. ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. SRFC ತಲಪಾಡಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೀರ್ತಿ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಬೈಲ್ ತಂಡದ ನಡುವೆ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೀರ್ತಿ ಬೈಲ್ ಪರವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಡಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟಗಾರ ಬಾತೀಶ್ ಉಲ್ಲಾಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾತೀಶ್ ಹಾಗೂ ಶಬೀರ್ ಸ್ಟೈಕಾನಿಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾತೀಶ್. ಜುಬೈರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ಜುಬೈರ್ ಅವರೇ,
ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾತೀಶ್ರವರ ಕಡೆಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತವಿದು ಟಾಪ್ ಎಜ್ ಆಗಿದೆ. ಚಿತ್ತ ರಕ್ಷಕರ ಒಂದು ವೈಫಲ್ಯದ ಮೂಲಕ ಬಾತೀಶ್ರವರ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನಿಲ್ಲಿ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಚೆಂಡನ್ನೇ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಚಿತ್ರರಕ್ಷಕ. 2 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ 2 ಓಟ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಬಾತೀಶ್ರವರ ಖಾತೆ ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಕಾಶ್ ರೈಟ್ ಅಮ್ಮ ವರ್ತದೆಯಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತವಿದು ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಬಲಿ. ನೇರ ಸೀಮಾರಕ್ಕೆ ಕಡಿದಾಟುತ್ತಾ ಇದೆ 6 ಓಟಗಳು. ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 6 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 8 ಬಂದಾಗಿದೆ. 2 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 3ನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಓಡೋಡಿ ಬರುತ್ತಲೇ ಆಕಾಶ್ ಬಾತೀಶ್ರವರ ಕಡೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ. ಗಾಲಿಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಚೇತ ರಕ್ಷಕರ ಚೆಂಡು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಚಾನ್ಸ್ ಅನ್ನಿಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. RFC ತಂಡದ ಚೇತ ರಕ್ಷಕರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 10 ಬಂದಾಗಿದೆ. ಆಕಾಶ್ ತನ್ಕೂಟದ 4ನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಬಾತೀಶ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡುವಿದು ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎದುರಿಸಿದ 3 ಚೆಂಡು ಮೂಲಕ 10 ಓಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಕಾಶ್. 4ನೇ ಎಸೆತ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಡೆಲಿವರಿ. 5ನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆ, ಸೋತರೆ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ನೆನಪುಗಳು ಮಾತ್ರ. ಮತ್ತೆ ಬಾತೀಶ್ರವರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ತೀರ್ಪಂತೂ ಕಾಯಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೈ ಮೂಲಕ 1 ಓಟಗಳು, ಗೂಟ ರಕ್ಷಕರ ವಿಫಲತೆಯೊಂದಿಗೆ 1 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗುವ ಮುಖೇನ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 11 ಬಂದಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಶಬೀರ್ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕಾಶ್ ರವರ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಆಕಾಶ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಬಿಡುತ್ತಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ಇದು ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 11 ಬಂದಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಕೀರ್ತಿ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಬೈಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು SRFC ತಲಪಾಡಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಬಾಸಿತ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಾಧನೆಗಳು ಮಾಡಿದಂಥ ಆಟಗಾರ ಈ ಬಾತೀಶ್. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ರವರ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಬಿಡುತ್ತಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡುವಿದು ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೆಕ್ಕಟರ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡುವಿದು ಪ್ರಥಮ ಎಸೆದ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು
ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಬಾತೀಶ್ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಬಡತವಿದು, ಖಾಲಿ ಜಾಗ, ಚಿಕ್ಕ ರಕ್ಷಕರ ಕೈ ಸೇರುವ ಮುಖೇನ ಒಂದು ಓಟಗಳು, ಒಂದರ ನಂತರ ಎರಡು ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಎರಡು ಓಟಗಳ ಮುಖೇನ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 13 ಬಂದಾಗಿದೆ. 1 ಪಾಯಿಂಟ್ 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತ ಆಗಿದ ಬಳಿಕ ಮೂರನೇ ಎಸ್ತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮುನ್ಜೀರ್ ಅವರ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಾತೀಶ್ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು, ಸ್ಲೋವರ್ ಆಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಓಟಗಳು ಓವರ್ ಥ್ರೋ ಮುಖೇನ ಎರಡು ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 15 ಬಂದಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಕೀರ್ತಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬೈಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ತನ್ಕೊಟ್ಟದ 4ನೇ ಎಸ್ತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಅಮ್ಮ ವರ್ತುದಿಯಿಂದ ಚೆಂಡನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು, ತೀರ್ಪಂತೂ ಕಾಯಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1+1 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 17 ಬಂದಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ 4ನೇ ಎಸ್ತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶಬೀರ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ರವರು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು, ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. 1 ಓಟಗಳು ಮತ್ತೆ ಸೈಕಲ್ ಬದಲಾವಣೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 18 ಬಂದಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಾತೀಶ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ಇದು, ತಾಂಡುಗಾರ ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ಬಾತೀಶ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು, ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ ಟಿಕ್ನಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳು. 19 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಾತೀಶ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು, ನೆಲ ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡುವಿದು. 1 ಓಟಗಳು 5ರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 20 ಬಂದಾಗಿದೆ. ಸರಾಸರಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ 1 ಓವರಿಗೆ 10 ರಂತಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಜೊತೆಯಾಟ. ಬಾತೀಶ್ ಹಾಗೂ ಶಬೀರ್ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಜೊತೆಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರನೆಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು SRFC ಪರವಾಗಿ ನಿತಿನ್ ರಾಜರವನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಾತೀಶ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಅಮ್ಮ ತುದಿಯಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡುವಿದು ಲೆಕ್ಕಟ್ಟರಾಗಿತ್ತು. ಬೈ ಮೂಲಕ 1 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 21 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಶಬೀರ್ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ
ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡುವಿದು ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿತಿನ್ ರಾಜ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಕಾರ ಮುಜೀರ್ ಅವರ ಬಿಡ್ತ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಕೂಡ ಬೈ ಮೂಲಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಸೆದಂಥ 3 ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು. ತನ್ಕೂಟದ 4ನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡುವಿದು ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳು 23 ದಾಖಲಾಗಿದೆ 4ನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಲೆಕ್ಕಾಟರಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕರ ವಿಫಲತೆಯೊಂದಿಗೆ 1 ಓಟಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರ ಈ ನಿತಿನ್ ರಾಜ್. 5ನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಶಬೀರ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡುವಿದು. ತೀರ್ಪಂತೂ ಕಾಯಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಡ್ 1+1 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕರ ವಿಫಲತೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 26 ಬಂದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡುವಿದು ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮುಖೇನ ಬಾತೀಶ್ ರವರ ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 2 ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟರು. ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮುಖೇನ ಉದ್ದರಿಲಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೀರ್ತಿ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಬೈಲ್ ತಂಡದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಆಟಗಾರ ಬಾತೀಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಫ್ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಕೀರ್ತಿ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಬೈಲ್ ಪರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟಗಾರ ಈ ತಾಯಿಫ್. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 13 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡುಗಳ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ತಾಯಿಫ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಕೊನೆಗೆ ಚೆಂಡು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ತಾಯಿಫ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕರ ವಿಫಲತೆಯೊಂದಿಗೆ 1 ಓಟಗಳ ಬೈ ಮೂಲಕ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 27 ಬಂದಾಗಿದೆ. 1 ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟಗಳ ಮೂಲಕ ಕೀರ್ತಿ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಬೈಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು SRFC ಪರವಾಗಿ ನಿತಿನ್ ರವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ತಾಯಿಫ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಹೊರಗಿದೆ ಚೆಂಡು. ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮುಜೀರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ದಾಖಲಾಗುವ ಮುಖೇನ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 28 ಬಂದಾಗಿದೆ. ತನ್ಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಆಟಗಾರ ತಾಯಿಫ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಂತೂ ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ತೀರ್ಪಂತೂ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಶಬೀರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಉದ್ದರಿಲಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೀರ್ತಿ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಬೈಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಎಸೆದಂತ ಎಸೆತ ನೇರ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಶಬೀರ್ ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
4ನೆಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ಸಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಅನ್ಸಾರ್. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸಬಹುದೇ ಎಂದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸಿದಂಥ ಆಟಗಾರ. ನಿತಿನ್ ತನ್ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಅನ್ಸಾರ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮುನ್ಸೀರ್ ಅವರ ದಾಟಿಕೊಂಡು ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ತುದಿಯಿಂದ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ರಿವರ್ಸಿಪ್ ಇದು. ನೇರ ಶೀತರಕ್ಷರ ಕೈ ಸೇರುವ ಮುಖೇನ ಒಂದು ಓಟಗಳು. ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಿ. ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತವಿದು. ಒಂದು ಓಟ ದಾಖಲಾಗುವ ಮುಖೇನ 29 ಬಂದಾಗಿದೆ. 3ನೇ ಎಸ್ತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ತಾಯಿಫರ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಾದರಿಯ ಹೊಡೆತವಿದು. ಒಂದು ಓಟಗಳು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ವಿಫಲತೆಯೊಂದಿಗೆ 4 ಓಟಗಳು. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಾಸ್ ಮೂಲಕ 4 ಓಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿಫರ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 33 ಬಂದಾಗಿದೆ. ನಿತಿನ್ ತನ್ಕೂಟದ 4ನೇ ಎಸ್ತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಖಾಲಿ ಜಾಗ. ಒಂದು ಓಟಗಳು. 1ರ ಬಳಿಕೆ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಓಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಂತೂ ರನ್ಔಟ್ ಮುಖೇನ ತಾಯಿಫರ್ ಅವರ ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಲು ಹೋಗಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಟಿತ್ತು. ತದನಂತರದ ರನ್ಔಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಥ್ರೋ ಆಗಿತ್ತು. ರನ್ಔಟ್ ಮುಖೇನ ತಾಯಿಫರ್ ಅವರು ಉದ್ದರಿಲಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸತತವಾಗಿ 3ನೆಯ ಉದ್ದರಿನ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೀರ್ತಿ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಪೈಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಐದನೆಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ಸಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅನುಭವ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಈ ಅನ್ಸಾರ್. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿತಿನ್ ರವರ 5ನೇ ಎಸ್ತ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು. ಅನ್ಸಾರ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಅನ್ಸಾರ್. ನಿತಿನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡುವಿದು. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ಅನ್ಸರ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡುವಿದು. ತೀರ್ಪಂತೂ ಕಾಯಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 1+1 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 36 ಬಂದಾಗಿದೆ. 4ನೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಅನ್ಸಾರ್ ಅರೇಕಲರ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ಮುಖೇನ ಅನ್ಸಾರ್ ಅವರ ಉದ್ದರಿಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 4ನೇ ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೀರ್ತಿ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಪೈಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 36 ಬಂದಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ.
ಶಿಷ್ಟಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡುವಿದು, ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಕಿರಣ್ ಅವರು 6ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಆಟಗಾರ ನಬೀಲ್. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಬಿಡಿ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ದೇವಿ ಕಿರಣ್ ರವರ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು. ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಸಾರ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡುವಿದು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಿಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಗೂಟವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಬೀಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಟು ಪೆವಿಲಿಯನ್.
7ನೇ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ನವಾಜರವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಕೀರ್ತಿ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಪೈಲ್ ಪರವಾಗಿ ನವಾಜರವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಕಿರಣ್ ರವರ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ನವಾಜ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ಇದು. ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ್ರೆ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಇದೆಯಾ? ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತನ್ಕೂಡದ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತವಿದು. ಖಾಲಿ ಜಾಗ. ಶೇಖರ್ ರಕ್ಷಕರ ಕೈ ಸೇರುತ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟಗಳು 2 ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 40 ಬಂದಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ಎಸ್ತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನವಾಜರವರ ಕಡೆಗೆ ಕಿರಣ್ ದೇವಿ ತನ್ಕೊಡದ ಮೂರನೆಯ ಚೆಂಡು. ಸ್ಲೋವರ್ ಆಗಿತ್ತೋ ಇಲ್ಲಂತೂ ಚೇಕ್ತ ರಕ್ಷಕರ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. 2 ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸಿಫಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವಿತ್ತು. ಶೇಖರ್ ರಕ್ಷಕರ ಕೈ ಸೇರುತ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗುವ ಮುಖ್ಯ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 43 ಬಂದಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಗಾಲಿಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಬಲಿ. ಅನ್ಸಾರ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೇರ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 50 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಧ ಶತಕ 49 50ರ ಗುರಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೀರ್ತಿ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಫೈಲ್ ತಂಡ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 30 ಚೆಂಡು ಮೂಲಕ 50 ಓಟಗಳು SRFC ತಲಪಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಮೈಕನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. धन्यवाद
बारिश और जहां तक सवाल है इस वक्त एग्जैक्टली 50 द टारगेट फॉर SRFC Talapadi set by Kirti Ulal, and the innings now going to start. The first ball of the innings is now coming up. और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए दोनों आरंभिक बल्लेबाज देवी किरण और कार्तिक मौजूद, जबकि तैफ गेंदबाज इस वक्त शुरू करते हुए इंतजार है इस वक्त उनकी पारी की पहली गेंद का। So the first ball of the match, their innings is now coming up और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए तैफ और देवी किरण सामना करते हुए ये गेंद पहली गेंद थी। इस वक्त गेंद को उछालना चाहा, गेंद पहुंची गली क्षेत्र पर, 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है SRFC क्रिकेटर्स तलपाड़ी के लिए। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जहाँ तक 50 रनों के लंबे से लक्ष्य तक पहुँचने का सवाल है 5 ओवर में, इस वक्त एक विस्फोटक शुरुआत, एक्सप्लोजिव स्टार्ट्स की सख्त ज़रूरत है यहाँ पर इन SRFC के सलामी बल्लेबाजों को। और गेंदबाज अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद इस वक्त विकेट कीपर अपने दूसरे प्रयत्न में गेंद को गैदर करने में सफल और रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है यहाँ पर 1 रन बिना किसी नुकसान के। सामना करते हुए इस वक्त कार्तिक और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार। ये गेंद स्विंग्स एंड दिस टाइम आई थिंक he's got the distance. Yes it does. और इसी तरह की स्ट्रोक इस वक्त जरूरत है और कार्तिक का स्ट्रोक निश्चित रूप से just got that one right from the middle of the bat and stand and deliver over deep in wicket fence for a maximum. इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 7 रनों पर। कार्तिक इस वक्त जानते हैं ऐसे स्ट्रोक्स इस वक्त खेलने की ज़रूरत है क्योंकि लक्ष्य काफ़ी लंबा है। और अगली गेंद इस वक्त तैयार लेकर गेंदबाज तैफ गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद एक बार फिर से उसी तरीके का स्ट्रोक दोहराने का प्रयास है, लेकिन इस बार परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद फेंकी थी इस वक्त, जस्ट चेंज ऑफ पेस। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त स्कोर का, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 8 रनों पर, 8 विदाउट लॉस। और इस बीच अगली गेंद लेकर तैफ गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद क्विकर, एब्सोल्युटली क्विकर दिस टाइम, and the ball went just wide of the stumps and went into the hands of wicket keeper, and this time a dot delivery bowled 7 on the board, in fact 7 रन बन चुके हैं। जबकि पहला ओवर प्रगति पर तैफ इस वक्त अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट खेलना चाह यहाँ पर लेग बिफोर विकेट नहीं है, वरना निश्चित रूप से यहाँ पर काफ़ी नज़दीकी मामला हो सकता था। अपील जरूर की, लेकिन तुरंत फील्डर ने बापा कि यहाँ पर लेग बिफोर विकेट इस श्रृंखला में नहीं है, अपने अपील को रोक दिया उन्होंने और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है, स्कोर बढ़कर पहुँच चुका है अब 8 रनों पर। 8 on the board, first over completed and chasing the victory target of 50 in 5 overs. SRFC Talapadi made a steady start, in fact it's 8 for none after first over. तो निश्चित रूप से काफ़ी दर्शक इस मैदान पर छा चुके हैं और स्कूल के कुछ छात्र कुछ बच्चे इस वक्त मौजूद, इस वक्त इस दिलचस्प मुकाबले का मुआयना इस वक्त करते हुए। द चिल्ड्रंस ऑफ स्कूल जस्ट वाचिंग एंजॉयिंग द गेम इन दिस ब्यूटीफुल ग्राउंड, राजीव गांधी पंचायत ग्राउंड मुडीपू। और जहां तक का सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, द बॉलर स्टार्ट्स द फ्रेश प्रोसीडिंग्स फ्रॉम द कमेंटेटर बॉक्स एंड वेयरिंग नंबर 21 जर्सी नवाज। और सामना करेंगे इस वक्त कार्तिक का, फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए। और ओवर की पहली गेंद लेकर नवाज दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। फर्स्ट बॉल swings and this time he finds the gap, in fact it cuts it off just inside the fence by the fielder. Fantastic, in fact they're looking for the second and he won't get that one, and he's back to his crease very safely in the end. So that is the single run results, and with that single run the scoreboard moving up to 9 without loss in the over number second in progress. दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर और देवी किरण इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। नवाज की गेंदों का दाहिने हाथों पर द विकेट, नवाज रिवर्स शॉट खेलना चाहा, चूंकि डॉट गेंद रन इस बीच नहीं मिलेंगे और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 9 रनों पर बिना किसी नुकसान के। फिर से एक बार देवी किरण सामना करते हुए
ये गेंद इस बार बेहतर फैंटास्टिक डिलीवरी परफेक्ट ऑफ कटर द बॉल पास्ड बिटवीन हिज लेग्स एंड वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 9 रनों पर 9 ऑन द बोर्ड टू लूज एन विकेट दूसरा ओवर प्रगति पर और नवाज फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट ये गेंद बेहतर फैंटास्टिक वर्क मेड बाय विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स लेकिन बल्लेबाज का पिछला पैर क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित उनके लिए और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 2 गेंदें बाकी 2 बॉल्स लेफ्ट इन दिस ओवर 2 गेंदें बाकी और 9 रनों पर स्कोर बोर्ड इस वक्त रुक चुका है बेहतर ओवर अब तक साबित हो चुका है नवाज का अगली गेंद लेकर तैयार देवी किरण के लिए दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए और इस बीच विकेटों को सही करते हुए विकेट कीपर और खेले जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है मैच नंबर 10 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट महानायक जय भीम ट्रॉफी 2025-26 के अंतर्गत खेला जाता हुआ ऑफ स्टंप उखाड़कर इस वक्त गिर चुका है देवी किरण के पार यहाँ पर समाप्त ऐसा कहना पड़ेगा द बॉल गेट्स अ एक्स्ट्रा बाउंस एट द लास्ट मोमेंट and after beating the batsman bat it flattered his off stump Devi Kiran departs first wicket gone it's 9 for 1 शाम के 6 बज चुके हैं लगभग अंधेरा सा मैदान पर छा चुका है इस वक्त छाता हुआ इस वक्त और इसे ढलते हुए वक्त के साथ साथ मैदान पर रोशनी कम होते हुए और इसलिए मैं दरख्वास्त निवेदन करता हूं कि खिलाड़ियों से कृपया मैच को जल्द से जल्द आगे बढ़ाएं और इस बीच नए बल्लेबाज नंबर 3 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल इस वक्त गौरीश नए बल्लेबाज 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट यहां पर कर चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 10 रनों पर और 2 ओवर की मुकम्मल समाप्ति हो चुकी है 2 overs completed 10 for the loss of 1 wicket and a fantastic over came to an end from the bowler Nawaz who conceded just 2 runs in this over and got the wicket of Devi Kiran. Exactly 40 runs required in remaining 18 deliveries. That means in remaining 3 overs, the required run rate is now straight away gone up to exactly 13.33 runs per over. Or गेंदबाज शाकिर गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए तीसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार स्वीप कर दिया इस वक्त गेंद को डीप स्क्वायर की दिशा में गेंद जाती हुई फील्डर वहां पर मौजूद 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा दूसरा रन नहीं मिलेगा और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज यहां पर संतुष्ट हो चुके हैं स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 11 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर 11 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 13 प्रोग्रेस और गेंदबाज एट द स्टार्ट ऑफ द 3rd ओवर इनफैक्ट शाकिर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार कार्तिक के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट लेग स्टंप से बाहर और वाइड का इशारा अंपायर का जस्ट ड्रिफ्टिंग डाउन द लेग साइड एट द लास्ट मोमेंट 12 on the board 12 on the board for losing 1 wicket in the over number 3 in progress और गेंदबाज शाकिर गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए बेहतर गेंद थी शायद विकेट कीपर का हाथ विकेटों से टकराया था इस बीच और 1 रन इस बीच बल्लेबाज पूर्ण कर चुके डिफ्लेक्शन ऑन दैट आई थिंक सो No signal came from the umpire. Single run added to the total. It's 13 for the loss of 1 wicket in the over number 3rd in progress. और इस बीच शाकिर स्टेयर कर दिया गेंद को इस वक्त पॉइंट पर 1 रन के लिए और स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रनों पर 14 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. शाकिर गेंदबाजी करते हुए इस वक्त कार्तिक के लिए दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार लेफ्ट हैंड नॉट करेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली बट ही गॉट अ सिंगल लॉन्ग ऑन फील्डर गेंद पर पहुंचते हुए 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 15 रनों पर 15 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस गेंदबाज शाकिर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथों पर विकेट ये गेंद ड्राइव कर दिया लो मिड ऑफ पर थोड़ी सी आगे इस वक्त टिप्पा खाते हुए मिड ऑफ फील्डर के आगे और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है 18 1 ball left in this over 18 for the loss of
1 विकेट नाउ इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज शाकिर इस ओवर में अंतिम बार कार्तिक के लिए दाहिने हाथों पर द विकेट। या गेंद ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा, नॉट करेक्टेड दैट वन प्रॉपरली। स्वयं अपने आप से नाखुश कार्तिक का। और इस बीच दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े, नजदीकी मामला यहाँ पर हो सकता है, लेकिन शायद ऐसा कहना पड़ेगा बल्लेबाज यहाँ पर बच चुके हैं और 2 रन उनके खाते में जुड़ चुका है। 3 overs completed, 18 on the board, 8 runs came from the last over. Now 32 to get from remaining 2 overs. That means in remaining 12 deliveries, and the required run rate is now straight away gone up to exactly 16 runs per over. This is the match number 10 of this prestigious cricket tournament. 10 and the last match of the day 1 of this prestigious cricket tournament. Mahanayak Jai Bhim Trophy 2025. 26 is now progressing here. And the main pillars of this tournament, Mr. Zubair, the proprietor of Aladdin Sharma, Mr. Haider, the president, Haider Huha Kwakallu, president of MCA, and Mr. Ataullah Mudipu. These 3 fantastic pillars are organizing this fantastic tournament in the name of Jai Bhim Trophy 2025-26। इस बीच बल्ले का बाहरी किनारा ओवर के पहली गेंद लेकर गेंदबाजी शुरू कर चुके हैं। स्कोर बढ़कर पहुंच चुके हैं 1 रन के साथ 19 रनों पर, 19 ऑन द बोर्ड। और चौथा ओवर इस वक्त प्रारंभ हो चुका है। सामने करने के लिए तैयार इस वक्त कार्तिक और गेंदबाज सियाब। गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट, लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए गेंद, लेकिन कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकलते हुए, और डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ता हुआ। स्कोर रुक चुका है अब 19 रनों पर, 19 for the loss of 1 wicket in the over number 4 started just short while ago in their innings. Siap to Karthik. Good one, fantastic delivery this time. Just lower full toss one at the last moment. And it went into the hands of wicket keeper and there is no possibility of any run. हर डॉट गेंद के साथ इस वक्त दबाव बढ़ता हुआ यहाँ पर SRFC तलपाड़ी के बल्लेबाजों के ऊपर, और गेंदबाज सियाब अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। Lofted. This time he's got the distance. 6 number 2 came to the bat of Karthik. और जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूँ, लगभग हर गेंद पर छक्का या चौका लगाना इस वक्त जरूरी बन चुका है। और कार्तिक काफी देर से कोशिश कर रहे थे और इस बार सफलता उनके पक्ष में आती हुई दूसरा छक्का उनके बल्ले से लगता हुआ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर, 25। नाउ 8 balls left, 8 balls left and 24 runs required. सियाब अगेन टॉप एज, मौका हो सकता है लंगोन फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, और इसका को लपकने में सफल अपने दूसरे प्रयत्न में। In his second attempt, he took the catch successfully, and a good innings from Karthik Hemstad, and he scored 17 runs, including 2 massive sixes. And after being scoring 17 runs, including 2 big six, he's backing to pavilion after being playing a good knock for their side. Now 7 balls left, 24 runs required. In fact, it's 25 the score. Now exactly the same number of runs needed for SRFC Talapadi, 25 runs more needed. Siab bowling to a new man, clearing the infield and finds the gap as well, and it's crossed over the fence for a boundary. काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद गेंद तक पहुंचने में सफल, खूबसूरती के साथ इनफील्ड क्लियर करते हुए मिड ऑफ फील्डर के सिर के ऊपर से गेंद को उछाला था इस वक्त नए बल्लेबाज सनवित ने, और इस चौका उनके कुल रन संख्या को पहुंचा चुका है 29 रनों पर, 29 for 2 after the completion of 4 overs. Now 21 required from last 6 deliveries. 29 the score for losing both openers in this situation after completion of 4 overs. 21 रनों की दरकार बचे हुए 6 गेंदों पर। So the match deciding over starts. The bowler starts the fresh proceedings from the commentator box, and Shabir गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाजी इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर विकेट, ये गेंद बेहतर, फैंटास्टिक डिलीवरी, विकेट कीपर ने तेजी के साथ विकेट चटकाए, लेकिन यहाँ पर रन आउट शायद नॉन स्ट्राइकर रन पर होता हुआ, जी नहीं, स्ट्राइकर रन पर स्टंप आउट हो चुके हैं। बेहतर स्टंपिंग विकेट कीपर ने की थी और इसी के साथ एक और विकेट यहाँ पर गिर चुका है।
It's 29 for 2, 21 to get from 5 balls. So 5 balls, 21 runs required और गेंदबाज इस वक्त तैयार. लेग स्टंप पर आते हुए गेंद, रन आउट इस वक्त हो चुका है, वाइड का भी इशारा हो चुका है. 1 run added and a wicket lost. 30 for the loss of 4 wickets. 20 required from 5 balls now. Now 20 runs required from 5 balls. गेंदबाज, so lefty batsman is now comes out to the middle. और गेंदबाज शबीर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. और ये गेंद पैरों पर गेंद टकराई, रन के लिए दौड़ पड़े, रन आउट का खतरा, निशाना चूका और बैकअप होता हुआ. 1 run added and with that single run the scoreboard moving up to 31 now. That means 19 to get from remaining 4 balls. और गेंदबाज इस वक्त शबीर गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. Here he comes, bowling to the right-handed batsman. Misses, dot delivery. Now the last chance. 3 sixes required in the last 3 deliveries, not for victory but for tie. 18 रनों की दरकार अंतिम 3 गेंदों में, 3 छक्कों की जरूरत टाई के लिए. लेग स्टंप पर आती हुई गेंद, 1 रन मिलेगा इस बीच. 32 द स्कोर. लेग बाय का इशारा. 17 टू गेट फ्रॉम 2 बॉल्स नाउ. और गेंदबाज मैच की दूसरी अंतिम गेंद लेकर तैयार. गेंदबाज शबीर बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद पैरों पर टकराई, 1 रन मिलेगा. 1 more leg by. 33. Now 17 runs to get from last ball. Absolutely impossible task in front of the batsmen of SRFC Talapadi. Or antim game. The last ball of the day is now coming up. That's it. 16 runs comprehensive victory for Kirti Sporting Ullal against SRFC Talapadi. And with that 16 runs comprehensively, with that 16 runs comprehensive big margin victory, Kirti Sporting Ullal are through to the next round of this competition, defeating SRFC Talapadi in the last match of the day 1 of this prestigious cricket tournament, Mahanayak Jai Bhim Trophy 2025-26. So all the cricketing actions of the day number 1 has been over. Now we'll be back right after. We'll be back right on the day 2 on tomorrow morning. It's exactly 8 a.m. And the match starts at exactly 8:30 a.m. Sign up time is 8:15 and the match starts at exactly 8:30 a.m. on tomorrow morning, the first match of tomorrow. Till then, we're saying a goodbye right from our commentator box.